currently serving member of Parliament, Rajya Sabha, and also the head of the IT wing and spokesperson of BJD. He is the former Indian Audit and Account Service Officer under the Comptroller and Auditor General, and also served as the Principal Account General for the states of Sikkim, Odisha, West Bengal, and Kerala. But he opted out for the voluntary, and now is beside as a role of politician, he also has a role of author and is also a regular columnist in most of the national newspapers of India, and also advises different clients on data privacy, data protection, technology, and corporate affairs. Mu tanku ei hisabe janichi khali padhe tanku. Thank you for here. You have accepted our request. Sri Bhujawal sir kanti Surjit Bhujawal. Sri Santosh Kumar Sarangi is currently working as the Director General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry. He is from Odisha cadre, IS officer. The 1994 IS officer has earlier worked as Additional Secretary in the Department of School Education, Literacy in the Ministry of Education. Mr. Sarangi is the first Odia IS officer to take charge of the DGFT. Please have a clap. He has 5 long years of serving in the Ministry of... He has 5 long years of serving in the Ministry of Commerce as Joint Secretary and Chairman APEDA. Mu correct karneli je ako mu ako purpuri aru odia thile. Welcome him. Sri Surjit Bhujawal. He is a revenue cum custom officer and has been recently appointed as the head of the Principal Director General of GST Intelligence, the apex intelligence institution of the intelligence functioning under the CBIT, Custom Department Revenue under the Ministry of Finance. It is a proud moment of our state as he is one of the senior officers to be interested in the tax collection and coalition and dissemination of intelligence in relation to the evasion of the goods and service tax, duties of central excise on the pan-India basis. से भद्रभक्ति से व्यक्ति जे कही कस्टम ऑफिसर जो पूर्ण मैंने भारत इतिहास जो अच्छी तार फोटो गुड़ाक अच्छी कहले ओडिया लोक मान फोटो ये लगे दरकार केते ओडिया प्रिय देखो तो ओडियार लोक जानवे जे कौन कौन किए किए काम करते ओडिशा रे से होचंदी से सुरजित भजबल आम संगे अच्छी श्री राजेश महापात्र. Rajesh Mehta has been at various points over last 25 years a business journalist, political analyst, and public policy expert, editor, and newsroom leader. He has worked with the international publications such as Associated Press and Breeze News, formerly Knight Ridder Financial Services, before an extended stint at Hindustan Times, where he drove organizational change and digital innovation. He is now editor of Press Trust of India. Press Trust of India is the largest news provider. And he has more than 300 journalists bringing news that breaks in the field of politics, economy, sports, and everything else. He is also the founder and director of Odisha Dialogues, a non-partisan thought leadership forum that promotes Odisha-focused research and advocacy. Rajesh studies economics at the Delhi University in JNU, where his research focuses on political economy of food and security. Now, I am requesting. Actually, this session should be moderated by Sri Manoranjan Mishra, editor Connect TV. He is on the way. The flight will come late, so he is on the way. I am taking care. Now, I request Sri Patnaik. Every panelist has to say 5 to 7 minutes on their vision. Then the next action plan, if Manoranjan is coming, he will put the questions. So, before that, I request all the panelists to give their vision for 2036-86. That is the economic growth and other holistic approach. This is the holistic growth of Odisha, and these people are the best people who can give us the idea and the formulations. Whatever the best is, we would like to hear from you, Sri Patnaik. Thank you so much. उपस्थित अच्छी समस्त को मोर नमस्कार. प्रवासी ओडिया ट्रस्ट को मत एठाकू डाकी निमंत्रण दे समस्त को धन्यवाद दूची ऑर्गेनाइजर्स मान को एठारे उपस्थित थिबा इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस
Honorable Sri Deepak Mishra sir को नमस्कार करुच्ची आपण समस्त को एठारे देखी बहुत खुशी लगुची मु दिल्ली रे ही पढ़ी थी ग्रेजुएशन लेवल रे दिल्ली यूनिवर्सिटी रे तेणु मु प्राय से समय स्टूडेंट जो मैंने थिले दिल्ली यूनिवर्सिटी रे आ जो मैंने प्रोबेबली जेएनयू रे भी थिले सेमानक संगे कांटेक्ट थिले किंतु एठा को आसिला परे पार्लियामेंट को आसला परे आई interact with a host of people from Orissa who have been excelling in different fields. I feel very proud of being an Oriya. Sir ja कहले एबे कहूथिले Honorable Justice Deepak Mishra कि future रे कौन होबो जणा नहीं किंतु गोटिए कथा कि Odisha रो identity as an Oriya, one feels now proud to say that you are an Oriya anywhere in the country and maybe even abroad. Orissa has achieved quite a bit. Orissa has achieved a number of, crossed a number of milestones. One of the speakers was saying our growth rate is currently higher than the national average. But, you know, Sethira, one should also be careful to say that we have to maintain this growth rate over a long period of time, and only then probably the fruits of development, fruits of economic growth would percolate down to all sections of society. मु आ उपरे डिटेल कहबा पूर्व खाली गोटे जिनस कहबा चाहिए कि आमे जतबेले विजन 2036 पई कथा होचे किबा विजन 2086 पई we also have to realize, we also have to take into account that our vision has to take into account what is happening around us, what is happening nationally, what is happening to the society, how the society has changed, society's composition has changed. For example, Orissa currently is one of the states besides the southern states which has already reached the population replacement ratio of 2.1, which basically means you will only see in future an older Odisha compared to a younger Odisha now. The same thing is already happening in the south. India will have the demographic advantage thanks to UP and other states for certainly another 15 to 20 years. But Orissa will not be having that advantage anymore. This is a reality. So I'm trying to tell you that the context of having a vision of 2036 and 2086 has to take into account the changes that would be happening in the society at the social level, at the political level, at the economic level, at the cultural level, at the gender level. All these realities also have to be taken into account while preparing a vision or while making a vision. Now let me say, I talked to you about society level. I said that we will be getting older. Now what does it mean? What it means is that households will have to spend much more money on health. Purely as an economist, you would understand that the household income, a substantial portion of it currently is about out-of-pocket expenses is on an average to the extent in India itself is about 52-53%. But it will even increase further. Now what has happened now? The reality is in Orissa we have the unique Orissa model of universal health care, the Biju Swasthya Kalyani Yojana. Why it is different from an insurance-based model? Because insurance-based model, you have to prefer your claims, and some of the claims may be accepted, some of the claims may be rejected. In the claims, in the insurance model, you will also have a situation where outdoor patients, जड़े लोक गला पेशेंट तारा गोड़ेटा भांग गला से सांगे सांगे प्लास्टर करिकी पळे आस परिबो ताको इनपेशेंट एडमिशन हवा दरकार न पे पड़े किंतु सेही पोर्शन इज नॉट कवर्ड. Whereas if you have a universal health care like the Biju Swasthya Kalyani Yojana, then you will find that every hospital treatment would be covered. Now what would be the meaning of this? The meaning of this is, if we have to continue the universal health care in the health sector, and which is required because Orissa is getting older, so older people in households will not have to spend more money on health, then to maintain this, we need to have that kind of budget provision in our budget for another 10, 20, 30, 50 years.
Now, if you want to have that kind of a budget provision, it automatically means that our revenue sources also have to come, it has to increase substantially. The revenue sources come from two sources. One is the tax revenue and the non-tax revenue. Currently, Odisha's happy position is because of the non-tax revenue, particularly coming from auction of the minerals and mines-based industries. But what would be also required is that we will also have to get more resources from our revenue means. Now, revenue sources are very limited for most of the states, including Odisha. Now, how does then one feed this health system? This health system is something like the NHS of UK. Completely, the government is bearing this expenditure. This is desirable. This is unique model. Maybe the country will follow this, but we need to have these resources. So my vision for health would be, we would have health coverage for every Odia, everywhere in the state, outside the state. We should also have Odisha build up as a health hub, in which case our tertiary health care would be attractive to people out around the region, would probably come and spend there. We could also have the alternative health, that is wellness centers, the Kerala model. We could actually make it stronger because we have the strength in this. We have the strength in taking advantage of relive some of our old traditions of treating diseases and make it available to people just as Kerala does. Kerala gets a principal AG Kerala thili mu nije dekhichi. People from the Middle East, people from the Gulf come in huge numbers to these hotels just for wellness, and there are pre-booked packages available, Siddha, Unani, in various health disciplines, alternative health disciplines. So that could be one area that vision, I think we should have this. For building our revenue stream, there are limited scope for building the revenue stream for most states, including Odisha. So what is the alternative? The alternative is to get capital from outside. Capital from outside can come through two sources. One is domestic capital, the other one is foreign capital. Now we have to, our vision, my vision is that we should be able to, we have not really unlocked that potential to the extent possible. We may have built these huge industries, extractive industries, but I think there is enormous scope for building the electronic sector, the digital sector. Odisha, I visualize in 2036 and beyond, should also be taking the lead in the digital economy of this country. Currently, it is doing very well, but we have to take it forward, and for that we have to invest in our various innovation laboratories. We have to invest in our startup ecosystem, make it better, and most significantly, what I foresee which is going to happen in 2036 if we go that way is making our growth process completely or largely women-led. Now, how that should happen? We are already progressing in that direction. Currently, the participation of women in the labor force in the country as a whole is very less compared to the southeastern region, compared to many other countries like Vietnam, China, and many others, US. What we can do, I have written on this earlier, is that since we have already built a very robust women self-help group ecosystem in our state, and we have about 70 lakh women in 7 lakh women SHGs groups, we have to empower them now slowly to levitate or graduate into a small and micro sector. Now, if they go into a small micro sector, it would require processing. There was a discussion, agro-processing. Agro-processing could be one area where we should be able to position ourselves through these women SHGs, and it will create jobs, it will empower them, and most importantly, they will become a part of the driver of the growth in the state, which is lacking in most of the states. There we can actually take the lead. Whenever I go to the field, I'm extremely pleased to see the way women have taken charge in remote areas, in Raigada, in Malkangiri, in Bolangir. So I think there is a lot of potential there. It has to be unleashed. Younger people, we have to diversify the skill set that we are giving to them. Younger women who are into the self-help groups, they would not like to make the traditional items that they used to
make. They would probably be like to be in beauty segment, they could be in handlooms, they could be in designer wear. That kind of a training, we have to graduate them, and that is what my vision is, and I think that is what probably is going to happen if we follow the current trajectory. The another point I will say is on the since I have very little time, I'll come probably when you take the next round. But I'll say that the strength of our political society, the society that we have, is that we have always been, compared to the rest of the country, extremely peaceful state. Whenever I talk to, I have been a student here, as I said, in Delhi University, right from 1984 onwards. Whenever I have talked about Orissa with people outside, Orissa's identity has been something like wedded to Jagannath culture. And Jagannath culture is, as it says, Jagataranatha Jagannath, Vasudeva Kutumbakam. So that kind of culture, since it is so strongly rooted in the outside Orissa mind, I think we will have to actually build that, establish our identity based on that, and therefore we will remain a peaceful state as long as we believe in the Lord of the universe, and that is what we do. So my future vision is that there will be stability, there will be continuity, there will be peace, there will be no civil riots, there will be no communal riots, there will be no inter-caste riots, which happens in many states. We have to maintain that fabric. All of us, the society has to maintain that fabric. In the gender front, I have already spoken. I also, sir had spoken about, Orissa. I see that it will become a sports hub. It will become a digital hub. It's already transforming itself into an education hub. It is also, I talked about the health hub. I brought a new dimension that you can bring alternate health systems and excel in that. And one more thing, which is again our strength, and which would be a source of employment, is to somehow take the lead in the sector in which we have already the competitive advantage. That is the handloom and the handicraft sector. And it is currently linked to our culture. This is a soft power. This soft power is what India is striving to have. And this soft power, if it can be led by Odisha, which I foresee happening in the future, if we really work on it, then Orissa could be actually the soft power capital of India. So whenever India tries to project India's power abroad, then Orissa's story should come. Orissa's soft power should come. And that will be driven by culture, heritage, handloom, handicrafts, nature, circular economy, a green path, because Orissa people always live in communion with nature, live in harmony with nature. We should not destroy it. Last point that I would make is that the ambition, the aspirational level of the young Orissa, young Orias are currently very high. It should continue to remain high. It should continue to drive them to have unicorns in Orissa, to set up businesses which are quoted by rest of the country, quoted by rest of the world as having been in Orissa. Just as we are talking about skilled in Orissa, that should finally transform into something bigger. And that is the vision that I have for 2036 and going forward 2086. But as I said, the society will also be undergoing changes. Population composition will be seeing changes. There could be migration. The climate change effect could be there, in which case coastal areas people might migrate. The inequity that currently persists in different regions of Orissa, I foresee that that will reduce. For example, the multidimensional poverty index in the southern part of Orissa is about 59%, whereas on an average for Orissa it is about 29.3%, which basically means that that is the area, or those are the regions of Orissa in which more investment has to be given. The people have to be given more health and education so that they become equal to the rest of the state. So equitous, sustainable, rich both in soft power and in hard power is the future that I see for Odisha in 2036. That's the vision that we have to strive for.
That's what we have to drive at, and therefore all of us have to contribute in all this activity. Odisha's uniqueness, which I tell everybody, in fact, yesterday I was telling to Amitabh Kant and Naina Agarwal Kidwai, Naina Lal Kidwai, and many others in a MP's gathering, that Odisha's strength, which people don't realize, is actually community resilience, community power. If Odisha has succeeded and been an example globally for disaster management, it is because of this community power. After 99, this community resilience has increased. The buy-in in government's programs for disaster management has increased. People take charge of themselves whenever a disaster hits. Now, this particular power has to be transformed to other sectors of the economy as well. When people take charge of their own lives to achieve the vision of 2036 and 2086. With these words, I would, I think, end my first round of speeches. Thank you so much. I'm sorry if I've spoken much. Sorry for the interruption. He don't need my introduction actually. She is none other than Sri Manoranjan Mishra, editor in Kanak TV. He was awarded with the Odisha Journalism Award for his outstanding contribution in the field of journalism. Apart from shaping the editorial contents, he is known for his impeccable anchoring style. He shows Manoranjan Mishra live every time, but now he is with us. Thank you. Over to Manoranjan Mishra. हेलो धन्यवाद मु प्रथम क्षमा मागिबी मोर टिके विलंब है सो आम सीधा सड़क प्रसंग भितर को जीवा सी तो अमर पट्टनायक आमको बहुत भल कथा कहते ओडिशा केमती आगू को जाऊँगी मु गोटे मिनिट समय नेबी सी तो षडंग पाखक जावा पूर्वर आम सब गाँव पिला ओडिशा को भल भाव आम जाचु गाँव रु जाचु आउ भुवनेश्वर आम मु बहुत वर्ष है रही तो मु आपन को गोटे कथा केवल कहबी सी तो षडंगी बहु वर्ष धरी ओडिशा रे काम करथिले दिल्ली रे रही एबे ओडिशा को देखुचंती मु जेतले मते प्रश्न पचारे जाए बा मु जेतले काहा को प्रश्न पचारे जे जदि गोटे समस्या कथा कहा जिवो जे ओडिशा रो सबुठारु बड़ समस्या वर्तमान कोन मु आम गाँ को गले आम लोक मान को गोटे कथा पचारे जे तमे मासु को केते टंका रोजगार करूछ जड़े स्कूल टीचर हूँ जड़े क्लर्क हूँ जड़े नर्स हूँ गाँव में कई तो भल ऑफिसर कई ना यही श्रेणी अच्छा सरकारी चाकरिया मैंने से बाद दिंतु मु केवल गोटे कथा जानापी चाहे जे मासक आपड़ केते टंका रोजगार कर गोटे फैमिली जो मैंने गाईटे रखिंट जो मैंने दिन मजदूर कर जो मैंने गछरू नड़िया तोलुंट जो मैंने यात्रा पार्टी काम कर टोटाल इनकम गोटे मासरे केते मु देखे आम गाँव 70% लोकंकर रोजगार 10,000 टंकारु कम आपण थरे चिंता करंतु जदि गोटे परिवार 10,000 टंकारु कम रोजगार करिवो से बंचिबो केमिति ता लाइफस्टाइल कौन हेथिबो तेणु मो विचार रे ओडिशार सबुठारु बड़ समस्या होउची लोकंक हाथ रे टंका नाही एटा होउची सबुठारु बड़ चैलेंज आउ सेही चैलेंज पाई कि सारा ओडिशा वर्तमान काम करवा दरकार जे आम लोकंक हाथ में टंका केमिति पहुँचब यहाँ मो विचार सबुठारु बड़ समस्या सबुठारु बड़ चैलेंज शीत षडंगी आम गण में अच्छा बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व थे अतीत भारत सरकार अधीन में से बहुत काम करुँचा को अति पाखर देखी मुझे फॉरेस्ट पार्क रे देखे सब फिजिकली फिट रहा से चिंता करती शीत षडंगी को मु अनुरोध करी से आज आलोकपात करेंगे ओडिशा को से कौ दृष्टिकोण रे देखुचंती आ ओडिशा पाई तांकर समाधान सूत्र कौन रहिबो जो सब समस्या रही। धन्यवाद मंचासेन मनोरंजन बाबू ऑनरेबल एमपी श्रीजुक्त अमर पटनायक माय फ्रेंड एंड माय डियर फ्रेंड राजेश महापात्र माय सीनियर कोलेग मिस्टर सुरजीत धर भुजबल
my senior colleague Mr. Jatindranath Swai and dear friends. आज शनिवार रे मॉर्निंग रे आपण माने समस्ते बसी एठी ओडिशार विजन विषय रे 2036 रे कौन हबो 2046 रे कौन हबो से विषय रे विचार आलोचना करूचंती सुनुचंती एटा आपणकर ओडिशा प्रति स्नेह श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता दर्शौछे। ओडिशा विषय रे आपण माने उणादिके समस्ते जानिचंती केमती गोटे रिसोर्स रिच स्टेट मिनरल विषय रे आपण माने समस्ते जानिचंती कि भलिया मिनरल रिजर्व अछि एवं इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच स्टेट्स इन द कंट्री। से विषय रे मु बेसी समय नेबी नहीं बट आउ केते गुडे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स अछि ओडिसा रो सेटा होछि जे एटा गोटे कोस्टल स्टेट 480 किलोमीटर कोस्ट लाइन अछि। जेकोसी स्टेट जदि कोस्ट लाइन स्ट्रंग अच्छी तार केते गुडे इनहेरेंट एडवांटेजेस थाए एवं ओडिशार पोर्ट्स एवं कोस्ट लाइन आमको सही इनहेरेंट एडवांटेजटा दबा कथा। आपण जदि वेस्टर्न कोस्ट रे देखिए गुजरात हो महाराष्ट्र हो केरल हो दे आर हाईली डेवलप्ड एंड दे हैव लिवरेज्ड देयर कोस्ट लाइन टू पुश दैट डेवलपमेंट। आमर आउ गोटे एडवांटेज होची ओडिशा भितरे गुड़ाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन अच्छी विभिन्न प्रकार पनीपरिबा फसल इत्यादि हो पार ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन गुड़ाक 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होची। आपण जदि राजस्थान आड़ को आसबे 300 मिलीमीटर रेनफॉल ओडिशा रे 1500 मिलीमीटर रेनफॉल उर्वर माटी तेणु एग्रीकल्चर सेक्टर रे गोटे बड़ प्लेयर हेबाई ओडिशार क्षमता अच्छी एवं सबुठु बड़ एडवांटेज होची बहुत पीस लविंग लोक जेते दुर्दशा थाउ जेते दरिद्रता थाउ जमती मनोरंजन बाबू कहते 10,000 टंका मासक इनकम परिवार केबे भी क्या ब्लेम करें जहाँ ही प्रभु जगन्नाथ इच्छा माँ समलेई इच्छा माँ पाटनेश्वरी इच्छा बट अन्य को ब्लेम करें नहीं। तेणु गोटे बहुत पीस लविंग आउ गोटे माइल्ड कम्युनिटी कहले अत्युक्ति हम ना। आमे जदि आजिका दिन रे 2023 रे देखिबा ओडिशा बहुत गुडे सेक्टर रे भल काम करिछ। आपण जदि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिबे ओडिशा भीतर देखि गुडाई एनएच जाउची एवं 4 लेनिंग 6 लेनिंग ऑफ एनएच हेकरी गुडाई काम होइछ। आपण वेस्टर्न ओडिशा रे देखिबे बिजू एक्सप्रेसवे आउ राउरकेला आउ संबलपुर भीतर जो एक्सप्रेसवे हेइची सेटा डेफिनेटली आमर डेवलपमेंट को पुश देबार सहायता करुछ। आमर बहुत गुडे रिसोर्स को बेस करिकी इंडस्ट्री आछि। आमर जेहेतु बॉक्साइट रे माने बहुत रिच बॉक्साइट एल्युमिनियम इंडस्ट्री आछि। आमे जेहेतु क्रोम रे बहुत रिच गुडाए फेरोक्रोम प्लांट फेरो अलॉयज और स्टेनलेस स्टील प्लांट आछि। जेहेतु आम माने कोल रे रिच गुडाए पावर प्लांट आछि किंतु ऑल ऑफ दिस आर रिसोर्स रिच और रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। आउ गोटे जिनस देखिए ओडिशा और सेंट्रल गवर्नमेंट भितर समन्वय प्राय भल रही आछि से सेंट्रल गवर्नमेंट रा फंड फ्लो अनइंटरप्टेड रही। ओडिशा गुड़ाए सेंट्रल फंड लिवरेज कर पारिछि लास्ट 20 वर्ष भितर बिकॉज ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन विथ द रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स। बट जदि फेल्यूर देखिबा केते गुडे जिनस रे आमे बोधे जो मिसिंग द बस कहती ताकू आमे करिचे। किछि समय पूर्वर ऑनरेबल एमपी श्रीजुक्त अमर पट्टनायक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स विषय कहते आमे जदि सेटा देखिबा ओडिशा रे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे पाखापाखि 30% लोक पोवर्टी लाइन तले अछंती एवं जदि साउथ ओडिशा को देखिबा से विषय मध्ये से मेंशन कले जोटी नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी रायगड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक 50% रु अधिक लोक पोवर्टी लाइन तले अछंती। 2021 रो एटा स्टडी आजिका डेट रे जदि लोक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे तले रहिबे माने जोटा मनोरंजन बाबू कहते मासकू इनकम 10,000 12,000 15,000 टंका भितर रोचन से माने परिवार किंतु ओडिशार पर कैपिटा इनकम केते 1.5 लाख टंका। तो जदि परिवार रे 4 जण अछंती ताले आइडियली 6 लाख टंका परिवार आय हवा कथा
किंतु जदि 20,000 टंका मासिक आय है परिवार ताहले 2,40,000 टंका वार्षिक आय 6 लाख कोटी 2,40,000 कोटी। तो यही जिनसटारे जो इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कहते से निश्चित भाव आमर गोटे बड़ गैप रही जाइए आहरी बहुत गैप अच्छे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रासरूट गवर्नेंस सिस्टम अच्छी जो ब्लॉक कहतु तहसिल कहतु आरआई कहतु से भितर अनेक गुड़े डाइल्यूशन देखा मिली आम केमती ग्रासरूट गवर्नेंस सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव करवा तार बहुत आवश्यकता अच्छी। मु गोटे केवल एग्जांपल देवी आमर टीचर माने ओडिशा रे से माने पे स्केल अनुसार कहीं भी 50,000 टंका तल पाऊना। आपड़ देखिए सरस्वती शिशु मंदिर 12,000 15,000 20,000 टंका पाँच किंतु पिला माने जाइकी सेठी एडमिशन नौचंती आमर गवर्नमेंट स्कूल रे नौना। सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस केमती इम्प्रूव करवा तार मध्य आवश्यकता अच्छी। तृतीय जिनस है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो आसीगला सॉरी रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज तो आसीगले पावर प्लांट आसीगला स्टील प्लांट आसीगला एल्युमिनियम प्लांट बट जो जिनसटा आपण मैंने कई शुणी थे डच डिजीज कहती रिसोर्स कर्स कहती गोटे इकोनोमिस्ट थे रिचार्ड ऑटी से रिसोर्स कर्स विषय कही जो 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 जगह गुड़ाक बहुत नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट रे स्ट्रांग थाए सेमानकर से एरिया रे डेवलपमेंट हुए नहीं बिकॉज कैपिटल आउ लेबर केवल गोटे सेक्टर रे इंटेंसिव थाए अन्य सेक्टर को डाइवर्सिफाई करि पारने एवं सेटा ही मोस्ट प्रोबेबली ओडिशा रे हिची आमे स्टील इंडस्ट्री देखिले एल्युमिनियम देखिले पावर सेक्टर देखिले बट सेगुड़ा सब होउची कोन सेगुड़ा सब ओडिशा भितर कि यूटिलाइजेशन हो नहीं। आपण जितेबाला एचआर कॉयल आउ बिलेट करिकी बाहर को पठेले कास्टिंग बाहर हम फोर्जिंग बाहर हम एक्सट्रूजन बाहर हम ट्यूब्स एंड पाइप्स बाहर बना हम आपण एल्युमिनियम इनगट पठेले तार केबल्स एंड कॉइल्स बाहर हम तार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बाहर हम तेणु यही सब आस्पेक्ट रे आमे माने वैल्यू एडिशन विद इन द स्टेट करिवारे बहुत आहरी प्रोग्रेस करिवार आवश्यकता अछि। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गुड़ाक केमती आमे ओडिशा रे अधिक आनी परिबा मु एठी कंट्री लेवल रे जतेबेले देखुची सेतेबेले देखुची जे जदी एप्पल आसिला इंडिया को आ बैंगलोर रे तार सेटअप कला प्लांट से तार चारिटा एसोसिएटेड मैन्युफैक्चर को आणुची फॉक्सकॉन को आणुची पेगाट्रॉन को आणुची विस्ट्रॉन को आणुची जतेबेले नाइकी आसिकी चेन्नई एसएजेड रे तार सेटअप करूची सी तार चारिटा एसोसिएटेड मैन्युफैक्चर को आणुची से माने इन एंड अराउंड चेन्नई तांकर बेस सेटअप करूचंती। जतेबेले आपार इंडस्ट्री एल्युमिनियम रो वैल्यू एडेड प्रोडक्शन करूची कोठी करूची अहमदाबाद रे नॉट इन ओडिशा अहमदाबाद रे करूची ता आखरे पाखरे आहुरी 10टा एल्युमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज ता संगे एसोसिएटेड होइकी रहउचंती। तो आमे माने केमती लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे जो गुड़ाक स्ट्रांग को गुड़ाक स्ट्रांग लेदर इंडस्ट्री इज वेरी लेबर इंटेंसिव आपणकर अपरेल एंड गारमेंट टेक्सटाइल एंड मेडअप्स माने कौन आपण माने जो माने बेडशीट करूचंती बेड लिनेन करूचंती कुशन कवर कुशन्स तार डिजाइन करूचंती सेगुड़ा सब मेडअप्स तार ओडिशा इंडिया रू एक्सपोर्ट ह्यूज बट ओडिशा भितर गोटे भी मेडअप बेस्ड इंडस्ट्री नहीं अपरेल रे केवल शाही इंडस्ट्री हैज सेटअप वन यूनिट इन एंड अराउंड भुवनेश्वर ता बाहर अपरेल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं आपण तिरुपुर जिबे तिरुपुर रे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन अपरेल एंड गारमेंट सेगमेंट आपण माने सूरत जिबे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। So how do we attract and create an ecosystem in Odisha where these kind of industries flourish is something that we need to think of. Sri Amar Patnaik food processing sector विषय कहले very relevant. Odisha रे आज्ञा 21% होची contribution to GDP of agriculture and allied sector. Ideally गोटे developed economy रे सेटा 12-13% रहिबा कथा 10 रु 12% रहिबा कथा 21% रहुची माने आमर डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर टू जीडीपी अच्छी
अर्थात आमर अन्य सेक्टर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जेतिकी आगु को बढ़िया कथा जिते आगु को बढ़े आमर एग्रीकल्चर शेयर टू जीडीपी सेते कम हवा कथा किंतु एबे भी 21% अच्छी माने दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेटर एवं से भितर आपण जदि देखिए माराइन सेगमेंट आमर जतेन्द्रनाथ स्वाई सर अच्छा यूनियन फिशरीज सेक्रेटरी आई थिंक ही विल बेयर मी आउट जे आपण जदि ओडिशा रु माराइन एक्सपोर्ट देखिए प्राय 450 मिलियन डॉलर होची किंतु आंध्र रु जदि देखिए तार 11 टाइम्स रो एक्सपोर्ट होची प्रोडक्शन अबाउट 12 टू 13 टाइम्स आमर नेबरिंग स्टेट सो यही सब सेक्टर गुड़ाक जो थे लेबर इंटेंसिटी अच्छी पैसा अच्छी लोक मानकर अधिक इनकम हम यही सेक्टर गुड़ाक अधिक फोकस कर आवश्यकता अच्छे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आमर कंट्री रू एक्सपोर्ट प्राय 25 बिलियन डॉलर $1 बिलियन हूँ 8,200 कोटी टंका 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट जदि आप डोमेस्टिक मार्केट देखिए 100 बिलियन डॉलर ओडिशा रे फार्मास्यूटिकल रो शेयर टू द इकोनॉमी इज ओनली अबाउट 40 to 50 करोड़ कहीं कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नांती से मंचेश्वर आ कटकर से जो खपुरिया पाखे 2-3टा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत कष्ट चलते सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केमती आगु को बढ़िबो से विषय में चिंता करियो अछि आमे जदि वे फॉरवर्ड चिंता करिबा आगु को कौन करिवार अछि जो पॉइंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस कहते ह्यूमन रिसोर्स रे डेवलपमेंट रे इंटरवेंशन हैज टू बी द बिगेस्ट इंटरवेंशन इन ओडिशा आमको जदि प्रोग्रेस करिवार अछि ताले हाउ डू आई टैकल द चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर आपण मान भितर हुए तो किसी लोग चैट जीपीटी बा GPT-4 यूज करते हुए कई करछंती चैट जीपीटी 6-7 जन हाथ देखुचे एक्सेलेंट GPT-4 जदि यूज करेंगे ताले मु जदि गोटे PDF डॉक्यूमेंट बा वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूची ताले इनविटेशन कार्ड हो गोटे ऑफिशियल लेटर हो बा कौन सी एनालिटिकल डॉक्यूमेंट हो चैट जीपीटी मते तार रिप्लाई करके दे दूची सो आगु को आमर जो माने अकाउंटेंट जो माने क्लरिकल स्टाफ जो माने PS और PA एभलिया लोक मानकर आवश्यकता रहिबो नहीं आर वी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आगु को आमको जो वॉल्यूम रे टीचर आम रिक्रूट करूँ स्कूल रे हुए तो सेतिकर आवश्यकता रहिबो नहीं एवं 2036 रे जोड़ा ऑनरेबल दीपक मिश्रा कहते जे हेई पारे गोटे सिचुएशन आपणकर मनीष इज हाफ ह्यूमन बीइंग हाफ डिजिटल बीइंग आपण भितर गोटे चिप थी आपन को चैट जीपीटी टाइप भी करिया पड़िबो नहीं से चिप को आपण ब्रेन रू डायरेक्शन देबे सी आपन को रिप्लाई देबो इट्स क्वाइट पॉसिबल एंड इट माइट हैपन 2036 बाय 2036 आर वी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एन इवेंचुअलिटी जे आमर लोअर लेवल रे केते गुडे ब्लू कलर जॉब एलिमिनेट हो तार रिक्वायरमेंट एवं तार सब्स्टिट्यूट करबा पई हाउ डू वी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हाउ डू वी यूज AI हाउ डू वी लिवरेज सम ऑफ दिस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तापाई आमे माने प्रिपेयर्ड होचु ना हो ना आजिका डेट रे विक्रम देव कॉलेज जयपुर रे बा GM कॉलेज संबलपुर रे बा बीजेपी कॉलेज रे आमर जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती से माने ए जो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होची से विषय फैमिलियर होचंती ना नहीं तांको से विषय जना जाउची ना नहीं जदि न जना जीवो से माने हुए तो दे विल मिस द बस अगेन एवं ह्यूमन रिसोर्स अगेन श्री अमर पट्टनायक बहुत रेलिवेंट पॉइंट कहले हेल्थ उपरे फोकस केवल एजुकेशन नुहे हेल्थ उपरे इक्वल फोकस इज ऑल्सो एसेंशियल बिकॉज गोटे चाइल्ड ब्रेन टा डेवलप कर जाए बाय 6 वर्ष एज से समय जदि ताकू ठीक हेल्थ केयर न मिली न्यूट्रिशन न मिली then we will not have intelligent human beings coming out of Odisha. So सेटा extremely crucial एवं तापाई हमको जहाँ करिवार आवश्यकता अछि. So focusing on value added industries, focusing on agriculture and marine sector, focusing on our education and health system are some of the extremely crucial things. And coming back to my department, एक्सपोर्ट्स आपण माने देखिए
जे ओडिशा गत वर्ष 7 नंबर रे थिला एक्सपोर्ट रे एथर पुणी 10 नंबर को खसी आछि काई खसी आसला ना स्टील एवं मिनरल उपरे गोटे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगे थिले सो दिस प्रूव्स द intensity of mineral and metal exports in Odisha's export basket. So how do we diversify that export basket to add a lot more products so that temporary measures like export duty doesn't affect Odisha's export is also very, very crucial. So in terms of measures, I have already outlined some of the actions which are required. It will require collective action on the part of all of us, Government of India, Government of Odisha, all the intellectuals like all of you. And I am a strong optimist, and I think Odisha's time is definitely coming, and in the next couple of years, we will see a very developed Odisha. Thank you. थैंक यू शीत षडंगी ब्रिलियंट स्पीच मु जड़े आईएएस ऑफिसर को एते सुंदर भाव में ओडिशार इश्यू को एते भल भाव से अनुभव करिसेंती एवं निजर मत प्रकाश करुछंती गोटे कथा केवल कहवाई चाहिए सार कहला बेले बहुत भल कथा कहले विक्रम जयपुर कॉलेज हो एसबीएम कॉलेज जगतसिंहपुर हो केन्द्रापड़ार कॉलेज हो एटी जो पिला माने पढ़ुचंती से माने ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी एवं बदली जाउथुवा दुनिया संपर्क में सचेतन अछंती कि मुझे कहवाई चाहिए जदि आप देखिए आम कॉलेज गुड़िकर अवस्था हुए तो आम बस को मिस करने जाऊँ गोटे भल पॉइंट सार उठे जे ए परिवर्तन होतिबा समाज सहित खाप खुआई आम कौन करुचु ए संपर्क में श्रीत अमर पट्टनायक निश्चित भाव में सरकारी दलर जड़े तुंग नेता हिसाब से आगू चिंता करेंगे ये गोटे बहुत बड़ समस्या आम समय आपन देखिए जदि केन्द्रापड़ा कॉलेज जगतसिंहपुर कॉलेज रू जड़े किए ग्रेजुएट बनूची ग्रेजुएशन पास ग्रेजुएशन पर से केते टंकार चाकरी करिपारियो जदि मु केन्द्रापड़ा छाड़ी भुवनेश्वर न आसबि मु भावुची केन्द्रापड़ार जगतसिंहपुर बा कोस्टाल बेल्टर जेकोसी कॉलेज को आप जी जदि गोटे ग्रेजुएट बाहर से 8 ରୁ 10,000 टंका भितर चाकरी करने बाध्य हम आम डिस्ट्रिक्ट गुड़िकर आम से इंडस्ट्रियल सेंटर बनईनु जोटी गोटे पिला मासक 15,000 बा 20,000 टंका दरमा पाई चाकरी कर वर्तमान समय ये हूँ सबुठ बड़ चैलेंज टेक्नोलोजी कथा आम पाखे पहुँची ना किंतु आम भीतर बहुत संभावना अच्छी मु खाली गोटे छोट उदाहरण देवी से तो राजेश महापात्र आपण पाखु जीवा पूर्व जे 2 दिन तले आम गोटे खबर जाजपुर प्रकाश करूँ ए खबरटी गोटे ट्राइबल झील को नहीं से झीटर ना हूँ राणी सिंह यूट्यूब रे गोटे चैनल करी 33,000 टंका भितर रोजगार कर 33,000 आपण मान बहुत बड़ न हो पारे किंतु गोटे अपंतरा गाँव गोटे ट्राइबल झील जे क्लास 10 रे पाठ पढ़ुची सी 33,000 टंका यूट्यूब चैनल करी रोजगार करिवारे सक्षम होईची ए खबरटी देखला बेले मते बहुत भावप्रवण लगिला से ता घरे केमती से खाऊची कौन पिंधुची ट्राइबल कल्चर केमती चलीची ए संपर्क रे से वीडियो पोस्ट करुची ता पाखरे आईफोन न थाई पारे टीम कुक को से न जानी पारे एप्पल कौन उद्भावन करुची आविष्कार करुची ता संपर्क रे से हुए तो बेसी सचेतन न थाई पारे किंतु यूट्यूब रो व्यवहार ट्राइबल झीलटे कर 33,000 टंका रोजगार कर चैनल को 2 लाख रु अधिक लोक सब्सक्राइब कर तो आम पिलांक भितर जदि गोटे ट्राइबल झील राणी सिंह भितर एते संभावना अच्छी ताहले एसबीएम कॉलेज जगतसिंहपुर रे केन्द्रापड़ा कॉलेज रे पढ़ुवा पिलांक भितर संभावना नाही बोली आमे कहि पारिबुनी किंतु ए टेक्नोलोजी सहित आमे तांको परिचित कराउछु तो से तो राजेश महापात्र आपन को अनुरोध करिबी धन्यवाद सम्मानीय अमर बाबू भुजबल बाबू बंधु संतोष बंधु मनोरंजन आज सभारे सामिल होइथिबा अतिथिवृंद आपण माने समस्त को नमस्कार ओळगी
ଆଉ ଜୁହାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୂଳରୁ କହିବି ନମସ୍କାର ଓଳଗି ଜୁହାର ସବୁ ତ ମିଳିଲା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା at 100 କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବାବୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠି ଥିଲୁ so I was telling him that so long as the Odisha at 100 agenda is on I think we are destined to meet again and again ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଲିସି ବିଶେଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର କଥାଟି ରଖିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋର କଥାଟି ରଖିବି ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭିଜନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯାହା କହିବି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହୁଏତ ଓରିଜିନାଲ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସଭାରେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତାର ସମରାଇଜେସନ୍ କରିଦେବୁ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଜନ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଓଡ଼ିଶାର 2036 ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯଦି ପୁନର୍କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ପୁନର୍କଳ୍ପନାଟା ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोमेंट दे अग्रसर होचे अनेक भल जिनिस होची किंतु अन्य तरफ रे गोटे आर्थिक मंदी आसी जाइछि अनेक प्रकार डिस्ट्रेस आम शुणा पाचु फार्मर्स डिस्ट्रेस हो लेबर डिस्ट्रेस हो मिडल क्लास डिस्ट्रेस हो शिक्षा भविष्य नहीं करी गोटे अनेक अनिश्चितता अच्छी आमे गणतांत्रिक अनुष्ठान उपरे एक आमूलचूल परिवर्तन हेबारे लागिछि जहाको मु कहि परिबि जे देयर आर अटैक्स ऑन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री सो व्हेन वी टॉक ऑफ ए विजन फॉर 10 years later 12 years later can we delink them I don't think we can delink them and I think whatever is happening today we have to locate our vision in that larger context राष्ट्रीय स्तर रे हो अंतरराष्ट्रीय स्तर रे हो बा क्षेत्रीय स्तर रे हो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अर्थनैतिक कॉन्टेक्स्ट ये सब जिनिस गुड़ी को ध्यान रे रखा पड़ो सब जेहेतु समय सीमित आज जो पर्यायर टिके विलंब आरंभ है मु तीनोटी बिंदु रे मोर कथाटी को रखी प्रथम है जे समस्ते कही सारी जे जो आमे गोटे विजन किंबा ओडिशार भविष्य विषय जिते चिंता करुचे से भविष्य विषय चिंता करिबारे सबुठु आज जो खास करी जो कॉन्टेक्स्ट कथाटी मु कहली आमे गोटे महामारी रु बाहर होकर आसीचु आ महामारी समय कौन है सी तार गोटे बहुत बड़ बड़ लेसन्स आम पाखे रही जाइए तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य यही दुईटी जिनिस आमर सबुठु बड़ गोटे एजेंडा रे रहिबार दरकार सबुठु ऊपर मो पई सेही जिनिसटी रुहे किंतु किभली शिक्षा और किभली स्वास्थ्य गुणात्मक शिक्षा सार्वजनिक गुणात्मक शिक्षा सेटा ऊपर आमर फोकस हेबा दरकार सेही भली आ एटा स्टेट्स education is a public good education should be the state's responsibility and it has to be quality education which is accessible to all ए जिनसटी आम बारंबार कहूचे किंतु कथाटा होची जे
रियलिटी रे आमे अनेक दूर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे मो स्कूल अभियान आरंभ कले तांकरी निमंत्रण में मुझे जोग देती 2018 रे एडवाइजर हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थिला किछि समय पर मते ओहरी जा पड़ा कारण मुझे देखिली जे शिक्षा व्यवस्था को आम सुदृढ़ करने को जिते भावुचे आम प्रथम भावुचे स्कूल बिल्डिंग केमिति बनेबा इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति बनेबा सुंदर चिकण चाकण केमिति बनेबा शिक्षा शिक्षक बिना शिक्षा नहीं शिक्षक बिना शिक्षा नहीं आमर शिक्षकों को ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट नहीं खाली बिल्डिंग बनई देले गत 35 वर्ष है जमी अमर बाबू कहले मु भी बीए करने ये आसी दिल्ली भितर मु अनेक प्राइवेट स्कूल देखी बिल्डिंग ठिया होकर बड़ हो जाए चमकाचक हो जाए किंतु सेठू आवर स्टूडेंट्स माइट बी गोइंग टू स्कूल बट दे माइट नॉट बी गेटिंग एडुकेटेड ये जिनसटी कहवा मु कहीं कहूँ जो थे मु द्वितीय बिंदु उपर चलीजी आई द्वितीय बिंदु उपर टिके ध्यान देवे आ मोर अनुरोध आ निवेदन पैनल जो मैंने भी कहले आमे जहाँ कथा कहवा से कथार कंसिस्टेंसी हेबा निहाती आवश्यक ए विजन कैनॉट बी बिल्ट इफ यू हैव इनकंसिस्टेंसी अमंग एलिमेंट्स ऑफ दैट विजन जेते बेले आमे कहूचे कि आमको आमर निजर अर्थनीति को सुदृढ़ करने को हम आमर दुईटी जिनिस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैज टू बी स्मार्ट किंतु आमे से जिनस कथा गुड़ी कहले आमर संतोष कहीकि गले कि किभली चेंज होची टेक्नोलॉजी किभली ड्राइव करुची जिनस को गोटे छोट उदाहरण देवी मोर इलेक्ट्रिशियन एवं मोर घर काम चली तीन दिन आगे कहला साहब ये सब आप चिंता मत करिए 2-3 साल के बाद ना ये चुनाई पोताई प्लास्टर ये सब के लिए लेबरर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा मशीन आ जाएगा आप प्रोग्राम फिट कर दीजिएगा सब हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिशियन का काम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जो है दीवार के अंदर गड़बड़ करते हैं वो नहीं हटा सकते हो तो मु ताकू कहली बाबू सेंसर चलुची मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पार तार पकेवाक पड़ो ना ताहले कौन हम ठीक कह रहे हैं चलीगला 5-10 मिनट घर भीतर बुलिक आसला पचारा सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कथाटा होची जे आज आम जो जिनस गुड़ी को नहुकी कहूचे आम कथा होचे कहूचे जे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को आम आगु को बढ़ेबा आवश्यक कहीं डज द फ्यूचर बिलोंग टू लेबर नो द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ए नॉलेज सोसाइटी we must be talking about how to build a society full of knowledge workers how to build a society of innovators आमे आम निजर गोटे एम्बिशन और एस्पिरेशन इतने लो कहीं करुचे आमर हैंडीक्राफ्ट बहुत सुंदर आर्टिस्ट बहुत करुँच इनोवेशन कौन हो पार वी शुड नॉट बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वी शुड बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज दैट ओडिशा दैट वी विल बिल्ड व्हिच कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर दैट इज कमिंग एथिरे सबुठु गोटे बड़ भूल होची तिरुपुर सूरत ये सब उदाहरण दिगला से उदाहरण कौन से उदाहरण होची तांकर 20 year old सक्सेस रो उदाहरण they are now thinking how to navigate the future and we are thinking to emulate the 20-year past of Surat and Tirupur no you are wrong you are going down the wrong path because when you would come to emulate Tirupur and Surat would have moved on to something new and then what would you be talking about so therefore we have to be very clear on one thing we should be ashamed that we take pride in tom-tomming our minerals resource richness because we are taking shelter under a 50-year-old rather 75-year-old extractive growth strategy which we have not changed and Santosh said the right thing when Apple comes to Bangalore it brings Foxconn it brings several other associates when Nippon comes to Odisha it only brings itself to extract iron ore make steel out of it raw steel and send it out जो जिनिसटा 100 टंकार से बिक्री होची सेटा अन्य एक राज्य रे जाइकरी ता परवर्ती समय जो वैल्यू एडिशन होची 1000 टंका तो 100 टंकार तो आपण लोक को 10 टंका ही मिलिबो जो राज्य रे 900 टंका जोड़ी होची सेठी किछि नहले 300 टंका मिलिबो एटा कोन कॉमन सेंस नुए
द्वितीय कथा आपण माने समस्ते आ जदि देखी नाहंती जानतु मु चाकरी छाड़िली 2018 मसीह 2 वर्ष ओडिशा रे बुलिली 30टा डिस्ट्रिक्ट बुलिली जो माइनिंग लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर आम एते गर्वित होउछे आपण रायगड़ा चली जातु आपण केउझर चली जातु आपण अनुगुल चली जातु कैंसर अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कैंसर जो भलिया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिह्यूमनाइजेशन हो जाउची सेठी लोकंकर प्रत्येक स्तर रे आपण देखिक सही पारिबे नाही आमे कोन सही ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेके आगु चाहू वी हैव टू डिफोकस फ्रॉम ए माइनिंग लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी सो इंडस्ट्री हैज टू बी स्मार्ट climate change Odisha is one of the most vulnerable state to climate change and yet Amar Babu कहले community resilience is a thing yes it is we have demonstrated community resilience but my question is why do we talk about community resilience only vis-a-vis our preparedness to face cyclones why don't we talk about community participation in policy making why don't we talk about community participation in driving change why do we have a very top-down approach to development in Odisha? This is the reality you have to focus and face. Odisha, the development strategy is absolutely top-down. Every policy decision is made at the top. Everything is run down. Show me a society which has actually the future that you are talking about, has stepped into that future by being a top-down policy-led society. No. You talk of the best of Scandinavian countries. You talk even a country like Japan, even a country like Australia. There are fair enough resilience at a third-tier governance system, second-tier governance system. So we need to think about how to be smart with our industrial vision, not how to be extractive with our industrial vision. That brings me to the second aspect of my second point, which is agriculture. Agriculture, and I for one don't think that if agriculture is 20% of your income, it's a bad thing. I don't think agriculture, if it is 20% of your GDP, it is not a bad thing. But if it is 20% of your GDP with 80% of dependence of people, livelihood, then it is a bad thing. There is tremendous opportunity for Odisha to reimagine its agriculture sector, make it climate change adaptable, make it, how it can take advantage of the new technologies and raise productivities. That is why जो मनोरंजन बाबू जोटा कहले आमे टंका लोकंकर केमिति बढ़ेबा टंका केमिति बढ़ेबा जगत सिंहपुर पिलाटा पास कला आगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बनातु से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 वर्ष पर बंद हो स्टेट सब्सिडी पर बट इफ आई मेक माय रूरल एरिया a vibrant economic entity, there will be employment. Why do we think that rural-urban migration for a upliftment of livelihood is a given? Why can't we reimagine a future where there is urban-rural migration? It can happen. It has happened in many places. And the future, which is going to be driven by knowledge, they're not going to be driven by plants. They are going to be driven by knowledge workers sitting at any location. I grew up in a small remote outback of Odisha, Chitrakonda. Today I feel confident that I can go to Chitrakonda and I can work from there. And why do I feel confident? I am a beneficiary of the public school education system. Because the government schools when we were studying were robust. I came from there to study in another public university. From there I went to another public university. I got quality education. I could navigate the corridors of metropolitan cities, and that is why I am standing before you today. Why can't we think differently? I think, we are being lazy while envisioning the future of Odisha. We need to work harder. We need to work harder. We need to question every wisdom that is at our disposal. If we really want to be winner in the future, we need to think afresh and think. And the third point, very quickly I will summarize, Manoranjan, I know you're getting impatient. All of that they said, we have to look at the question of social justice. We have to think how Odisha has 19% Dalit population, 24% Adivasis, 42% of our people have no say
in anything that you do that affects them. They have no say. And we very proudly say there is no casteism in Odisha. We need to relook at that question. If there is no casteism in Odisha, show me the representation of this 42% in the affairs of Odisha. You will not find their names. You will not find those surnames in the corridors of Nautala or the Secretariat building. I said it in another meeting also. It is all Das, Satpathy, Panda, Mahapatra, Patnaik. We need to think about it. Why is it that every nameplate in a third floor corridor only happens to be this surname? No, we don't want to question that because it can affect our standing. If we really are committed to a new future for Odisha, we need to ask that question. The question of gender was also raised. There is a great program, in Odisha. A lot of celebration is done around SHG. They did a fantastic job in pandemic. Are they only a utilitarian value? Or do they actually have a stake? I don't know. If women in Odisha, because look at our panel, it's a manel. The previous panel was also a manel. How? 50% of the population can't have a person here? Is that not a reflection on how we think and what we do? Now, if I'm sounding agitated, if you don't get agitated about these things, you will never change these things. चलता है चालीची तो आज्ञा एमिति हुए आउ then you will in 2036 you will be in the same place as you were in 2016. My last submission is, please, every time you think about a future for Odisha, and this is not my एटा मु प्रेरित गोटे कलाहांडी गोटे छोट कॉलेज प्रोफेसर डिसेम्बर मासरे जाइथिली सेठी तांकर ये कथाटी शुणी मते बहुत भल लगिला और प्रत्येक सभा मु आजिकल से कथाटी कहूँ जितेबेले आपण ओडिशार पुनर्कल्पना करने पाई चाहूँगी जितेबेले आपण ओडिशार परिकल्पना करने पाई चाहूँगी मो तरफ गोटे प्रश्न किभली ओडिशा आपण चाहूँगी जड़ ओडिशा ना जीवंत ओडिशा बिजू पट्टनायक एक्सप्रेसवे इडको टावर 18 महला all these things are necessary, they are good, we are very proud of them, but they will not give you a jivanta Odisha, they will give you a jada Odisha. जीवंत ओडिशा कौन दरकार जीवंत ओडिशा रे नागरिक रुए जड़ ओडिशा रे कंज्यूमर खाउटी खाउटींकर समाज बनवा जदि जड़ ओडिशा चाहिए नागरिक समाज बनवा जदि आप जीवंत ओडिशा चाहिए. Unfortunately, a lot of people today think development can be, for many people actually development is premised on the belief that it can be delinked from democracy. That is wrong. And unfortunately, let me concede saying, in Odisha, the dominant belief is that development can be delinked from democracy. That has to change. जदि सेटा परिवर्तन तार परिवर्तन हम ना ताले जीवंत ओडिशा केबे हेले बनिबो नै जदि जीवंत ओडिशा बनिबो नै भविष्यतर ओडिशा रे नागरिक नथिबे खाउटी थिबे सेही कथा को नै करी मु धन्यवाद जणाउछि आपण माननकु मौका गोटे देले जदि किछि कथा खराब लागिथिबो क्षमा करिवे किंतु भाबिबे प्रत्येकटी कथा आपण जदि निजको सचोट रूप रे टिके चिंता करिवे आपन को बुझा पड़ो जे यही सब जिन गुड़ी को बदलवा पड़ो आ बदलवाई केवे समय लेट नुहे आज आम यहाँ प्लेस नहीं पार्बा आम बदलवा ओडिशा गोटे नुआ ओडिशा बनइबा जो थे कि जो ओडिशाटी जीवंत ओडिशा हम जो थे नागरिकंकर ओडिशा हम यही नागरिक जार दायित्व भी अच्छी ड्यूटी भी अच्छी किंतु सर्वोपरि अधिकार रही अधिकार वाला नागरिक नागरिक अधिकार आमर राज्य अनेक गुड़ाए गड़जात को लेकर गठित तेणु गोटे साइकोलोजिकल सोशो साइकोलोजिकल लेवल उपरे आमर राजा प्रजार प्रथा चली आसी राजा प्रजा प्रथार प्रजार केवल ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए राजा हैज ए डिवाइन राइट टू रूल छामू ना छामू को लेकर जीवंत ओडिशा भविष्य बनी पार नहीं प्रजा नुहे नागरिक दरकार नागरिक जीए जार अधिकार
जे सेमाने ही डिसाइड करेंगे तांकु किए शासन करिब आ किपरि भाबे शासन करिब। धन्यवाद। हेलो धन्यवाद राजेश बाबू आपण बहुत उपादेय कथा कहले किंतु मु आपण सहित टिके एकमत होइनी किंतु समय आम पाखरे नाही। श्रीत पट्टनायक गोटे भल कथा कहते आजिकल यंग पिला माने बेसी समय मैराथन स्पीच शुणा भल लगुनि तांको से रिजेक्ट करूचंती कारण आमे सब रील्स जुगरे अच्छु छोट अल्प समय हेले आम पई ना ना आपण कथा मु कहूनी ना ना मु आपण को लक्ष्य करी कहनी रहे सब मु सामग्रिक भाव में कहवाई चाहूँगी जे धैर्य आमर कमी जाऊँगी जदि आप गोटे बृहत्तर ऑडियंस पाखे पहुँचापी चाहूचे आमर यूट्यूब रे आप देखिए जदि वीडियो को तो प्रतिदिन आम लक्ष्य करुचे तेणु आमे आम कथा शुणापी केते दूर आप बहुत भल भल कथा कहले गोटे कथा खाली कहवाई चाहिए जे आप तिरुपुर उदाहरण देले एठी जो मैंने बसचंती नेशनल कैपिटल दिल्ली रे से माने अनुभव करी केते दूर करि पारुछंती जदि गाँ सहित संपर्क थिबो से गाँर दुखटा को बुझी पारुथिबे। आम पिला माने एठी बहुत असुविधा अछंती कॉलेज रे पाठ पढ़ा बहुत खराब स्कूल रे स्मार्ट स्कूल सब वर्तमान हेलानी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी गलानी किंतु जहाँ राजेश साहब कहते टीचरंकर क्वालिटी बहुत असुविधा अच्छी आम पाखे किंतु सेति बेले जो पिला माने सब बाहरचंती मु गोटे कथा खाली श्रीयुत पट्टनायक को क्षमा चाहिए जो नेता पछरे जिते अधिक राली आपड़ देखुंट आपण ओडिशार दारिद्र्य आउ शिक्षा केते खराब अवस्था अच्छी तार प्रमाण आप पाउछंती जो नेता क्लेम करुँच मो पछरे लक्षे लोक आउछंती मोटरसाइकिल रैली रे मु कहबी जे ओडिशार दारिद्र्य बढ़ी जाउछि बेकारी बढ़ी जाउछि एते पिला समय कोट पाउछंती मोटरसाइकिल आउ 500 टंका पाइकरी आपण को पछरे गोड़ेवा पाइकी कारण आम पाखे शिक्षा कम अच्छी आम पाखे गोटे बड़ पर्पस ना तो यही एक सामाजिक समाज भितर आम दे जाऊँ आउ एतिकी बेले तिरुपुर कथा आपण कहले आम पिला तिरुपुर बर्तमान जावा दरकार आम इकोनॉमी आईसीयू रे अच्छी आम बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं नॉलेज इकोनॉमी आमर दरकार मु आपण कथा को स्वीकार करुच्ची चैट जीपीटी मशीन लर्निंग एआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम पढ़ू किंतु वर्तमान समय जो पिला सब नेता पछरे रैली रे बुलुचंती तांको हठात आपण कौन देबे तांको पई किछि नाही ओडिसा रे गोटे डिस्ट्रिक्ट को आपण जे देखिबे 10,000 टंका 10,000 टंका अधिक पैसा दवापाई दरमा दवापाई आम डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर कैपेसिटी नाही तो वर्तमान समय आमर मासिव इंटरवेंशन दरकार जे प्रति जिले में अंतत गोटे गोटे शिल्प खोल जोटी से गाँव पिला 10,000 टंकार चाकरी करें परवर्ती समय आम निश्चित भाव में नॉलेज इकोनॉमी कथा चिंता करवा आपण पूरापूरी 100% ठीक आम नॉलेज इकोनॉमी को जीवा दरकार किंतु आम वर्तमान आईसीयू रे अच्छु आईसीयू रे जे अच्छी ताकू तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन दरकार सो मो सीत सुरजित भुजबल पाखक जावाई चाहिए सर आपन ठारू अनुरोध करी ओडिशा संपर्क में निजर दृष्टिभंगी प्रदान करेंगे ता पूर्वर श्रीत चारुदत्त पाणिग्राही को अनुरोध करी श्रीत पाणिग्राही आसवे स्टेज को आउ तांकर गोटे क्लाइमेट चेंज संपर्कीय गोटे वेबसाइट को श्रीत अमर पट्टनायक इनागुरेट करेंगे। हाँ कौन सा अरेंजमेंट मुझे जानी एक्चुअली सर 1 मिनट खाली कही दूना 30 सेकंड पे आपन वेबसाइट ऊपर सर हाँ सेठी देइथिबे से क्लिक करिया पे आपन किछि परिचय सर नहीं से माने एटा हां सेटा को प्लीज करिया सो क्लाइमेटिस्ट्स दैट वाज द होल रीजन दैट वाज नहीं सेटा देखेबार थिला एटी सर किछि देखाउ चाहिए हाँ जी हाँ जी आप स्टार्ट कर climatist.org गोटे प्लेटफॉर्म जोटा आम क्लाइमेट चेंज रो सब किछि दिग गोटे रिपोजिटरी ऑफ क्लाइमेट चेंज रो जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी ग्लोबल पोर्टल climatist.org Rajesh, we are no more rightists, we are no more leftists, we are climatists. That's why this name. Climate नथिले ए विजन आ सब किछि नथिबा छात तो नथिबा आ स्कूल कोन पाठ पढ़िबे तेणु क्लाइमेट चेंज फॉर ओडिशा इज मोस्ट रेलेवेंट से climatist.org एटा बर्लिन रे हेइछि ओडिया टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बर्लिन रे करूछन यंग पिला एंड वी आर सपोर्टिंग दैट तेणु सबु किछि तांकर काम
So we are just supporting them, and I would request the Honorable Member of Parliament to launch it. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ climatist.org को टिके जातु आ निजर जहाँ जहाँ अच्छी से इनपुट्स डालतु एटा कहार पर्सनल प्रॉपर्टी नुहे कि कहार पर्सनल इनिशिएटिव नुहे एटा ओडिशा पाई इंटरनेशनल सब इनफॉरमेशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेस एयर पोल्यूशन सिटी मैनेजमेंट ओडिशा स्पेसिफिक ग्लोबल तो आमर जिते साइंटिस्ट अच्छा बाहर से मैंने भी ये करेंगे सो यू आर सपोज टू क्लिक दैट हाँ मोबाइल टाक हाँ सेटा climatist.org climatist हाँ देखे दे से करू all the young ओडिया टेक्नोलॉजी पिला बाहर जो मैंने अच्छा से मैंने ये कर एंड आई एम सपोर्टिंग मशीन लर्निंग फनिंग वाला जो गोटे ग्रुप अछि सेबा ना No, these are people from 3 IITs. ओडिया पिला from 3 IITs. IIT Chennai. अच्छा कहि दियंतु से ठीक है कहि दियंतु. Thank you so much. Let's clap. That's the whole idea. So ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର Thank you so much. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମିଶନରେ ଯିବି ଭାରି କାହିଁକି ନା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁଡେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ କହିକି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଥରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମିଳେ ଆମ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 5-6 ମିନିଟ୍ ସୋ ତା ଆଗରୁ ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପୋକ୍ ଅବାଉଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ସ ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ମୋ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଛୋଟ ସ୍ପିଚ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ସ by saying that I do not have the luxury of indulging in rhetorics. गोटे लाइन कही तापर मु मोर स्पीच वेरी ऑब्जेक्टिवली कही every line that we speak here, I or he or anybody, I think my advice is question it for the value of objectivity and rhetorics. To every politician, to every thought leader, to every person who is speaking to you, that will build the knowledge capital that Rajesh Babu is talking about. That will make a thinking and a thought leader of every Odia. Ask questions to every sentence that we speak. If someone says that I'm not referring to anything. If someone says that I want to build industry in my village, all of you are educated. There is something called production function. It is a function of many things. There has to be capital, there has to be land, there has to be labor, there has to be managerial ability, there has to be linkage. If you want to have an agro processing in cashew nut in Bhubaneswar, it will not work. No one is doing any charity. So anything anybody, as educated intellectual people, whatever anybody tells to you, whatever you hear in parliament from anybody, ask questions. Okay, how much of it has a rhetoric value? How much of it is objective? Whether it is achievable or not achievable. That will truly make us thought leaders of the world, thought leaders not only of India. Thank you. तो श्रीयुत सुरजित भुजबल को अनुरोध करी।
प्रोग्राम रे सबू पार्टिसिपेंट्स मानक मोर नमस्कार। मनोरंजन बाबू को मोर धन्यवाद, श्री महापात्र। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रोग्राम आई एम बहुत खुशी जे POVS इनिशिएटिवटा नहीं विभिन्न स्पीकर विभिन्न ऑडियंस को गोटे जगह एकत्र करी गोटे इश्यू उपरे आलोचना कर चेष्टा। मु स्टार्ट करने पूर्व आई वुड जस्ट लाइक टू से ए फ्यू वर्ड्स दैट जो भी प्रोग्राम हो सबु प्रोग्राम रो समय सीमा रखिकी कार्य करे गले भल हम। वी आर ऑलरेडी एक्सीडेड इनटू द नेक्स्ट टेक्निकल सेशन। आई थिंक मिस्टर स्वाई इज ऑलरेडी हियर and there are other speakers. So more तरफ रू I will make an endeavor that I will not take much time. I will to keep it as brief as possible. शेष स्पीकर गोटे सेशन रो हबार गोटे लाभ भी अच्छी किसी क्षति भी अच्छी। लाभ जे मो पूर्वर जो स्पीकर मैंने जहाँ जहाँ कहीगले सेटा आम समस्त बहुत बुझा को एप्रिशिएट करने को गोटे भल अवसर थिला। ता नेगेटिव होची आउ किछि कहिया को बाकी न थाई पारे किंतु द टॉपिक फॉर टुडे एंड आई थिंक द ऑडियंस विल बेयर विथ मी तार पैराफ्रेज आउ तार जो डेप्थ आपण चाहूँगी विजन ओडिशा ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ना जो मैंने MBA करछंती मैनेजमेंट स्कूल रे से मैंने जानिथिबे जे विजन्स माने कौन ऑब्जेक्टिव माने कौन गोल माने कौन। Vision something it is not to be achieved in the immediate future, it is a very long term माने बहुत किसी से भविष्यता रहुछि। आज गोटे बहुत प्रमुख दिवस आज हूँ विश्व पृथ्वी दिवस, द वर्ल्ड अर्थ डे। पृथ्वी सारा जगत सारा लोक आज गोटे प्रतिज्ञा नियंती कि जहाँ पृथ्वी प्रति आम क्षतिग्रस्त करें ताको रिवर्स करने को गोटे उद्यम आम नबू। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो इनिशिएटिवटा US अमेरिकार न्यूयॉर्क रे केते वर्ष तले आरंभ होता। आज सारा भारत वर्ष रे और पूरा जगत रे सब लोग आज एकत्रित होगी ये ग्लोबल अर्थ डे पाई गोटे प्रतिज्ञा नियंती। आम टॉपिकटा होची बहुत बड़ा। आई लाइक टू मेक इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। I would like to touch upon the historical aspects of Orissa because when I come to the end of my speech, I will come to very few words and phrases which I think encapsulates the vision for the state of Orissa. You know, the state of Orissa is historical. ए राज्यर इतिहासटा अन्य बहुत गुड़े राज्य टू पूर्वर अच्छी एटा डॉक्यूमेंटेड है कि अच्छी। आपणकर जो 106टा खंडे एबे जो आविष्कार होती जोरा कहती पत्थर रे जो पेंटिंग कराई द रॉक आर्ट पेंटिंग्स से जना पड़ी कि 5000 6000 7000 वर्ष पूर्व कि 10,000 वर्ष पूर्व ओडिशा रे सभ्यता बहुत एडवांस स्टेज रे थिला। इवन आमर जो 2013 मसीह जो गोटे नुआ सहर नगरी को आविष्कार करागला हरेराजपुर रे से जहाँ देखा जाउची कि आमर सभ्यता गोटे सिविल सोसाइटी हिसाब रे एबे 4000 वर्ष पुराना। बहुत यंगस्टर मानकू ए विषय जानिया को गर्व हबो कि ओडिशा भाषा is one of the recognized 6 classical languages of the country। तार गोटे बहुत बड़ा महत्व अच्छी। आ मुझे आपको पचारि अन्य 5टी भाषा कौन आप निश्चय कहे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम संस्कृत तापर ओडिशा। आप से विषय जानीपारे कि जो कहती एंटिक्विटी माने तार पूर्वर कौन अस्तित्व थिला ओडिया भाषार अस्तित्व बहुत किसी थिला। जो 2011 मसीह जो कॉन्स्टिट्यूशन को यही लैंग्वेजटा आमर पार्लियामेंट रे अप्रूव करागला
ସେତେବେଳେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗର୍ବ ଦିନ ଥିଲା। Again like to touch upon the issue that ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଲିପିଟା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପୂର୍ବର ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ପର ଲିପିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହେଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା କି ଓଡ଼ିଶାର 28% ଜନବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜାତି ଆଦିବାସୀ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର କଥା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମଠୁ କେତେ ଭାବରେ ମିଶେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭାବରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବି ଅଛି କି ଯେଉଁଟା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ କି କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆସ୍ପିରେସନ୍ସକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା କି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। We are all proud of her. We are proud of our own heritage. Orissa needs to think about its development keeping in view of its past. जदि आज आम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कथा कहूचे ओडिशा's knowledge was at its premium. आमर लिटरेचर जोटा कि उभरी हेकी पोएट सारला दास कर हाथ में जो लेखा 15th सेंचुरी जो से उद्यम रखी महाभारत को गोटे नुआ प्रकार रे आम समाज को सामने पेश करिया क्यों ता पूर्वर भी जदि आम आम राजा आमर प्रिंस आमर किंगडम मानक विषय जदि कथा कहबा खारवेल समय आमर गोटे बहुत गौरव समय थिला। महाभारत रे ये कथा निहाती लिखाई किंतु वेद मानकर भी लिखाई कि ओडिया ओडिशा प्रांतर ओडिया लोक होचंती बहुत एरोगेंट बहुत फियर्स एंड हाईली इंडिपेंडेंट इन देयर माइंडसेट जो माने गोटे काठ गंडी को पूजा करती। लॉर्ड जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ को विषय जेते जहाँ कहले भी जगन्नाथ हैज बीन एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड टिल टुडे इफ यू लुक एट द यूएसपी ऑफ ओडिशा this is one of the major binding factor in a modern day India and today I think आपण माने समस्त जानिथिबे रथ यात्रा रो प्रैक्टिस टा खाली भारत वर्ष रे नुह इस्कॉन जरिया रे हो कि जहाज जरिया रे भी इट इज एन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ सेलिब्रेटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस अर्थ। आपण ताको श्री कृष्ण भाव रे देखंतु आपण ताको पेनु महाराज जोटा कंध ट्राइबल समाज रे पूजा जाउथला से भाव रे देखंतु ये जो आदिवासी आउ हिंदू प्रथार जो कंटिन्यूटी रही ओडिशा रे भारत वर्ष रे अन्य जगह भी थिला किंतु जो प्रकार ये जो प्रभु जगन्नाथ को कल्ट जोता कहती जोटा कि उभरे आसिक सामना को आसिला इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज वी हैव टू इंस्टिल इन आवरसेल्व्स the pride of being an Oriya. आपण ओडिया कहतु कि ओरिया कहतु टाइम्स विल चेंज किंतु वी आर born on this land and we are proud. गोटे समय थिला जेतबले ओडिशा राज्य ओडिशा प्रांतर जो जंगली हाथी मानकू धराई की and these elephants were in high demand all across the world. आपण जानिथिबे जेतबले कार्पेथियन इटली रे आजिर इटली जते माउंटेन्स जो एल्प्स जो माउंटेन को क्रॉस करिया को जते उद्यम रखाई थिला कुहा जाउची कि गुड़े हाथी जते सेतले यूज कराइथिले ओडिशा प्रांतर हाथी थिले जोति पई कि मेडिवल पीरियड रे हमर राजा मान को गजपति कहला किंतु टुडे द सेम एलिफेंट is now pleading for our attention. मोर ए विषय गोटे कहबार अच्छी जदि गोटे श्रीलंका राज्य हाथी टूरिज्म जरिया रे $1 billion इनकम जनरेट कर पारछंती कैन ओडिशा थिंक ऑन दोज लाइन्स कैन ओडिशा बी इनोवेटिव कैन ओडिशा इंस्पायर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया द ग्लोबल वर्ल्ड इन टेकिंग द लीडरशिप which it has been doing for thousands of years. The spread of Buddhism
from the land of this country, where Orissa played an extremely major role. Ki today, the Chinese research scholars are able to take out documents where our scholars from our land had been to that far off, far east country and had promoted this religion. Very recently, we had the Global Buddhist Summit. So we have to think in a very clear-cut manner whether, as my previous speaker said, we want Orissa to be a soft power or we want it to be the iron power. Today, the gross state domestic product of the state of Orissa, it comprises of around 65 to 70% of mined products, whether it is iron ore, whether it is coal, or whether it is refining of petroleum. If you are going to have a basket in a very limited context, as 70%, occupying a major share in a gross domestic product, we have to think in providing variety. The ways and means to provide variety, which we provided in the years past, when the people of Orissa navigated through the internal river system, whether it was Kuakhai or it was Prachi or it was any other river or Daya. And from that internal river system, they developed the expertise to spend 6 months at a time on the Kalinga Sagar, renamed later as the Banga Sagar. I don't know why it was renamed, because people from Orissa didn't object or we didn't have a voice, but we allowed that to happen. It did happen sometime during the British time. To reclaim our past prestige, to inspire the future generations should be our vision. Economic activity is definitely a part of living, but it's not the whole. We have to live a life. We have to live a life along with the other living creatures on our land. ओडिया रे ओडिशा को गोटे बड़ शॉर्ट डिस्क्राइब करा होतला वन पहाड़ रे घेरा राज्य सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड हिल्स इज द स्टेट ऑफ ओडिशा. सिमिलरली आपण शुणिथिबे इन अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स इन ओरिया अरणा मईसी रहिछि अनाई मईसीर पास न जाओ दनाई. The simple lines which speaks about the wild buffalo. Sadly today, ये जो प्रजातिटा आज नहीं आम पाखरे. The state of Chhattisgarh is making a mega initiative to repopulate its forests with this ancient animal. The Honorable Prime Minister has taken this initiative to introduce the extinct cheetah in Kuno. I feel the state of Orissa also should endeavor to regain its lost prestige, because in this lost world, in our lost ancestry, lies our future. We also know that our well-known Chilika has been beautifully worded by saying Maralo Malini Nilambu Chilika. You know, today, in the current context, when we are celebrating wetlands as our own cherished natural resources, because why I repeat all these natural ecosystems is, these are the sources of income generations, these are the entrepreneurial activities which may be possible in future. We also have in mind that while doing so, it is our duty, our daitya, that the beautiful lake of Chilka lives for posterity. Whether we say that a brackish lagoon life is limited, but the fact of the matter is the 182 villages in and around Chilka live a life which is integrated to the waters of Chilka. Do we, while doing so, think about a development which will retain the character of this big lake? Today, this lake has a hosting capacity of 1.2 million birds. 12 लक्ष पक्षी ए हर्दरे गोटे समय एकात्रित होकर रहती. Now, which is a record for this whole of Asia, recognized by internationally by the Ramsar Convention. It is our duty again to see the strengths of this state.
While saying this, I'm also equally happy that when the government, state government, took this initiative of hosting the World Cup in hockey, it was a moment of pride. I think many of us will appreciate that the city of Bhubaneswar, Tri Bhubaneswar Nare Jota Sahara Gotthana Hela, is the only city in the whole of the world which has hosted the World Cup in hockey on 2 different occasions. There is no other city in the whole world which has hosted this sort of an international event. I myself have seen at close quarters the enthusiasm of the Orias in watching these international games. We can only hope that sports as a medium of growth, as a medium in showcasing our capabilities and abilities and taking the name and fame of Orissa beyond to the shores of the world is a potential which needs to be tapped. We are equally proud, I think the world over recognizes us, that when the olive ridleys come swimming to the shores of Orissa, swimming thousands of kilometers, what is there in the state of Orissa for them to come to this place? 485 long coastline. Whether that coastline will continue to afford conducive environment to these olive ridley turtles, Ejo Koinchamane, who live to the lifespan of 150 years. ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନବ ଜାତିରେ 150 ବର୍ଷ ରହିବାର ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ. But they live and survive for 150 years. There is something in the state that it attracts this 10 lakhs of olive ridleys every year. Why do they come? Are we in a position to ensure that the future years would belong to them also, as it going to belong to the citizens of this proud state? Narration-wise, we are part of this great country, there's no doubt. As India progresses, there would definitely be beneficial fallout for the development of the state of Orissa. The 30% of poverty line, which has been spoken about by our predecessors, is true, it is a reality. The endeavor has to be as much inclusive as possible, whatever we aspire for. It has to be inspirational. It has to take into account the views and the concerns and the wishes of all our segment of society. Because only then this great state will continue to survive, steeped in history, steeped in culture. You talk about food. Today, we have a move to inculcate healthy food, healthy feeding habits. Very few outside this hall, or maybe outside my state of Orissa, will realize that some of our traditions in cooking, amaro khadya tiyari kabar jo pranalita, is one of the healthiest. ଆପଣ ଛେନାପୋଡ଼ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଅଂଶ ନାହିଁ. ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାନସମା କି ରାନ୍ଧୁଆ ସେଥିରେ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଚେନରେ କେତେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ. ଏସବୁ ଜିନିଷ, these are all soft elements of soft power. Can we leverage on this power in the coming years? Can we leverage on our capability of varied aspects of culture which is there in our state? We feel proud that the Odissi dance is one of the most ancient dance forms, because in the 1st, 2nd or 3rd century BC, Christ ko Purbaru, this dance form has been depicted in our rock art caves in various aspects, and it is one of the most modern dance forms also, because 1950 provided the contemporary format for Odissi. This rich past, very few regions in this country have. We are steeped in culture, we are steeped in knowledge, we are steeped in our enterprise. And this is what should, I think, provide us the animal spirit to be a leading entrepreneur, the animal spirit to provide leadership in the field of technology, whether it will be a labor-based or it will be an artificial intelligence-based. We all know that it is challenging times not only for the state of Orissa, but the whole world. Whether by artificial intelligence will have subsidized elements of our society living on this earth, whether like in the European countries, we'll be providing subsidy to the people who don't have a job, will definitely be points to ponder.
But this is an excellent opportunity to leverage on the intellectual prowess of our people. Our traditional knowledge, our traditional achievements, everything should be leveraged. And while seeing all this on this grand day of the World Earth Day, I feel, and I like to end my talk because I don't want to take much time, that I feel the four cornerstones of any policy which will provide a vision for the state of Orissa to the year 2086 and years beyond. The four cornerstones should be, I think all of us could agree, and I request the organizers that whatever speakers have spoken in the past should be duly recorded, because otherwise we talk and it is lost. People like you, I think, are hearing, maybe in future years you'll be the speakers, the future generation will hear you. But I feel the first, as a private individual, I'm grateful to have been invited to occupy this stage. I feel the first cornerstone should be an element of inclusiveness. We have to include all segments of society. The policy and the aims and objectives of this great state should be inspirational. It should inspire the whole world. It should not limit itself to getting inspired locally or in the regions outside the state. It should be innovative. We need to innovate. We need to reposition ourselves. We need to re-establish, re-emerge from all the difficulties which we have got. And keeping in view the dangers of climate change, we recently had the website on climate change being inaugurated, an excellent initiative by Mr. Panigrahi. We need to have all the plans and programs keeping in view the sustainability of the natural resources on hand. I feel with these four elements of a vision, I feel we can take the state forward. Thank you very much to POVS for giving me this opportunity. बहुत धन्यवाद श्रीत भुजबल आपण जो भली ढंगरे ओडिशार कला ओडिशार संस्कृति आपको निजर वक्तव्य माध्यम प्रदान कले निश्चित भाव में स्पीच टी रेकर्ड हो रहिबो ए कथा परवर्ती जेनेरेशन चिंता करिबो जे आजिर दिन में 2023 मसीह आमे आगामी ओडिशार स्वप्न देखुचु जो ओडिशा गोटे पाद आगे थिबो आउ आमर प्राचीन परंपरा आमर संस्कृति ये आम भितर थिबो किंतु आमे नुआ कथा चिंता करूथिबो। अनुरोध आसुची गोटे दुटी क्वेश्चन नवा पाए। हाँ फास्ट क्वेश्चन के करेंगे? मु मीनाकेतन बेहरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रू कहूँ मोर क्वेश्चन हूँ आम आपण भी मनोरंजन बाबू कहते जे आमर पैसा कथा 10,000 इनकम भी होनी तेणु बर्तमान आमर एपर्यंत जो एम्प्लॉयमेंट अच्छी जो लेबर इश्यू लेबर सरप्लस अच्छी जो ट्राइबल एरिया आमर लगभग SC ST की मिलई देले 42% हो जाउची से कंडीशन देखिले माने बहुत तापर एपर्यंत ओडिशा गवर्नमेंट किभली भाव में जो एम्प्लॉयमेंट इश्यू को आमर 236 को जो प्लांटा अच्छी कौन एम्प्लॉयमेंट उपर कौन होती कारण बड़ बर्तमान सबुठारु माने समस्या देखिबो ताले एम्प्लॉयमेंटा सबुठारु बड़ कथा मतलब लोकों क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट नाही सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिसअपियर इंडस्ट्री नाही एम्प्लॉयमेंट कौच नाही आम बर्तमान टेक्नोलोजी बेस आगो आगुच तेणु ये क्षेत्र में आम किभली भाव में माने आ ऊपर एम्फासिस करिबा। राजेश बाबू को ए प्रश्न मु पचारे चाहिए। राजेश बाबू आपण ओडिशार अर्थनीति उपरे गोटे कर्मशाला करुले प्रति सप्ताह संपर्क में चर्चा करुले मु दुईटी कथा ए संपर्क पचारि एवं चटापट आम ए सेसन टी सारिबा जे आजिर दिन में 10,000 टंका ओडिशार सबु परिवार रोजगार करने समर्थ होना आपण भावुंट कि गोटे समय आसब अंतत 10,000 टंका ओडिशार प्रत्येक परिवार रोजगार करिपारुथि एमती गोटे दिन खूब शीघ्र आसो बोली आपण आशा करुचंती? आसीपर सबू सबू किसी हो पार जदि आम चाहिए मु कहूँ 10,000 टंका ही आप कहीं रखुंट एम्बिशन आम ना ना मोर प्रॉब्लमटा से जदि आप 10,000 कथा भावे आपड़ से तिरुपुर रे लोएस्ट वैल्यू चेन रे केमिति मु शामिल हो पारि से कथा भावे
So what Minaketan was asking, and in fact, he is more competent than me. He teaches in JNU, he studies labor economics. I think people like Minaketan and all should actually take up this responsibility. He has shied away from me. I have been chasing him for last 1 year to put together a group of economists on this issue, the employment question, because that is going to be paramount. So let us forget for a moment this 10,000, 12,000. Let us say the question of employment is not only paramount at a national level, at a state level, but also at a national level. And that is where I am emphasizing again, there are two things. One is I don't look at 10,000, 12,000. I look at meaningful employment. Now what is meaningful employment? Meaningful employment has got two things. One, that there is a certain remunerative, certain remuneration, जोटा कि आपनकर यथार्थता अच्छी, जो कामटी करूचंती, जेति यथार्थता अच्छी सेति की पैसा आपनको मिलो. द्वितीय, security of employment, कि स्थायी हेबा दरकार. आमे माने ऐसा हमें सारी बात. So the two things, meaningful employment means remunerative and job security. এই দুইটি জিনিস যদি আপন ভাবিবে তাহলে আপনার রাস্তা খোলি যাব. 10,000 টঙ্কা রু বাহার কু যাআন্তু. জব সিকিউরিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট. আজ 20,000 কমে বি কালি কি 2,000 কমে পারিবে নাই, কিছু নুহে. দ্যাট ইজ নট মিনিংফুল এমপ্লয়মেন্ট. ওকে, বহুত ভালো কথা রাজেশ বাবু কহিলে, কিন্তু মু কেবল এয়া কহিବାକୁ চাহুଥିଲି যে আজির দিନରେ ওড়িশার গাঁ গন্ডারে লোকমানଙ୍କର অর্থনীতিটা কোণ সে সম্পর্কে আমি চিন্তা করা দরকার. গোটে मैट्रिक पास कले तो आम +2 को जीवा, कि मिनिमम लेवल रे आम बर्तमान सुधा ना 2036 मसीहा बेलू ओडिशार अर्थनीति कौन हो से दृष्टिकोण आम चिंता करवा दरकार. नेक्स्ट क्वेश्चन. मो प्रलय बहाली, एडवोकेट बाय प्रोफेशन, लॉयर, वाज वर्किंग सिंस 2009 इन दिल्ली. मोर गोटे राजनैतिक क्वेश्चन. जेतबले राजनीतिक इच्छा शक्ति बिना कौन सी कार्य संभव हो पारिबनी. आमे सब बही रे पढ़ी ओडिया माने कौन समस्ते पढ़ी ऑल बैक बेंचर्स आर ऑल पॉलिटिशियंस, दे डोंट हैव विल पावर. आमे जति कि भल लोक माने राजनीति को आसीबा पई सुजोग पाउने बा चेष्टा करूने बा से विल पावर नहीं आम पाखरे. से पई केते राजनीतिक दल चिंता करूछंती, केते राजनीतिक नेता माने चिंता करूछंती, आउ आम भली बुद्धिजीवी माने केते चिंता करछंती. सेटा होची मोर आजिर ए उपस्थित समस्त समाज ओडिया प्रेमी मानकु मोर प्रश्न. जय जगन्नाथ. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. सार गोटे मत देले, क्वेश्चन नथिला किछि. ओके, हां दियंतु प्लीज. नमस्कार, मु सरोज कुमार साहू कलकाटा आसी पहुंची. मोर आमर जो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कि मीनाकतन भाई क्वेश्चन कले ता रिलेटेड क्वेश्चन. आम ओडिशा रे जते हमर स्टूडेंट माने बाहरुचंती, जो माने रोजगार करिया पई एस्पिरेंट, ग्रेजुएशन करचंती, पोस्ट ग्रेजुएशन करचंती, किंबा इंजीनियरिंग करचंती, किंबा आईटी लाइन में जाउचंती, जे कोनस लाइन में जाउचंती, से माने केते कॉम्पिटेंट है बाहरुचंती, से मानको आमे केते स्किल्ड भाव रे देखिबा को चाहू. से माने अनएम्प्लॉयमेंट 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 खाली कही चली जाए, किंतु जेकोसी गोटे एम्प्लॉयमेंट को आसवाई से जो स्किल डेवलपमेंट दरकार, से स्किल डेवलपमेंट आमे जो मैंने प्रवास ओडिया माने रहउचंती, जो मैंने कैपेबल, जो मैंने सरकार को पाखर पहुँची पारे, से आमे किछि करि परिबा कि. कारण सीत भुजबल के आंसर रखिए. नहीं, यहाँ जो मैंने कहते कि ओडिया हिसाब से ओडिशार फेरिकी आम कौन कर. I can only share with you because I don't have much time. I was requesting Mr. Manoran. We are exceeding into the next technical session. See, one of the few features which I have seen एबे जोटा मुझे देखा को मिलला कि मो समान बयसर जो लोक माने एबे मुझे देखुची जो मो संगे पाठ पढ़ले बाहर चाकरी करथिले 10-15 जन को जानि छी एमाने एबे ओडिशा फेरी आसी चाकरी छाड़ी की बिजनेस छाड़ी की ओडिशा आसी की ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करी की जेतो सब अपॉर्चुनिटी अच्छी माने दिस इज द टाइम टू टेक होल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपनकर बैंक ऋण हो कि आपनकर निज जमी जगह हो कि आपनकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल एंड पीपल आर डूइंग. एंड अगेन इट इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपन देखो तो बिजनेस जदि के करिया को देखिबो वी शुड नॉट लुक एट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय हिसाब रे न देखि कि एम्प्लॉयर हिसाब रे देखिले जोटा कि मत बहुत भल लगे कि दिल्ली सरकार गोटे उद्यम जोटा चली कि लेट अस बी एन एम्प्लॉयर नॉट एज एम्प्लॉय. I think that will be able to be a game changer because we being leaders of the society
we'll be able to provide employment to many. See, upon the present context, देखिए, one of the largest number of medical colleges, largest number of engineering colleges are in the state of Orissa. So I think we cannot deny that the skilled manpower is being generated by the state of Orissa. Now, similarly, if this skilled manpower, which is currently, manakara Bangalore upon jibe, Bombay jibe, amara bohu sankhya re Odia sari chakiri korchundi, karya korchundi. Now, whether they would like to come back and invest in this region is something even for the government of Orissa, as well as the government of the state, as well as the society in general, should be able to motivate them to come and do it. Because there is a limitation on the government-driven jobs. Government जरिया चाकरी दबा. I think एबे ओडिशा सरकार जोटा 60,000 खंडे NMR employee को contractual को permanent कला. एटा सबुदिन तो ही परिबनी because there are limitations. Government is withdrawing itself from many spheres. Being an employer, disinvestment होची, विभिन्न प्रकार कार्य होची. We are permitting the society to engage and to do govern themselves. टाइम सरी जाउची आमे कार्यक्रम को शेष करिबा कारण सार जा कहते नेक्स्ट सेशन पाई कि गेस्ट मैंने अपेक्षा करिसंती समस्त को धन्यवाद देबू 2036 मसीहा बेलू गोटे नुआ ओडिशा आमे देखुथिबा गोटे समृद्धशाली ओडिशा जो ओडिशा रे अंततः गोटे भल जीवन जीवा पाई सुजोग थिबो यही आशा और विश्वास सहित आज ये सेशन को शेष करिबा बहुत धन्यवाद. Thank you, Manoranjan sir. Before second session, I just want to, sir, please, for a moment. I request Manoranjan sir to felicitate our sir, Mr. Sri Surajit Bhujabal sir, IRS. Next, once again I request our Manoranjan Mishra to felicitate our Sir Sri Rajesh Mahapatra ji. And our program coordinator, Mr. Priyadasi Bala, please be in our dais. And please felicitate our Manoranjan Mishra as okay, sir wants to give. And thanks to Manoranjan bhai कि से ओडिशा रो बंदा इतने short notice रे आसिले and आमो program को जो awesome rate रे मतलब rating है जे सेटा समस्ते कहबे. That's not me only. Thank you so much to him. Yeah, it's our honor. He Thank you, sir. Thank you so much. For the second session is the sustainability in food, nutrition and agriculture. So, I just request Dr. Pavan Agrawal, Principal Secretary, ICAR, National Institute of Plant Biotechnology, New Delhi. Sri Jatinder Nath Swai, IAS, Secretary, Department of Treasury, Government of India. Dr. Basant Kumar Kar, the Nutrition Man of India, Chief Advisor, Global Center for Nutrition and Demographic Dividends. Sri Aditya Das, MD of Rams Surya Group of Companies. Then our moderator, our own Dr. Swati Naik, Scientist and South Asia Lead, Seed Systems International Rice Research Institutes. Thank you. Dr. Swati Naik is our moderator of this session and is currently working as scientist in IRRI, South Asia Lead for Seed System and Product Management. Also,
acting as global lead for rice seed system under one CGIAR initiative SeedQual. Thank you. Over to Swati ma'am. Start the session. Thank you. Thank you, Vijaya. Am I audible? Is this working? I saw some technical glitches in the beginning. It's okay? All right. So, thank you very much, POVS, for thinking that you will start your technical session with a very pertinent and important topic, that is sustainability in agriculture, food and nutrition for Odisha. And I am privileged to get the opportunity to host and moderate renowned policymaker, renowned scientists, renowned practitioners and industry expert. As diverse as it can be, our panel is. Before I start this process, I would request all the people in the room to kindly please settle down. Can everyone please settle down? Yes, request everyone please settle down. Don't roaming around the hall. And I humbly request, please do not indulge in any side talking, please. We have a great opportunity to listen to some of the really technical and pertinent subject, and we will try to keep it in time. And I am humbly requesting all my panelists. Earlier we thought that we'll have like a 15 minutes, slot for each of us, but we will try in our best level to keep it crisp and targeted so that we are not getting delayed and it is not unfair for other sessions, other speakers, and also the lunch is getting also delayed. So in this context, let me, yeah. So I just want to like to tell that I will keep it in a very structured manner, that there are some few broad questions, burning areas or very important discourse जो विषय कि आम माने चर्चा करिबा आमर डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्ट्स जो माने बसिछंती सेमानक पई कि किछि गोटे ब्रॉड क्वेश्चन जोटा आमे रिसीव करिछु तांको पाखको we will project that question and we would like to hear their perspective and their thought on this, and in the end आमे किछि समय दबा ऑडियंस को सेमाने भी तांको भितर चलतिबा किछि प्रश्न जोटा कि सेमाने पचारिबा को चाहिबे. So we have this opportunity. So I'll start with yes, of course. I wanted to follow a sequence for flow, but I will. Yes, all right. Thank you, sir. I'll take a clue from our earlier speakers in the inaugural session. We heard about Odisha's potential around aquaculture, the coastal line, the marine trade, and with us we have our secretary from fisheries and a well-renowned policy maker in the sector. He has contributed significantly to this. Sir, according to Odisha Economic Survey that has been completed, we have evidence that there is significant increasing trade in production of fish in Odisha. But still, when we look at a little deep down into the data, we see that there is still import dependency on other states as well. But we do have a great potential, and we know that this is something critical to our diet and critical to our food pattern culture. And how do you see that? How can we make sure that we are becoming a self-sufficient and also flourishing state in fish production and trade? Okay, thank you. Very difficult question to answer. I just see the Odisha's data. The sector has shown a very good growth between 2001 to 2021. At least the official data says that the freshwater production has gone up by about 5.2 times. And the brackish water production, which is primarily shrimp, that has increased by about 10 times. So, and the official data says that the consumption per capita in Odisha is about 17 kilos per capita.
as against the national average of 6 kilos. So, looking at the advanced fish eating nations, which is basically Japan, China and some of the Western European countries where the average is about 25 kilos, 24 to 25 kilos per capita. So we are about 60% of that. So in terms of domestic consumption, we have another 60% growth from here. Yes, we can do a lot of export because a lot of areas do not produce fish, so we can export. So looking at the freshwater production, currently it is about 9 lakh tons or 0.9 million tons. It has grown by about 10% annually. We see that it can grow about at the same rate of 10% for next 12, 13 or 13, 14 years. So expect that it will double. What are the things to be done in that? One, I think we should make seed available. That's the most important part of it. Whether in terms of fries, whether in terms of fingerlings, whether in terms of yearlings. So fries is much easier to do. Yearlings means you have to create a system of nurseries prior to letting this yearlings grow in the ponds. So Odisha has done very well in terms of increase in the seed production capacity. What I would suggest here is that the existing state hatcheries as well as whatever is coming up can be done in PPP. There is a lot of private hatcheries that have come up. If you are talking about species diversification, freshwater is primarily restricted to rohu and katla, rohi vakro and miracle. These are the three major ones. Going beyond that, then probably some of these hatcheries or the seed production capacities, I recommend that they should come in PPP, where the offtake is guaranteed by the state for about 3 to 5 years before the market for such new species get a foothold. So then the second one, second imperative to increase fish production is availability of feed. Feed constitutes about 50 to 60% of the production of fish cost, production cost, and if you get cheaper feed, then you are become more competitive. Currently, the feed ingredients which are maize, grown in Odisha, soya meal, unfortunately no, it comes from MP and Maharashtra, and because the feed factories are outside, so you don't get a competitive advantage. So developing feed clusters with associated production areas for soybean can be a focus area. Yesterday I was talking to Collector Latur in Maharashtra. He received a prize from the Honorable Prime Minister on the Civil Services Day. He says most of the areas in Maharashtra have switched over from cotton to soybean because there is a very good market for soybean. So similarly, there can be some initially incentive mechanism because there is a demand for feed. Aditya is a practitioner, so he will know what is the demand for feed. So this is something that can do so that comparative advantage in feed production can be obtained. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It was a very crisp and targeted overview, and I'm sure we will be talking more detail deep down into it. But जहाँ जेतिकी सार आमको वर्तमान कहले से आमर जो मत्स्य उत्पादन पाई आमर माछ चाषी मान बहुत स्कोप आ अपॉर्चुनिटी रही ओडिशा रे आउ जदि आमे एग्रीकल्चर आजिकली आमे एग्रीकल्चर क्रॉप सिस्टम भाव में कथा कहने आमे ताको गोटे फूड सिस्टम अप्रोच रे कथबार्ता करूचे इटा माने आमर गोटे आमे मिक्स्ड फार्मिंग ऊपर कथबार्ता करूचे आमे केमिति भिन्न भिन्न एंटरप्राइजेस फूड सिस्टम ऊपर बिल्ड हो पार आमर चाषी भाई भौणी मानक पई कि ता ऊपर भी बहुत किछि चर्चा करा जाई पारिबो आमे से ऊपर भी आम सहित प्रैक्टिशनर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी अच्छा आम निश्चय फेरिक आसवा
in the meanwhile आमे जते बळे you know food system विषय रे कथाटा करछे हमर जो मुख्य एग्रीकल्चर अच्छी हमर एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छी सेटा हमर गोटे बैकबोन एंड आमे जानि छी जे 76% of population are dependent on agriculture livelihood and as you are knowing that 20% to the GDP contribution as was highlighted and etc. Now we have Dr. Pawan Agarwal who is representing ICR, you know, the apex institution which is working for agriculture research for development for our country. Sir, we know that Odisha, you know, last year in 2022 also indexed as a top ranking state for food security index. So let's give a big clap for that. And we have come a long, long way. And today we know that, you know, main crop like rice, we are like, you know, contributing significantly to the central pool. But still, there is something like, you know, where we do think there is disparity in the food security and there is a disparity in, you know, nutritional aspect. And still there are pockets, there are farmers, there are belts where we still see that, you know, the pain in our neck. We talk about hunger, we talk about malnourishment. So, sir, please, what is your thought on that? Thank you, Dr. Swati, esteemed Secretary Dr. Jane Swain, all the dignitaries on the dais of the dais. Mo prashnata ko tike broadly kahibi tike. Last 2 hours, whatever we have listened, few of the facts are there. Odisha is a agrarian state, of course, whole country. आमे 60 लाख हेक्टर चाष करुचु आम 10टा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ओडिशा रे होल इंडिया रे 17टा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी द मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइमेट आम ओडिशा रे अच्छी ता गुडाए लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटी कैन बी ग्रोन और आर ग्रोन also we are proud that we are 4th largest fish producing state. We are producing 65 lakh liter of milk. We are 6th largest producer of goat meat. Lot of product like kondamal, turmeric, hala, similipal, honey, hala, they are very famous. The state is almost 15% surplus for rice. And again we have a question that we are talking about food security, nutritional security, income security, labor security, livelihood security, environment sustainability, and life as a whole is an issue of discussion. So I'd like to talk some of the aspect because I saw Odisha very closely as a Vice Chancellor of Odisha University of Agriculture and Technology. I also had occasion to contribute to the state planning or state working or training, skilling, education or technology development, so I would like to touch. It is good that India is the only country probably, that is true for Odisha also, कि आमे food security को by law आमे agree करिछु. दुनिया रे कौन सी country including America doesn't have a law to have a food security for the people of that country. India has. Having told that, and also गरीब मानक कम पैसा रे टंकाटे 2 टंकार चाउल दबाटा बाकी सब सोशलिस्टिक एक्टिविटी आम गुड़ा करिछु तेणु आज जो जड़े कह मत कैलोरी मिलूनी तो आम खाइबा गंडा मिलूनी देन देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम इट इज पर से इज नॉट ए प्रॉब्लम हैविंग टोल्ड दैट स्टिल वी हैव चैलेंजेस चैलेंज कौन हम न्यूट्रिशन इज ए बिग चैलेंज लाइवलीहुड इज ए बिग चैलेंज अन्य मन जमी कमी कहले लेबर बा इनकम लाइवलीहुड इज ए बिग प्रॉब्लम ओडिशार कृषि जो कृषि समृद्धि ओडिशा 2020 रो जो प्रोग्राम हम देखिए इट इज वेरी इंक्लूसिव वेरी फॉरवर्ड लुकिंग बलराम प्रोग्राम ऑल्सो इज वेरी इंक्लूसिव वेरी फॉरवर्ड लुकिंग किंतु दैट इज नॉट एनफ जदि आप देखिए आम जेकोसी क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो फॉर एग्जांपल राइस आम नेशनल प्रोडक्टिविटी कम अच्छु दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कमोडिटी किंतु ताको जब आप डिसाइड करेंगे एंड यू विल एनालाइज वेयर रियली वी स्टैंड 40% ऑफ ओडिशा लैंड इज इरिगेटेड
more than 50% or 40% is lowland or upland. Upland धान लगे आप गोटे टन भी पाइबेनि वर्षा बन गला चल जीव lowland रे धर जो गोटे मीटर पानी अच्छी आप धान लगे why you expect a productivity or output, so that make average very poor. तमाने आमे आम डाइवर्सिफिकेशन टाकू प्रॉपर्ली करि पारिनो आप जो गत 50 वर्ष इतिहास देखिए 1970 रु 2020 पर्यंत 50 वर्ष आम एग्रीकल्चर प्राय 10% डाइवर्सिफाई करूँ राइस कला परे भी वी आर 15% राइस सरप्लस. बहुत लोग मत कहती से जिते मुझे थी आज भी प्राउडली कहूँ आपन भावत इट इज ए हेडेक आम सरप्लस अच्छी इट इज ए प्रॉब्लम मुझे इट इज ए अपॉर्चुनिटी. आपन जो कहीं कही था ओडिशा 10% माइनस अच्छी आप मुंडर हाथ दे बसते जेहेतु योर सरप्लस यू ओकेजन टू डाइवर्सिफाई केमती करें आप राइस को राइस डाइवर्सिफाई करें. यू कैन ब्रिंग वैल्यू एडिशन आपन बासमती भाया सेंटेड राइस करें नॉट एक्चुअली बासमती आप एक्सपोर्ट बढ़ी पारे राइस ऑलरेडी इंडिया 80,000 कोटी टंका अधिक एक्सपोर्ट करुच्ची राइस एंड प्राय 2 लाख कोटी टंका अधिक आम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करुचु आज इंडिया. सो वी आर नॉट दैट बैड सेफ. आम अलग क्रॉप को करें अलग कमोडिटी को डाइवर्सिफाई करें जो 10% पाखे अच्छी टिपिकल अपलैंड है आम हर्टिकल्चर क्रॉप करें वेजिटेबल अच्छी फ्रूट्स अच्छी. आपन जदि आ गोटे 2टा एस्पेक्ट अच्छी जोटा होल देशपाई इश्यू इट इज ए प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री एंड दैट इज वेरी ट्रू फॉर ओडिशा. वन इज पल्सेस अदर इज ऑयल सीड्स. Even you talk of animal science, fishery, every sector, your more than 60-70% cost come from food. Feed, upon animal go feed go and that also has to come from agriculture, crop production, crop or related commodities. So ultimately अपन को निज खाया ପାଇଁ रखिया पड़िबो, एक्सपोर्ट ପାଇଁ करे रखिया पड़िबो, अपन nutritionally rich food करिया पड़िबो. It can be a primary crop like rice, wheat, maize, or it may be diversification to other commodity. It may be fish, it may be fruits, it may be vegetable. आज इंडिया लक्षे कोटी टंकार अधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नष्ट करे एंड यूथ माने आज बेकार अच्छा मुझे ओटी थी 2-3टा काम गवर्नमेंट थ्रू होगा ओटी थ्रू केतरा काम मुझे आरंभ करी. फॉर एग्जांपल आप कहते आवर यूथ आर एग्रीकल्चर दे आर गोइंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट एंड आम डिबेट कर 10,000 टंका 15,000 टंका मुझे छोट 2-3टा कथा कहूँ. इट इज वेरी इजी टू एम्प्लॉय यूथ. आज यूथ कौन चाहूँ दे डोंट वांट टू गो टू द फार्मिंग फील्ड इज ए टिपिकल वे बापा दिन जाऊला हल धर हल कर से चाहूनी. ऑल्सो वाई यू वांट टू सी एग्रीकल्चर द सेम वे व्हाट इट वाज देयर. यू कैन ब्रिंग सम एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन ब्रिंग स्किलिंग, यू कैन ब्रिंग मैनेजमेंट, यू कैन मेक मार्केट इंटेलिजेंसिया एंड दे कैन हेल्प. आई एम गिविंग 2-3 एग्जांपल. ओडिशा मेकानाइजेशन बहुत कम. अपन के मना कला ओडिशा कृषि समृद्धिर प्रोग्राम रे आजिर बा आगुरी भी प्रोग्राम अच्छी दैट यू कैन मेक ए कस्टम हायरिंग सेंटर. गवर्नमेंट की मोर देन 75% सब्सिडी. यू मेक ए यंग पीपल आप क्लस्टर 10-12टा गाँव में गोटे क्लस्टर करूँ यंग को यूथ को स्किलिंग करूँ ट्रेनिंग करूँ आ से गाँव लोक मानी जदि आप वेजिटेबल बा फ्रूट्स मु आप एक्चुअल कैलकुलेशन कहूँ आपन जो सोलार बेस्ड गोटे स्टोरेज करेंगे 20 टन बा 10 टन आपन गोटे वेजिटेबल गोटे दिन रखिए गोटे केजी आप टंकाटे खर्च हम. आपन जो चाषी को 7 दिन लिवरेज देवे रखापी तार कष्ट नहीं. कष्ट चाषी कौन करे संध्यारे बिके गला बिक्री है फिंगा फिंगी करदेव कि डेस्परेट सेल करदेव चली आसो. सो इफ यू कैन मेक इट लाइक दैट कस्टमाइज बाय यूथ. सेकेंड कथा कहूँ यू स्किल द यूथ. टुडे यूथ वांट्स तापर मोबाइल थी पाखे टेक्नोलोजी थी एडवाइज थी धर से फार्मर जो मार्केट रो इंटेलिजेंस को से फीडबैक दब. आज मार्केट रे बर्तमान प्रोडक्ट ग्लट हो गलानी आ बिक्री हेबनी. से चाषी कह डोंट टेक प्रोडक्ट टू फार्मर व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेस. सो स्टोर रखिए अपन. सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. टुडे इज ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. आमे भावु लोक को ठिया करदेबू कि काम देवनी हेनी एंड विदाउट ए स्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिग स्किलिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन. इवन आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑल्सो. सो
I can appreciate. So कहबार अर्थ है the skilling has to come. Second, गत 50 वर्ष तले 1960 मसीहा let me take you. Our agriculture was agriculture related production. आम के मैक्सिमम प्रोडक्शन करूँ तार कारण कौन आम खाइबा लोक थिले पार्टी बड़ थिला खाइबा अमाउंट कम थिला आप जहाँ प्रोड्यूस करेंगे से जीव पेट भीतर को टुडे एग्रीकल्चर इज डिफरेंट वी हैव फूड सरप्लस आर पीपल हैव मनी टू पे वी हैव चॉइसेस आज सबुठ गरीब लोक को जी आप पचारे तू कौन खाइबू मुझे कहली मु पिज्जा खाइबी मुझा खाइबिनी मो प्लेट डाइवर्सीफाई हो गलानी मो पाखे पैसा अच्छी सबुठ गरीब लोक पाखे पैसा अच्छी चॉइस करने से जुग गला 50 वर्ष तले 40 वर्ष तले माई फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो आम से डाली खाइबू से भात खाइबू से रुटी खाइबू वी डू नॉट हैव लिबर्टी ऑफ डूइंग इट टुडे वी हैव लिबर्टी सो योर प्लानिंग प्रोडक्शन टू फोर्क सबू प्लानिंग आप डाइवर्सीफाई करेंगे चेंज करेंगे ताको आणिबे फॉर एग्जांपल आपण जनक इकोनॉमी केमती हम गोटे यूथर ताको आपण स्किलिंग कले ट्रेनिंग देले एंटरप्रेन्योर कले आज ओडिशा रे सेल्फ हेल्प कहते सकाळे इट इज ह्यूज नंबर एफपीओ मु एज ए वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी आई टू क्रिएटेड और सपोर्टेड 105 एफपीओस मुको एंड वी ट्रेन लाख्स ऑफ फार्मर्स लाख ऑफ स्टेक होल्डर्स फार्म ट्रैक्टर मशीनरी रे मोर मन अच्छे मो 200 अधिक को ट्रेनिंग देती ओडिशा रे कहवा अर्थ है आपन जदि लोक को कैपेबल करेंगे हाउ देन द फेलो विल बी कैपेबल टू अर्न आप ब्लेम कर केते दूर करेंगे मुझे बहुत गुड़े एस्पेक्ट कहूनी ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन दीज आर ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे 2-3 पॉइंट टच करके कथा रखुची क्वेश्चन आंसर जब मत पचारे आई विल एलाबोरेट लॉट ऑफ थिंग्स किंतु आज एग्रीकल्चरटा केवल भेराइटी को लिमिटेड नुह not related to individual like fish or crop or horticulture like that you have to see everything as one agriculture one क्या चाषी देखिनी मु क्रॉप लोक ना मु माछर चाषी ना मु दुईटा महिषी रखी सब गुटे तो आप प्लानिंगटा भी सेमती हवा दरकार आम एक्सटेंशन भी एमती दरकार आमको प्रोडक्शन टू मार्केट टू वैल्यू चेन टू प्रोसेसिंग टू कंजप्शन सबू हमको लिंक करिया पड़िबो आपन जानी ना मार्केट इंटेलिजेंस मोर प्रोडक्शन केते हो मोर मार्केट अच्छी ना नहीं मोर इनपुट कॉस्ट कम करिया पड़िबो चाषी आज दुईटा चीज देखे मु केते कम पैसा रे रिलायबल इनपुट पाइबी मु प्रोडक्ट कला परे मार्केट रे केमि बिक्री हबो दिस टू आर क्रिटिकल थिंग्स एंड हाउ वी आंसर दैट ए सहित मु आ गोटे पॉइंट आपन कहिकिर मु कथा रखिबी आ तापरे जदि आपन प्रश्न पचारिबे आई विल वेरी हैप्पी टू शेयर आप फंडामेंटल क्वेश्चन आप मेसेज दूसरी एग्रीकल्चर कैन गिव एवरीथिंग एक्सेप्ट द मिनरल्स बेस्ड प्रोडक्ट दैट इंक्लूड्स फ्यूएल दैट इंक्लूड्स क्लॉथ्स एवरीथिंग आप भावतु वी हैव नॉट ग्रूम्ड एग्रीकल्चर दैट वे 60 years बैक बट टुडे वी हैव ऑकेजन फॉर एग्जाम्पल बायोफ्यूएल another 20 years more than 50% fuel will come from biological sources. Sugarcane, already it is a known biofuel. Maize, it is known biofuel. Second generation biofuel rice. Odisha re Borgad re already BPCL made a factory and that we groomed that to some extent. And I am sure every district of India will have a biofuel center. Biogas will be a part of biofuel tomorrow or energy system. So my point is, think beyond what we are thinking for state of Odisha for agriculture. Lot of scope. And everybody has a role to play. A policy maker, a young youth, a skilled, unskilled, super skilled. Make people capable. It is not only knowledge. It is your knowledge, it is skill, it is your technology, it is all together. And the youth in the center, life in the center, production to consumption, everything together, the life of the Odia people will make a difference. Once you make change by 2036, I am sure. What Honorable Prime Minister says, 2047 we should be developed country, I am sure. Agriculture point of view, by 2036 you can achieve that. And I am talking very realistically. If we plan very properly and we execute it meticulously.
with this, and thank you very much for giving occasion, and thank you for keeping a patience for listening me a little more probably. I'll be happy to add anything more if there is. So thank you very much. Thank you, Dr. Agarwal. That was very comprehensive and insightful overview of Odisha, possibilities and opportunities also in Odisha's agriculture. I mean, definitely last end रे किछि questions नबा समस्तंगटू. सर गोटे बढ़िया कथा कहले सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उपरे कहले केमिति आमे भिन्न 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 चाष करि परिबा ता उपरे कहले से सर कहले जे आमे टोटल केमिति फूड सिस्टम अप्रोच नहीं परिबा केवल एग्रीकल्चर रे कारण चासी पाई धान हो बिरी हो बा माछ चाष हो से गोटे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम रे काम करूची तार परिवार तार जमी तार जहाँ भी संपत्ति अच्छी ताकू से व्यवहार करची निजर ओवरऑल लाइवलीहुड पाई कि सब फैक्टर को आमे आम सहित आज अच्छा आमे जहाँ को बहुत फंडली कहू न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वसंत कर सर यस मुझे जानची सर अपन बहुत पॉपुलर एंड इंस्पिरेशनल ऑल्सो आपणकर जो काम न्यूट्रिशन सेक्टर रे आमे समस्त को बहुत जना सार जने ब्रीडर सर बहुत सारा भेराइटी डॉक्टर अग्रवाल जन ब्रीडर बहुत सारा भेराइटी यू नो सी बाहर कर रिलीज करैछंती एंड आम जानिछे जे ग्रीन रिवोल्यूशन जो आम कहू से मॉडर्न भेराइटीज रो बहुत कंट्रीब्यूशन रही एंड से ब्रीडर कम्युनिटी को आम सब बेले विल बी थैंकफुल एट द सेम टाइम right now in the policy making aspect a lot being said that can we make all our varieties for main crops like bulk consumption crops like rice आमे ओडिसा रे भात न खाइले हबनी आमे सबुदिन भात खाइबा भिन्न भिन्न चावल पसंद ग्रो करिबा तो आमर जो रिसर्च आमे कि से जो खाद्य आहार जो आमे नौचे ताकू केमिति पोषक युक्त बनै परिबा कैन वी मेक इट टिके अधिक से कैन वी मेक बायोफर्टिफाइड राइस प्रोटीन रिच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच एंड लॉट ऑफ आम जहाँ भी आमर खाद्य जो कल्चर पार्ट आम ताकू केमिति अधिक न्यूट्रिशन ओरिएंटेड करि परिबा आउ से पर्सपेक्टिव रे आमर रिसर्च आउ डेवलपमेंट सेक्टर कौन करि परिबो मु टिके अनुरोध करिबी आमर डॉक्टर करन को जे से विषय रे हमको इनसाइट्स देबे धन्यवाद स्वाति मंच बसी सचिव स्वाई बाबू दास बाबू एंड अग्रवाल सर मु प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करी प्रवासी ओडिया विकास समिति को एवं सूर्यनारायण मिश्र सर को जे मते डाकी भल कथाटी पचारे स्वाति जितेबाला सबुज विप्लव है ग्रीन रिवोल्यूशन है 1964 65 66 मसीह से भारत में टोटाल से जो सीरियल प्रोडक्शन माने गहम चाउल एवं स्मॉल सीरियल जो मांडिया अंतर्भुक्त से मांडियार भाग थिला 100 भाग रु 37 रु 38 भाग किंतु सबुज विप्लव पर मांडियार भाग वर्तमान 17 रु 18 भाग माने प्रोडक्शन रो भाग आइडियली माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मतरे आमर खाद्यर 1/3 मांडिया हवा उचित मांडिया हूँ एमती जिनस जोटा कि माक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट माने से विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी पुष्टिसार अच्छी एवं विटामिन्स मिनेराल अच्छी तेणु मांडियार पतन जमती घटी सेमती बहुत जिनसर पतन घटी जोटा स्वातिक मतरे आमर फूड सिस्टम रे बहुत बिगड़ी जाइए आमर फूड सिस्टम कह केतक कहती ब्रोकेन केतक कहती डाइल्यूटेड केतक कहती नष्ट हो जाइए तेबे आमे देखिबा ए नष्ट जो होगला तार परिणाम कौन आमे G20 कथा कहूँ अन्य एशिया महादेशर विभिन्न देशर कथा कहूँ ओडिशार कथा कौन स्थिति आमे ओडिशा रे देखिबा जदि स्टंटिंग जोटा ओजन पिलांकर ओजन कम एवं स्टंटिंग हेले से पिलार बुद्धि कमी जाए आमे जेतले पिलाटी क्लास रे अंक रे फेल हुए इंग्राजी रे फेल हुए घरे आसी थापड़ पकाऊ किंबा बेले बेले आमे गोटे पिला को कहू अरे ट्यूबलाइट माने से डेरी रे बुझे किंबा आमे बेले बेले आउ समय कहू ईस्टर्न इंडिया रे लोक गुड़ा भारी अलसुआ यार प्रथम और मुख्य कारण होची माल न्यूट्रिशन बा पुष्टिहीनता माने वैज्ञानिक विज्ञान अनुसार सिद्ध
एवं गोटे देश बा जाति को आपण बा गोटे परिवार को जदि उन्नति करिया चाहिए तेबे न्यूट्रिशन शुड बी द टॉप इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी। जो देश न्यूट्रिशन ने इन्वेस्टमेंट करिसंती से माने आजिका दिन में प्रगतिशील देश। देखंतु आमर ओडिशा रे 31 भाग पिला होचंती स्टंटेड माने उच्चा कम, आदिवासी पिला 42%, आम ओडिशा रे ऑलमोस्ट 25% होचंती आदिवासी पॉपुलेशन। किंतु चली जातु आपण जापान को सेठी 5.5% पिला होचंती स्टंटेड। आनेमिया आनेमिया इज ऑल परभेसिव माने 70 80 90 हाराहारी आमर ओडिशा रे होची 65 भाग होचंती महिलांकर आनेमिया, 72 भाग आदिवासी महिला आनेमिया। आपण पळै जातु श्रीलंका आनेमिया आपण पळै जातु भल भल देश को माने यूके रे 11%, अमेरिका रे 12%। तेणु कहीं ए देश ए जाति आगेबेनी। आमे बहुत डेरी रे बुझिलु किंतु भल कथा होची भारत सरकार माने प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में पोषण अभियान आरंभ कले 2018 रे। एटा टार्गेट ड्रिवेन एवं ओडिशा सरकार भी कमिटमेंट एथिरे आसिलानी जोटा कि से न्यूट्रिशन बजेट होची ओडिशा गोटे प्रथम राज्य न्यूट्रिशन बजेट होची, मांडिया मिशन होची, आउरी बहुत कथा होची ओडिशा रे। किंतु वर्तमान जो परिस्थिति अच्छी से परिस्थिति रे 2036 हो बा 2086 हो मोर जो हिसाब अच्छे गोटे स्लाइड जो देखे होता से माने जदि आमे आमर इनिशिएटिव बा उद्यम 3 4 5 गुण न करिबा तेबे कमिबो नाही बा 2036 सुधा आमे ओडिशा को गोटे डेवलप्ड स्टेट करि परिबानी। सेतिपई बोधे आमको राति दिन काम करिया पड़िबो बहुत, कारण नहेले 65% 70% आनेमिया महिला एवं शिशु को नहीं आपण गोटे सिक ओडिशा बाटे गोटे रोगिला ओडिशा देखिए नुआ ओडिशा देखिपारे। किंतु मु देश में कम कर विभिन्न जगह कम कर गोटे रॉकेट साइंस नुहे, एटा को करी हबो। आपण गोटे नॉर्थ ओडिशा आनिबे, जदि नॉर्थ ओडिशा आनिबे तेबे IQ निश्चित बढ़ी जीवो। आपण स्टंटिंग रे IQ माने GDP 5 रु 11% अफेक्ट करे। तेणु नहेले ओडिशार GDP बा GSDP तो से राज्य रे कहती 2 3 4 5 6। आपण ओडिशा हो भारत रे बेसी ओलंपिक प्लेयर नहांती कहीं, बेसी नोबेल लॉरेट नहांती कहीं, तार मुख्य कारण होची बा GDP आमर डबल डिजिट होनी कहीं, तार मुख्य कारण होची माल न्यूट्रिशन। 42 भाग आडोलोसेंट ओडिशार जिंक डेफिशिएंट, आ जिंक डेफिशिएंसी हेले आपनकर इम्यूनिटी रहिबनी। 20 भाग माने पिला विटामिन ए डेफिशिएंट। आउ गोटे सबुठारु बड़ कथा होची डबल बर्डन। आरो गोटे स्लाइड देखा हो कि आउ गोटे नेक्स्टा देखा हो। आउ गोटे कथा होची डबल बर्डन। एटा तो देखैले सिंग एटा देखतु माल न्यूट्रिशन 10 अवतार माने ग्रासीची। केवल अंडर न्यूट्रिशन नुहे, मु स्टंटिंग वेस्टिंग आनेमिया कथा नुहे, सेठी देखंतु मोटापा बढ़ी गलानी। 20% पिला विथ प्री डायबिटिक आम लड़ू दौचु, मिठाई दौचु, माने विभिन्न प्रकार रसगोला दौचु, मांडियार भी लड़ी दौचु, कौन लाभ हम? से प्री डायबिटिक पिला डायबिटिक हम एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम माने ऑलमोस्ट माने हाराहारी 25% पॉपुलेशन मोटापा हो गलानी 22-23। खोर्धा गोटे जिला जोटी भुवनेश्वर अच्छी 39% महिला मोटा। तेणु जोटा स्वाति भल कथा कहले आम जो जो स्थिति आप देखुंत से कैंसर हम, डायबिटिक हम, विभिन्न प्रकार बुद्धि भी कमिब, प्रोडक्टिविटी कमिब। एवं आमे गोटे जो नुआ ओडिशार स्वप्न देखुचु जदि आमे इन्वेस्टमेंट एथिरे न करूँ बा राति दिन काम न करूँ केबे आमे डबल डिजिट ग्रोथ पाइबानी, केबे आमे नुआ ओडिशा देखि पारिबानी। जो स्किल उपर बहुत आलोचना सकाल ठू एपर्यंत होची, कोड स्किल आसीबो, कॉग्निटिव पोटेंशियल डेफिशिएंसी आप स्किल कौट आने, IQ कौट आसो। तेणु यहाँ हूँ कोर आउ क्रिटिकाल। तेणु मोर अनुरोध जेहेतु सचिव अच्छा मैं स्वातिंकर प्रश्न थिला जे आमे कौन करिपरिबा, आमे मिनिमम 6टा फूड ग्रुप कम से कम जदि लोक को दे पारिबा बा छोट छोट पिला को 4टा फूड ग्रुप रो खाद्य दे पारिबा, सेथिरे निश्चित भाव में आमे गोटे नुआ ओडिशा दे सृष्टि करि पारिबा। ए सेही फूड ग्रुप रो
दुईटा होचंदी सारंकर डिपार्टमेंट सेटा होची गोटे गोटे होची फिश आ गोटे होची मिल्क से होची टोटल 10टी फूड कैटेगरी गोटे होची सीरियल आउ मिलेट द्वितीयता होची डाली तृतीयटा होची मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट चतुर्थ होची रूट टीवर पंचमटा होची ग्रीन लीफ वेजिटेबल अदर वेजिटेबल फ्रूट सुगर फैट एवं फिश एग आपण माने दुख करिवे भारत रे 90% पिला जो माने कर मिनिमम पिला माने जो माने 1000 डेज अप टू 2 इयर्स जोटा कि सबुठार बड़ा महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन पाई माँ पेटर 2 वर्ष पर्यंत को आम 1000 डेज को 90% बा 89% पिला 4टा फूड ग्रुप पाते ओडिशा रे 80% पिला 4टा फूड ग्रुप पाते तेणु आमको सेठी कैलोरी हंगर अच्छे प्रोटीन हंगर अच्छे हिडन हंगर बा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अच्छी ओबेसिटी है कौन आप करेंगे किंतु एटा रॉकेट साइंस नुहे प्रत्येक जिला जोटा कि आप आजिकल भारत सरकार कहते सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर प्रत्येक जिले में कौन आम 6टा फूड ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट करें जम्मा रॉकेट साइंस नुहे मनरेगा को लिंक कर मो उपकारी बगीचा ओडिशा कर न्यूट्रिशन सेंसिटिव कर हाँ तेणु बहुत गुड़े प्रोग्राम आमर चलती जोटा डायरेक्ट न्यूट्रिशन एवं इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन माध्यम आम गोटे सुनार ओडिशा बा नॉरिस्ट ओडिशा बा आमर स्वप्न साकार करने नुआ ओडिशा देखा न्यूट्रिशन पर इन्वेस्ट करी थैंक यू सो मच Thank you very much, Dr. Vasankar. In fact, डेफिनेटली आम ये काम कर जो सर कहले जो आम सुनार ओडिशा जोटा कि न्यूट्रिशन फोकस रम समस्त योगदान आम एग्रीकल्चर विषय डोमेन विषय कथा कहूचे आज आमर सहित एक्वाकल्चर एंड फिशरी सेक्टर सीनियर पॉलिसी मेकर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अच्छा आम सहित अच्छा श्री आदित्य दास जी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राम सी फूड एक्सपोर्ट डिवीजन एंड ऑल्सो करेंटली वाइस चेयरमैन ऑफ एम्पेडा इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट still on the board. Thank you sir for correcting me. And private sector आमर एंटरप्राइज डेवलपमेंट रो बहुत बड़ा रोल रहिबो जदि आमे आमर वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर aquatic enterprises and also the marine for products and the industry for it. We know that Odisha is known for its coastline, one of the longest and highly potential. In this context, there are many countries who are marching ahead, being sustainable for fish farming and other different models, be it Ecuador or other Vietnam and other many Asian countries which is having great coastlines. So a perspective रे आम ओडिशा पाई भी बहुत पोटेंशियल रही फिशरी आउ इवन श्रिम्प कल्टिवेशन तार प्रोडक्शन आउ एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एनहांसमेंट ऑफ द फार्मर्स हु आर इन्वॉल्वड इन एक्वाकल्चर ए पर्सपेक्टिव रे आमु मिस्टर दास को कहबी जे तांकर पर्सपेक्टिव रखिबे कौन पोटेंशियल आम ओडिशा अच्छी आम केमिति आमर रिफोकस करवा दैट ए एरियाटा आहुरी फ्लोरिशिंग हम आउ गोटे मेजर इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी बाहर आमर चाषी मानक पाई कि Thank you, madam. Respected dignitaries on the dais. One request, madam, please let me know jatare time besi jiba. So, जो vision exercise आमे जो करूँ 2036 or 2086. So I feel very honored that I've been invited for such an important thing. I'd like to keep my speech short, and let's start with what is my vision for 2036. What is it? So one vision should be, maybe let's start, why can't we be like neighboring Andhra? एबे जस्ट आमे कहले कि आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन ओडिशा रु 10 गुणा 10 times. At least let's say by 2036 it should be double. Let's catch up. But why stop there? सोच भी बड़ी होनी चाहिए. Why can't we be like Thailand? Thailand has this amazing tagline, like Orissa tourism has India's best kept secret. Thailand says it is
the kitchen of the world. And Orissa, like, every panel discussion, every meetings you have, we, always start with the same things, climatic zones, this potential. And yes, we have the potential to become the kitchen of the world. Why can't we like Vietnam? The shrimp industry is a very important industry there. Gradually, with the efforts of my industry colleagues, the Orissa government and the central government, the sir is there, they have, treating fisheries as a very important subject. Honorable Prime Minister created a separate ministry of fisheries. There was the whole Pradhan Mantri Matsya Sevi Yojana. So these are all right things. And finally, there's a country called Ecuador. I think most people wouldn't have even heard of it. One of my industry colleagues, he went there last year, and I was joking. I think I said, I think you are probably the first and only Odia who has gone to Ecuador. Because I have never heard of Ecuador. But it's a small country. I saw map and the coastline. I saw Odisha coastline. They have managed to become the world's largest prawn producer, beating India, beating Thailand, beating Vietnam, beating Indonesia. So that is the potential we are sitting on, just Odisha itself. I'm not even talking about Odisha, Andhra and the entire India. I'm saying Odisha mein itna potential hai. So we can be the seafood capital of the world. This should be like a vision exercise. And since it's not just 2036, it's 2086, so we should be the seafood capital and the kitchen for the universe. Because I think by 2086, maybe we will have colonies in Mars or Moon. Right. So that is what I envision the sector to be. How can we do it? For this, we need active participation both from the public sector and the private sector. And sir, with his previous stint at the solar energy department, he has really come up with innovative schemes and policies where the strength of the private sector were combined, with the strengths of the public sector. It was a very symbiotic thing. And we are looking forward to the implementations of some of the things that are in pipeline. So in this public-private partnership mode, a lot of things can be achieved. There's an entire fish processing industry that happens in China. Salmon, cod, pollock, all of this will be caught in America. Then they will be sent to China. Then the Chinese workers, they will make it into fillets and more value-added items, and again it will be exported back to US. Now with the whole reshoring and let us stop business with China, India has that opportunity. But a private company cannot take such a huge gamble because these things are not made overnight. And this is exactly where you require that skill, how to skill a fish, fillet a fish. Those 1 or 2, 3 years of learning, those yield losses will be extremely significant. So that is where the government funding is required. And that is exactly how China managed to do that. That is exactly how Poland managed to do that. And that is the opportunity that Orissa can seize. Infrastructure, the same sadak, bijli, pani, we still need that. It has improved, yes. In my last 15 years since I've been working in Orissa, it has improved, but we wanted to improve more. Again, if we want to become like Andhra Pradesh, I want the road connectivity like Andhra Pradesh. I want my containers to go from Paradip port or Dhamra port or Gopalpur port, not Vizag port. Because till now there is no reefer container facilities. Yes, most of us, we celebrate international flights, but what the industry needs, not just my industry, each and every industry, we need wholehearted support for container terminals to be set up in Orissa. And I know they are not viable, and that is where the state government should come in and start funding. You build it, then we will build the ecosystem around it. Electricity is there. Everyone keeps telling me,
oh, you are so lucky, you're from Orissa, you know, electricity tariff of only 1 rupee 50 paisa. But I said, yes, but you know, half the time electricity is not there, so I use diesel. So, and when we are talking about sustainability, this is very important. Because our food production system, when we rely on diesel generators, you know, India is losing on foreign exchange. We are polluting more. And, you know, we are raising the cost of our production and we can't compete in the world market. So electrification is definitely the need of the hour. Yes, it is happening. And I keep on repeating the same things, but this is how, you know, policy making works. You keep on repeating, and things, you know, they gradually work. Another one is regulations. Sometimes we need regulations because not everyone will be acting in an ethical manner. People might be doing illegal farming, they might be polluting. And, you know, when that comes out into the press, you know, the foreign consumer, it's not like, oh, that's not because it's not Suryodyog product, it's not Falcon product. They'll just say that this is from India and all products from India is bad. So there is only a limit to how much we can regulate ourselves. We need the government to regulate everyone so that India doesn't get a bad name. And finally, R&D. You know, India is very forward thinking that ways. You know, one of the sponsors of this event is IRRI. And, you know, you have Central Institute of Freshwater Aquaculture, Central Institute of Brackish Water Aquaculture. So more investment in R&D so that we can completely harness the potential of the blue economy. You know, breeding programs like Sir just mentioned. I think we need that for seafood and in other things. So I said, what is my vision? I said, how we can go about it. Now, why should we do it? Why bother with this? Because this will transform the agri sector. I have seen in my lifetime what has happened to the farmers who have switched over from paddy farming to prawn farming, despite their ups and downs, the wealth that they have gained. And if we further diversify species, we further make their life easier, it'll be only better and better. I mean, you just have to look at the case study of Thailand, how the rural economy of Thailand just completely transformed, just thanks to aquaculture. You know, that was one of the biggest vote base of Thaksin Shinawatra, the ex-prime minister of Thailand. All his voters supported him for that. Another reason why we should focus is, it is what we call a proverbial low-hanging fruit. I mean, it is there, we already have it. We have the land, we have the labor, we already have the expertise and market. Just some more meetings, just some more connections, collaboration, you know, and commitment. And we can reach the goals that I've outlined. And finally, because it's labor intensive. We are all talking about ChatGPT replacing our jobs, AI, automation and all that. But trust me, they haven't built a robot yet who can fillet something as better. Some automation is happening, but for a pretty long time, this is going to be labor intensive. And my own experience is, this industry, this is like a poverty destroyer. I have seen women who have started their careers in our factories. They have grown up. Now their children have grown up to be doctors and engineers and others. They have climbed out of poverty. So thank you for giving me this platform and looking forward to a good question and answer session. Thank you. Wonderful. Thank you, Mr. Das. That was really, you know, giving a lot of potential opportunities, and also, like, you know, many farmer entrepreneurs, budding entrepreneurs in Odisha can really draw clues from it, and, like, you know, there is a significant room, you know, to put our Odisha in that map, you know, in the global map in terms of our fisheries, aquaculture, and, you know, the business around those things. And
while sitting, while listening to you, I already started thinking about, rice fish farming, different innovations, how do we integrate and all those things. So thank you very much. So we are running out of time and we started very late really. So there are a lot of questions, but unfortunately probably, we'll not be able to take up all those things. But before we go to our audience round, this one last question, I would like to just go through very, fast across all the panelists, as it is a Vision Odisha conclave. So, like if I look at a, more futuristic aspect, like what is that one key area to focus for our, sustainable food, nutrition and agriculture sector? And that could be, one critical area of recommendation and suggestion, and it could be serving to policy level, it could be an actionable point, it could be an innovation in partnership, or even the research which we need to strengthen in for our Odisha. So this is just a quick round, and I would like to know one prominent recommendation to focus on for Odisha's growth. For me, especially, it is extremely difficult to set down a vision and policy because you will all come back and say कि आपको रोक कौन रहा है, आपन को रखी जी. So responsibility comes directly on me. But yes, there are 2-3 things I want to tell. One is, if you are talking about nutrition, soil रे जैसे कि nutrition सब वही करी नई को पड़ेला. जो nutrient cycle टा थिला, either जो क्रॉप रो जो ग्रेन्स आस्तला चैप आस्तला ताको चैप को गाई खाउतले ग्रेन्स को आमे खाउतलो and it was going back to the same soil because we are not moving out of the village. That nutrient cycle is broken. So the chap probably गाई खाउतले probably the manure is coming back to the soil, but chemical fertilizers it becomes much easier. And as far as grains are concerned, grains are all going into Mahanadi, maybe in Odisha, eti Jamuna re jauchi. How do we recover that? So that is one. That is why we give a lot of emphasis on aquaculture, because fish all goes to the water, either the river water or sea water. So captured by the aquaculture systems. So that is something we can think of. Another major thing in nutrition is not the food alone. It is basically diarrhea. This is something we always ignore. Diarrhea is probably the single most cause for malnutrition in this country. So improving water quality, and there have been a lot of evidence-based findings. So this is something we have to focus. This is not part of this group, but I think this is something that has to be at the forefront of our discussions, because nutrition is looked after by one ministry, and health, the diarrhea and diseases are looked after by another ministry. So there is a disconnect. This is something that has to be done. As far as aquatic productions or systems are concerned, I think so Das has already given a lot of insights into it. I would just try to add on to that. One is the new areas. I have already told that wherever we are diversification, instead of trying to build it through the public systems, we will do a PPP supported by the public systems, or giving a guaranteed kind of a thing through the private, developed by private. 1, 2, for the marine fishermen, because marine catch is limited. If you are looking at the livelihood of the marine fishermen, maybe we have to go through a lot of artificial reefs and recreating some of the coastal fisheries, which we have denuded over the years. This will be a sustainable coastal fisheries. This has been very successfully done by Japan, and this is something worth emulating as far as we are concerned. And just coming to agriculture, I always venture, because not my subject, somebody else has to repeat that. Possibly, there are 2 options we can do. One, we have to go whole hog for the micro irrigation. There is no other, there is no escape from that. Better use of water, better productivity, and more importantly, once you get into micro irrigation, the farmer has the control over his production systems, and he doesn't have to depend on the rain. Currently, once the rain comes, the farmer just has about 5 to 6 days to decide what crops he is going to do. And whatever he produces, there will be a glut in the market, he loses. So micro irrigation is something we must do.
and it must be done through the cooperatives, cooperativization, collectivization. What Israel has done, this is something that has to be done. Looks difficult, has to be done. That is one. And the second is improving. How do we give more income to the rural people? Because people will depend upon farming for some more time. So we have to increase the penetration of power. Initially, agriculture was done simply by human power. Then the bullock animal power had come. Now, what kind of power we are trying to bring in? Tractors have come, but most of our agriculture implements are suited for the large farms. Can you do it for the small farms? All our agricultural policy books write that our fields are fragmented, that's why our productivity is small. I just want to ask one question. Japan and China, when I was a student, there were only 20 decimals. Decimals mean 0.2 of a 0.2, 20% of an acre. The average land size in Japan and China, and they were 3 times our productivity. Why? Because they have developed small machines suited to their landscape, and this is something we have to do whole of. Increase the usage of power so that the individual farmer becomes productive and his income level increases, and that will lead to a sustainable agriculture. Thank you. Thank you so much, sir. There is a range of, potential areas to focus on, which sir emphasized, and I really thank, and this shows what caliber of policymaker he is, and these are the areas where the practitioners have to work, the researchers have to work, and certainly it's giving us a lot of vision for future. Thank you so much, sir, for your critical inputs. Now I just would like to request Dr. Agarwal to also give his inputs moving forward. Thank you very much for this. Let me talk few points in sequence. First point, in agriculture today in India, you have to go for integrated farming system. That means you have to see all the commodity together so that your production, productivity, sustainability, environment is sustainable. And when you go for integrated farming system, individual commodity per farmer will be less. So community involvement, inclusive, and market inclusive, that has to be there first. Second point will be how to reduce the cost of production, whether it is a crop or animal science or fishery science or anything. And for example, in animal fisheries, maybe 70% is feed cost. In crops, fertilizer, land preparations, mechanizations, all have a lot of cost. Fertilizer, let me give you an example. Government gives more than 2 lakh crore rupees of subsidy. It is a big issue. And everybody talks that we have organic form of compost, organic, vermicompost, whatever. How to bring those things in subsidy system or government policy system? A lot of debates are there, but we still have to find a way. Third thing, whatever you produce nutritionally rich and acceptable quality. Quality never means only nutrition. It can be keeping quality, it can be transportation quality, it can be like quality that you like it. An American consumer, a Japanese consumer, an Indian consumer may like differently. A North Indian consumer and Odisha consumer may like differently. So you have to understand for whom you are producing. Whether you are producing for the people of Odisha, or you are planning to export to outside Odisha, or you are sending to other state. Third thing, your product from farm to market. There are a lot of steps and lot of technological intervention chahiye, policy intervention chahiye. I'm giving you an example. You can use a sensor to know whether my apple is correct or not correct when I'm harvesting, right stage of harvesting. When I'm transporting, whether my apple is correct or not correct, you can monitor. In the supermarket, you can keep a sensor to know whether your apple is correct or not correct to be consumed. That is true for water irrigation. A sensor in IoT base can tell you that my water is enough for a field or not. From mobile you can control, and those are available today. I am not talking hypothetical things. These are available. Then, of course, market and other things are there, and everywhere whatever I talk, few points, that it goes for up to table, and everywhere, all aspect, including technology,
science, policy, logistics, everything should be taken care. So a lot of players are there, and everyone, like industry, there is a viewpoint. So everybody has a role to play. So nobody should say, I am the only man, I'll make it successful. Everybody should work together. That is the only last message. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. Kar, kindly please. थैंक यू 2036 सुधा मोर स्वप्न हम गोटे नॉरिस्ट बा मिशन माल न्यूट्रिशन फ्री ओडिशा ता माने एबे जो 65% आपण एनीमिया देखिले बा आदिवासी क्षेत्र में 70% देखिले सेटा गोटे सिंगल डिजिट रे हो किबा 31% स्टंटिंग देखिले सो एवरी माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर शुड बी एट सिंगल डिजिट नंबर 1 एवं 2036 सुधा अति कम 50% बायोफर्टिफाइड मिलेट प्रोडक्शन हो एवं ओडिशार समस्त लोक तांको खाद्यर 1/3 सीरियल मिलेट हो बायोफर्टिफाइड एवं प्रत्येक जिला 6टा फूड ग्रुप रे सेल्फ सफिशिएंट हो एवं न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम ओडिशा देखू 2036 सुधा जो थे न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम कहले से हेल्थ आस्पेक्ट को विचार को निया जाऊ वाटर सैनिटेशन हाइजीन आस्पेक्ट को विचार निया जाऊ एवं गोटे न्यूट्रिशन रिवोल्यूशन आमे आणु विथ वोमेन लीडिंग एट द फ्रंट थैंक यू सो मच Thank you so much for your vision 2036, sir. And the last bit, sir, Mr. Das. Okay, I'll keep mine extremely short. So, moro Odia bhai bhani mane apana jo ethi achanti. So, let us try once a week at least. Ame kenti support kariya. Once a week, gote seafood item khaiba jota Odisha ro astheba macha ki एटा जदि ओडिसा रो भी जदि हेबनी आपण आंध्र रो आनले ठीक अछि सेटा इधर सेटा करंतु किनल गोटे ओडिया डिश करिकि सोशल मीडिया रे प्लीज आपण प्रमोट करंतु मे बी द हैशटैग कैन बी हैशटैग मो चिंगुडी एवरी संडे Great. Nice idea. एंड फ्रोजन प्रिफर्ड नॉट मोर देन कैन फ्रेश रे आजकल फॉर्मालिटी है सब होची थैंक यू Thank you, Mr. Das. I'm sure, like, you know, many of you will go and support this cause. And now, quick questions. 2 questions we can take up. Anyone from audience would like to? Yes, I saw the hand in the end first. Yeah. Can someone hand over the mic, please? Volunteers, please help. Volunteers. Only 2 questions, please. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon to the panel. My question is to Mr. Jatendra, sir. Like we have discussed, the incorrect practices have been included in this shrimp manufacturing or farming, like extreme extraction of groundwater and that remaining toxic water that has been going to the river and destroying the like river water thing. How can we just like keep it very clean and like how should we stop this incorrect practices from this? Now you are saying toxic. How toxic is it? So, as I know that like the no, it is all reports. My point is, what do they use in shrimp? It is feed. Okay. Feed कौन था? Fish meal था, soya meal था. They are all eatable items. Maybe the concentration is little high. Even the breed we are using, that venom breeds are there. Yeah. And apart from No. These are all don't go by the newspaper reports. These are like Times Now sensational reports. So my point is, there is established this thing wherever this shrimp farm diffluent discharge is helping the mangroves to grow much faster. Okay. Please don't get into this. That is all organic things. Yes, the concentration high. It is just like sewage flowing into the from our toilets into the river. That can be treated, but there are no chemicals, no zinc, no boron, nothing of those, and no arsenic. Please understand this. These are all newspaper reports. Many articles are written. Sir, just a minute. Let me complete. Many articles are written so that they are paid
based on the number of lines that appears. Okay. I can explain it to you offline also. Sure, sure. Thank you. Thank you. As a time constraint, please. Yeah, Dr. Kaur, till recently, Kalahandi was known for malnutrition, and now it has improved a lot. So, how this government has improved? Can you share? And malnutrition was a big issue for infant children and other things. How they have improved? Hello. I think there is an improvement, but it has to be more, what I wanted to say. Even in the state of Odisha, stunting has been reduced in 5 years' time. Wasting also has been reduced. But there is an increase in anemia and obesity, that is sad, but there is an improvement overall on malnutrition status. Not only improvement, there is also a strong political and policy will now. There is a Poshan Abhijan shaped by the determination of Honorable Prime Minister. There are also many structures and institutions including a nutrition budget in Odisha. So I see a lot of optimism in addressing malnutrition. Thank you. Thank you so much. This is the time I request Dr. Swati Naik, please felicitate our guests, our speakers. First, Dr. Pavan Agrawal, sir. Sri Jatindranath Swai, sir. Dr. Basant Kumar Kar, sir. Sri Aditya Das, sir. एते भल सेशन हैला परे भी मते लागिलानी भोक लागिलानी बोधे समस्त को ताली बिल्कुल भी बाजुनी लंच टाइम आसीगलानी ओनली 15 मिनट्स दियंतु आमको and now I just want to give this opportunity to felicitate our moderator Dr. Swati Naik. Volunteers, please help. Volunteers, please help. Stay here with me. Please help our speakers with their folders and trophies, mementos. Sir, koi nahi. Now, we are coming for technical lectures. Maybe samaste sunithibe TED speakers, TEDx. So it's our pleasure, it's our honor. Ki sir, Sri Charudat Panigrahi sir is with you today, is with us today. So give a big round of applause for Charudat Panigrahi sir. And I request him, please come to the dais and say a few words with us and share few suggestions and advice with us. Thank you. Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Samastang namaskar.
in this session, I'm going to talk to you about climate change and what we should do in climate change. What are those few policy suggestions and what we should do in 100 years and in 150 years. So 2036 will take 13 more years, and 2086 we will take 63 years. Now, if we don't think about climate change, nothing will happen. So it is human health and it is environmental health. These are the two things we have to be very, very careful, and particularly for Odisha. So I will not talk more about data, statistics or jargons. I will talk about what is practical, what can be done for Odisha, what is our responsibility now that we have come here for this vision exercise by Pravasi Odia Vikas Samiti. So Pravasi Odia Vikas Samiti has two angles, Pravasinkara Vikas and Odisara Vikas. So it means you have to connect both. Pravasi Odiyankara daitwa kon Odisha pai. So pratham responsibility of all of us, including all the youngsters who are here today. I am very happy to see the youngsters here. Prathame Odisara situation ta ko janantu. Prathame janantu Odisha re keteta jilla achi, keteta gaon achi, keteta panchayat achi. एई जिला गाँ पंचायत रे केते लोक चाष करुचंती, केते लोक चाष करू नाहंती, केते लोक चाष करिया पई इच्छुक नुहंती, केते लोक छाड़ी की पळेइलेनी. जदि आपण रियलिटी रे कथा हेबे ताहाले विजन एक्सरसाइज विल बी फ्रूटफुल. दैट इज फर्स्ट. मु आपण मान को एम्बारेस करिया पई चाहूनी. मते लागुनी आपण मान को भितरे बहुत जण थिबे जो माने कि एग्जैक्टली जानिथिबे हमर केतेटा पंचायत अछि, which is okay. बट जेतबेले आमे विजन एक्सरसाइज करूचे सेतबेले आमको टिके जानिबा को पड़िबो जे आमे क्लाइमेट चेंज कथा होचे. वन अपन टिके सेपटे पछपटे टिके पार्टीटा बंद कले टिके मीनिंगफुल हबो कथाटा. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तारो यथार्थता एवं तारो practicality for Odisha is probably the highest. आपन एटा सुनिथिबे, this is the tagline of G20. ता भितरे the honorable prime minister is talking to all of us about lifestyle for environment. What is this lifestyle for environment? This is our culture. Climate change is or has to be connected to our culture. Consumerism, little greed, more need, or little need, more greed. We have to understand. If we do this, amaro jete jubak achanti, jete jubati achanti, jete more than about half of Odisha's population today is below 35. तांको पाई climate change should not remain a jargon. समस्ते climate change कथा होचंते, आमे भी climate change कथा हवा. जेतबेले छातटा उड़ी जीवो तार दिन सकाळू 21 दिन नथिबो लाइट सेतबेले जानुचंती क्लाइमेट चेंज कोन हैला. जेतबेले ऑलिव रिडली आजी आसिलेनी लखे आसिकी नेस्टिंग कले देवी मुहाण रे अस्त्रंग रे, वी आर वेरी हैप्पी. ऑलिव रिडी जदि न आसीबे हमर कोन हबो, वी शुड अंडरस्टैंड. मैनग्रोव हमर मैनग्रोव रेस्टोरेशन निहाती दरकार. बर्तमान मैनग्रोव रेस्टोरेशन जदि हबो, आमे जो कहूचे लॉन्ग कोस्ट लाइन, what is the meaning of long coastline if the coastline doesn't exist tomorrow? So मु गोटे मोर मौलिक प्रश्न, आपण माने केते जण ओडिसा जीवा पई चाहूचंती चाहू नाहंती. प्रथमे आमे कहलु जे ओडिसा रे किछि नाहंती, पिला मान को पाठ पढा नाही, चाकरी नाही, बाहर को पळेइले, बुझी हला. एबे आपण टिके पिला मान को पचारंतु एते गरम रे आ जिबे कि ओडिसा, एते बात्या रे जिबे कि, साइक्लोन हेले जिबे कि ओडिसा. आमे कौन करूचु? जदि क्लाइमेट चेंज को एतिकी सिंप्लीफाई निज लाइफ रे जदि न बुझी पारिबु, क्लाइमेट चेंज कहवाटा गोटे इट विल बी ओनली ए जार्गन. आमर किछि अभाव नहीं. आमर ओडिशा हैज बीन द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए क्लाइमेट बजेट. आमे सेइतमा एडवोकेसी करूथलु
and climate budget रे वर्ष को about 24,000 crores allocated अछि for the next 10 years till 2030. तेणु विजन जदि 2036 कथा होचे एई क्लाइमेट बजेट केमिति इम्प्लीमेंट हबो वी शुड बी मोर इन्वॉल्वड ऑल ऑफ अस शुड बी इन्वॉल्वड POVS एंड जते भी हमर अनुष्ठान अछि एसोसिएशन अछि हमर समस्त एठी very active people are here students are here they should be involved पंचायत रे क्लाइमेट चेंज प्लान गोटे हबा दरकार पंचायत क्लाइमेट प्लान एटा किछि नुआ कथा नुए एटा लेखारे अछि एक्टिवेट करबा दायित्व काहार दायित्व हमर स्टेट काहार स्टेट आमर जागा काहार गाँ काहार आमर तेणु केते दिन आउ कहबा से कलेनी ये कलेनी सो वी हैव टू गेट इन्वॉल्वड दैट इज द फर्स्ट hypothesis of this vision exercise. Second जिनस है आमे वर्तमान आपण माने केते दूर एटा जानी थिबे about 17% अर्बन माइग्रेशन होची छोट छोट जगारू अर्बनाइजेशन द्वारा अर्बनाइजेशन पाई छोट छोट जगारू अर्बनाइजेशन होची लोक माने माइग्रेट करचंती सिटी को आगरू बाहर को जाउतले एबे 80% in the next 20 till 2025 80% of Odisha will be migration 17% or 80% will be in Odisha in Bhubaneswar आपण जानिचंती भुवनेश्वर रे गला 3 वर्ष रे 7800 टा गछ कटा हलानी डू वी नो अबाउट दैट आर वी टॉकिंग अबाउट दैट फॉरेस्टेशन रो गोटे कॉम्पेनसेटरी फॉरेस्टेशन थाए जदि 7800 गछ कटा हेची ताले 78000 गछ लागिबा दरकार दायित्व कहार बुझिबो किए सो विजन 2036 क्लाइमेट चेंज रे माय फर्स्ट सजेशन इज ऑल ऑफ अस आर रेस्पॉन्सिबल सो वी हैव टू बी क्लाइमेट वॉरियर्स क्लाइमेट एडवोकेट्स ऑल ऑफ अस आमर जी जहाँ जी करिपरिबो सेतिकी वी हैव टू बी क्लाइमेट वॉरियर्स नंबर 1 तापर कौन हम जदि आम क्लाइमेट वॉरियर्स हेले आज प्लीज मार्क माय वर्ड्स आज 2036 भितरे 3टी इलेक्शन हो पारे 2086 भितरे आउ 5टी इलेक्शन हो पारे सो यही जो 5टा रू 8टा इलेक्शन अच्छी आगु को से क्लाइमेट हैज टू बी ए मेजर मैनिफेस्टो आइटम and all of us have to be climate voters. That is my suggestion for vision 2036 and 2086. Can we be climate voters? आपण पंचायत रे प्रश्न पचारि पारिबे कि क्लाइमेट चेंज पाए आम गाँव रो एतिकी जमी सॉइल डिग्रेडेशन हेइची तार कोन करा जिवो तुमरो मैनिफेस्टो रे कोन अछि बजेट रे केत पैसा अछि करिवो किए दिस इज द प्लानिंग वी शुड रिक्वायर फॉर विजन 2036 मैक्रो लेवल आमे सब जानू मैक्रो लेवल क्लाइमेट COP27 COP15 वी नो अबाउट ऑल दैट द बेसिक्स इज हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस एट द लास्ट माइल सो दीज आर द टू थिंग्स टू सजेशंस आई हैव आई नो शी इज ऑलरेडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी द टू सजेशंस वी हैव फॉर सो एक है क्लाइमेट वोटर दुई है क्लाइमेट प्रोएक्टिव जनरेशन प्रो प्लानेट जनरेशन आपण माने जेते जण यंगस्टर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस वी हैव टू बी प्रो प्लानेट आपण एटी विजिटर नुहंती ए गाँ आपणकर आपण कोन बुली आछंती कि एठी को सो दायित्व भी आपणकर सो यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि यह हेई पारे ताहाले विजन 2036 एंड 2086 विल बी सक्सेसफुल एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड सो क्लाइमेट चेंज पाई वी नीड मोर टाइम राइट So thank you so much, but activate होवाक पड़िबो. Thank you. Satya bhai, please come to the stage, please, to felicitate our sir. Sri Charudatta Panigrai, sir.
I will say the link of this Sankar jo initiative achi. I will say the link in the group in Pravasi Odia Vikas Samiti group. Apna mane agu ko eta promote kari paribe apna gale. Thank you. This is the lunch time. It's only for 30 minutes. Only for 30 minutes. So please, our speakers bhi achanti, our delegates bhi achanti. Before that, I want to announce our ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମହନ୍ତ ରାଜୁ ଦାସ ସାର୍ ଅୟୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ତାଳିକର କରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱିଲ୍ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ୟୁ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ It's a proud moment for Pravasi Odia Vikas Samiti. Someone is Maharaj ji, Mahanta ji coming from Ayodhya to Delhi for this event. So it's our great moment. So give a big round of applause for him. Request Priyadasi bhai, Prakash bhai, please come to the stage. Mole bhai, Prakash bhai, please come to the stage. Prakash bhai. टिके ताली करो सह आमे तांको स्वागत करिवा गच्छ 2 मिनट मु तांको देबी से आम पई किछि कहबे महंत सर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं महंत जी को हम रिक्वेस्ट कर ले ओनली 2 लाइन हमें बता देंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस हाँ तो फिर हम लंच में जा सकते सर को 2 मिनट देते हैं सर को बोलने के लिए सर प्लीज सभी को जय श्री राम मंगल कामना ढेर सारा आशीर्वाद मैं धर्मनगरी अयोध्या से महंत राजूदास इस ऑडिटोरियम में जितने भी महान भाव हैं उन सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि जिस उद्देश्य के लेकर आप लोगों ने आज का यह सफल आयोजन इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे जगन्नाथ भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे कि यह जो भाव आपका है जो विजन है जिस रीजन को लेकर जिस भाव को लेकर किस प्रकार से देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है किस प्रकार से लोगों को शिक्षा संस्कार रोजगार इसके साथ साथ देश को कैसे डेवलप किया जाए उस डेवलप में उड़ीसा क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान और उड़ीसा किस प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ सारे संपदा उड़ीसा में है लेकिन जिस प्रकार से डेवलप और देश और दुनिया के सामने में उड़ीसा निखर के आना चाहिए इस उद्देश्य के नाते आप लोग सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद मंगल कामना और आपने जो सम्मान दिया हम निवेदन करेंगे आप लोग धर्मनगरी अयोध्या आइए और हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है आप दर्शन करिए मंगल कामना ढेर सारा आशीर्वाद Thank you everyone. Please, lunch time is only for 30 minutes. We'll start after 30 minutes immediately. Please, आमर ग्रहण रे बहुत स्पीकर आने डेलीगेट्स अच्छे आम टिके प्रायोरिटी दबा लंच एरिया रे लंच हॉल रे सो प्लीज थैंक यू हाँ हाँ मु करची
एनु मत टी आनी दे दो मत भोक गलानी ए संतोष भाई दिमाग खराब कर पता सब जज का कौन नंबर सब स्पीकर कितने खराब कथा कहला नंबर दियो नंबर दियो नंबर दियो हेलो चल छाड़ दे हेलो तू तेरे पास मिल गया कुछ नहीं 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 तू ललित से कर वो मना कर ध्रुव से पूछ पहले क्या सब में दे दिया एलसी देख के और ध्रुव से बात अरे तुम दोनों भी खा लो कहाँ रुकी कि पूछ जाओ प्रकाश भाई अभी के तमे करो ना मुझे भी सब आई तुम जो काम 5टा बेले जे बाहर ठिया ना देखो हजार लोकंकर हजार आज आसी सुन सुन अबिका कहनी आला 3 मास पर आज आसिक भाषण दबा बहुत केते खाली कहीदेले कौन हम मो सामने कसले तो कामटा हम ना पक्ष रही कौन मॉडरेट कर बहुत पूरा टाइम टू टाइम काली पुणे काम अच्छे ना प्रोग्राम निकाल के भेज
ନା ନା ମୋ କହିବା କଥା ଆର ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ କେତେ history will remember us. History will remember us. History will remember us. ତମେ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମାଟ୍ ନାଇଁ ଖାଇବି କ'ଣ ସେଠି ଜାଗା ନେଇ ବା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଶୁଣ अच्छा अच्छा ये गाड़ी कुछ रखा क्या हुआ? वो मीडिया का गाड़ी है और रास्ता पर लगा हुआ है उनको बोल दीजिए। Attention everyone, DL4CAH 9013 Honda car, grey color Honda car is parked wrongly. So please help guards to move from there. Please move this car from there. 9013 Honda car, grey color. Huh?
सत्य भाई आपनकर अछंती ना नहीं स्पीकर समस्त एट अछन गुड आफ्टरनून एवरीवन जो मैंने बाहर अछंती टिके भितर पळासी आम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करिबा जदि समस्त लंच सरीगलानी ताले हॉल को आसीगले आम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करिबा प्रियदर्शी भाई प्लीज गाइड ऑल आवर डेलीगेट्स प्रियदर्शी भाई प्लीज should I start? This is the time for our third session, education. What education means in our life and what education important role in our life that everybody knows. So for that I want to invite Professor Damodar Acharya, former chairman AICTE, former director IIT KGP, session chairs. Professor Amarendra Behra, professor and joint director CIET NCERT. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Delhi University. Professor Pranati Panda, professor and head Department of School and Non-Formal Education, NIEPA. Professor Nirad Kumar Das, professor and former director, School of Education, IGNOU. Our moderator, our member also, our vice president and moderator of this session, Professor Satyabhushan Das, professor marketing, BPCL chair professor, chair CMEE IIM Lucknow, Noida branch. Thank you. Professor Satyabhushan Das is the professor marketing at IIM Lucknow at IIML. He has been leading in numerous key roles such as Dr. Ishwar Dayal, chair professor for futuristic issues in the behavioral science and founder chairman, Center for Marketing Emerging Economics. He was awarded with the prestigious Sastry Indo-Canadian Doctoral Research Fellowship for pursuing doctoral research in management at University of Manitoba, Canada. Professor Das has published in several leading and reputed international journals of marketing. He is co-authored research studies, have won various best paper award at 2014 to 2022 annual Conference of Emerging Marketing Conference Board, 2013 Marketing Research Society of India Annual Conference and 5th International Conference on E-Governance at Hyderabad. He is recipient of Best Researcher Paper Award from Emerald Publication for the year of 2012. He recently studied on consumer behavior on COVID-19 lockdown as he received lots of coverage from national and international media. This is all about our Vice President, Professor Satyabhushan Das, and moderator of this session. I request him to start the session. Thank you. Over to Satyas Bhai. Thank you, Vijay. So this is the session after the launch. I know that after some time all of the delegates will join. So good afternoon to all of you and welcome to this session, education, of our Vision Odisha 2036-86 program. First, I would like to introduce today's esteemed speakers. Each of them do not need much introduction because they have already made that identity in their own domain. To my left,
Professor Amarendra Behera, who is now Joint Director, NCRT, and Joint Director, Central Institute of Educational Technology, a constituent of NCRT. Professor Behera has vast experience in NCRT, and he was head of the department ICTs and training of CIT NCRT between 2012 to 17. Diversified his involvement into educational technology, media, particularly radio, television, interactive contents, multimedia, new media, and he is also associated with providing academic support for development of national focus groups, position papers, and also associated in dissemination of the vision of NEP 2020. He is also involved in several technological initiative policy decision making. Then next, Professor Acharya. Professor Acharya himself is an institution. He's an institution. Professor Acharya is the former director of IIT Kharagpur and former chairman of All India Council of Technical Education, New Delhi. And Professor Acharya held several important positions at IIT Kharagpur, such as Head of Industrial Engineering Management, Dean of Vinodata School of Management. He was Deputy Vice Chancellor, and also almost all important portfolio. And most important, the Chief Minister of Odisha conferred him with the Think Odisha Leadership Award in 2010, jointly with the former Vice Chancellor of Odisha University of Agriculture and Technology, Baidyanath Mishra, for his contribution in the field of education. Next, Professor N.K. Das. Professor N.K. Das is now working as a professor of education in the School of Education, IGNOU. He joined IGNOU in 1988, and vast experience, has published more than 50 papers. He has edited books, self-learning material, proceedings of conference, performed as chairman, a member, coordinator, and member of NAC visiting teams for assessing several BED colleges, and performed as a member of DEC, UGC, AICT teams. He is a member of Faculty Board of Central Institute of Education, University of Delhi, Board of Studies, etc. And next to him, Professor Pranati Panda, who is sitting. She is a professor and head of the Department of School and Non-Formal Education, also heading a dedicated unit of school standards and evaluation of National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. She has more than 30 years of teaching experience, teaching and research experience. She is currently leading a national program on school standards and evaluation, a major initiative of Government of India for institution of school performance evaluation in 1.53 million schools of India. She is among the editorial member of several international and national journals. And all of, if I'll keep on reading, it will be so many pages, and we are already delayed. So let me go straight to the topic, education. As all of us know that education globally plays an important role in the overall development of an individual as well as society. The previous speakers have told that education already very important aspect, because education opens up world of possibilities for individuals by empowering them with knowledge and prepares for life. And how will face life, how will change critical solutions, education empower us. Today, India is one of the top global destinations for its excellence and high standards of education. Initially, classrooms were restricted to schools, teacher and school. Now it is, after increasingly technology has added innovative digital teaching solutions in these sessions and making it more practical, applicable and relatable to our life and surrounding in an interesting manner. India, being a traditional country, was not ready to initially adopt educational technology, but now it is very interesting to note that the educational sector is using technology such as cloud,
virtual data centers and virtualization as an enabler so far. This vision of 2036 is for the short-term development and expansion of the graph of Odisha. The vision of 2086 is for the long-term development and ensure that Odisha becomes the happiest state in India and leaves a world footprint better than developed nations like Denmark, Finland, etc. We can have a long-term vision of bringing forward a fusion of Gurukul system, values, along with technology-based education, modern in outlook and traditional in heart system to ensure that modern benefits are attained along with keeping intact the cultural values of historical Odisha. Before opening the session, I will make a small overview of important news clippings indicating status of education in Odisha. This Times of India 2022 news. Before that, I can tell this 2021 census has not come, but as for 2011 census, the population of Odisha was 41.97 million, of which the literacy rate of Odisha was 72.87%, of which the male literacy is 81.559%, female is 62.46%. There is a gender diversity in terms of literacy. And Times of India November 2022 news that tells Odisha has been placed among the top 10 states in performance grading index. The Department of School Education and Literacy of the Ministry of Education released the PGI of states and union territories for the year 2020-21 recently. So PGI is a unique index for evidence-based comprehensive analysis of school education system in all states and union territories. Odisha has secured 10th rank in PGI for the year of 2021. It had been placed 14th rank in 2019-20. So Odisha has made significant improvement as per this November 22 report of Times of India, and it is ranked among top 10 states by securing 877 points out of 1,000. If you look at another report that in Times of India September 2021, that tells Bhubaneswar ranks last in quality education in SDG Urban Index. This is November 2021. So what is telling, essentially, the city has been ranked bottom in quality education in the Sustainable Development Goals Urban Index 2021, recently released by the Niti Aayog, contrary to its increasing popularity as an education hub. This is a matter of concern. Odisha capital has scored 50 out of 100 in quality education, while Thiruvananthapuram tops the list with 96 points. The survey was conducted for percentage of school internet schools with computer available, schools with functional electricity and drinking water, people-teacher ratio and percentage of trained teachers at secondary levels in schools in 56 cities. The survey revealed only 25.1% schools, 10% schools in the state capital have internet facilities, where 57% have computers. So this tells about how the digitalization, although is adopted, but the infrastructure issues are so important concern, the real digitalization is not taken place. Next, another news is a very important news. September 11, 2021, again Times of India, Utkal University is in a spot of other since the NRF ranking was released and CAG report was tabled. Odisha's premier university got only 13.78 marks out of 100 in research and professional practice. The reason the university has been ranked 87th overall, only Utkal University has managed to get 96th ranks. Other Sambalpur and other universities are not also figuring in 200. This is a matter of concern. At the same time,
there are 4 other institutes, including 2 private universities, where one university, Professor Acharya is chairman of the advisory board, SWA University, and yeah, so I just, I'll shut down, is doing good in research. So these are some background I'm just giving, so for discussion. And at the end of the day, once our speakers will speak, I will discuss more about a multi-purpose, multidisciplinary research university. We are from the PO base. Actually, this was initiated by Professor Chitta Boral, Arizona State University. That should be a multidisciplinary research university like BHU in Puri. There is a lot of logical background. If time is available, I will speak why that should be a multidisciplinary research university. Because in India, there are 4 ancient centers, these pithas, like Puri is one of the important identified place where our knowledge center was there. There is a case to revive now. So we'll be discussing that thing. But because time is short, I now want to request all our speakers to speak on important areas where they have vast experience. I am now asking each speakers to speak on important topic where they have vast experience, like Professor Damodara Acharya, technical education, Professor Pranati Panda on teacher education, and Professor Amarendra Behera, use and integration of ICTs in education, and Professor N.K. Das, school education. So each speaker requested to speak within 10 minutes. After that, there should be some question and answer. Thank you. So now over to Professor Damodara Acharya. So to start. Hello, am I audible? Okay, thank you. So, my co-panelist here, distinguished audience, there are academicians, there are industry people, policymakers in this Vision Odisha 2036-2086. I must first thank Satya. I am saying Satya because he has been a student of our department, and our Surya Babu for actually inviting me to be here. I do not know what is the role that I will have. I am not a existing person. I am a past person. 10 years back actually I have retired. Anyway, it doesn't matter. That is a different story. But here, I believe the focus was actually, so far as education is concerned, what is actually the education vision for 2036 and beyond 86. And I have been asked actually to say something about technical education. Now, to put actually the context in right place, I would like to first say that education is only the driver of development. And unless actually we are educated, we cannot develop. This is first thing we must do it. And that too, technical education really drives the development and the growth and the so-called employability and many other things. Many times, I don't demean by that thing the role of liberal education, arts, etc., but they don't really give that type of dividend. Now, to understand this, particularly when we are talking of futuristic thing, please actually take this thing into consideration that by 2036, only the other day we know our population has surpassed China. And by
2036, China will have an economy of $55 trillion. USA will be 44, and we are only talking of 5 today. By 2025, hopefully will be something like 11 trillion by 2036. And of course, one more thing what will happen is that our population will keep on rising, and China's population will keep on decreasing. By the end of the century, our population will be at least, it will be more than, say, what I should say, 200 crore, but China population will come down to maybe below 150 crore, which means their actually capability to work will reduce. The age is also not in their favor. And whatever the dividend actually, that demographic dividend that we are talking of, young population and all these things, this will not really help us much unless we really revamp our total education and particularly technical education side. What actually, one more thing which is very relevant for Odisha is, of this total population, nearly 50% actually are ladies, and they belong to, many of them belong to SC and ST. They are not really contributing much to the product, to our output. Of course, through self-help group, etc., it's a very good thing. Some 70 lakhs people are doing that, but their output also has to be increased. Their productivity has to increase. If their productivity has to be increased, I am not talking of any formal degree or anything, but as a part of technological education, their capabilities and knowledge and skill has to improve. Even if they are making simple things like body and papad, how to get more out of it, how to increase this actually productivity, that technology actually has to pass on. Lot of things have to be done at that level. Second thing, actually, I will straight come to the other important issues. We are saying that actually we have got lot of resources and everything that we have, but do you know that our rivers in Odisha, they are the most polluted? Do you know actually we are generating power, we are contributing so much to the, say, carbon load, and ultimately our land is getting degraded. One more thing, we are saying a lot of steel plants are coming, very, very happy about it, but we are getting actually ore through slurry pipeline, where we are converting the fresh water to polluted water, dumping the fresh water. Okay, I'll stop here. No, nothing big. I have respect for time, maybe if you do not, if I do not, no, please, I will come to the question side. There is enough time. But please, you have said the time. Anyway, friends, actually I will be cutting short. What actually I would like to say, the technology which we are using in exploiting our ores, etc., our resources, natural resources, and these resources actually will not vanish, will vanish, but will be left over with a state which is very, very poor in every other respect. Let us not forget what has happened to a small island called Nairu, for which actually Paradeep Phosphate, as you know, it was actually their partner. They had ore, but everything is consumed. That is one of the poorest state.
And in this situation, what is important from the technical education point of view, that we have to have the education which can really ensure, at least provide the knowledge of how future things will come up. So for example, we ought to have the carbon neutrality by 2070. That is our commitment. Now, to have this carbon neutrality, can you really afford to use the existing technology? No. So we have to really revamp or to think about it, how to develop new technology. Our education focus actually will be towards that, and also that it will prepare our students who can really be prepared for this type of thing. Many new industries are coming, but we are not capable of. We are producing, everybody will say that our Odisha is becoming an education hub, or Bhubaneswar is becoming an education hub. Large number of graduates we are producing, engineers we are producing, so many graduates we are producing, but what is their capability? They are not getting job. And industry actually do not want to take them. But for instance, there is so much of demand for good technical manpower, they are not available. To give you actually one example, very recently, Nippon Steel actually they are going to have a 30 million ton steel plant in Paradeep. They were looking for 200 to 300 engineers who have got knowledge on specific areas, skill in that area, and they found we do not have anybody. We are talking of actually pharmaceutical industries to come up. We do not have actually competent people who are suited for pharmaceutical industry. Whatever emphasis that actually they are doing, all traditional, but to modern technologies, we are not there. Now, can we really think, another thing actually which you have to think of is the sustainability part and carbon neutrality part. For this type of thing, new technologies have to be really developed. For example, can we really go for green hydrogen technology? Can we really utilize hydrogen to reduce our iron ore from that thing to produce iron and steel? So therefore, this type of thing, if we are talking of, if we want to make our Odisha progressive and we can really do better, then our total education focus, particularly in the technical education focus, has to change. Our ITI level education, that is totally outdated. With that type of skill, they will not get job anywhere. So similar is the things with the diploma. Engineering, less we say it is better. So we are not really changing that. It is very, very essential that we must change our focus on education. Content must change, and the special skill and competencies actually has to be developed, and those skill and competencies must actually match with what the industry needs. And that will come only at a different level, and what is most important is the so-called degree level education is totally irrelevant today. To make them productive and do this type of thing, you do require people with much higher skill, much knowledge. Maybe, as you know, in developed countries, let us say in USA if you take, the demand for actually graduates are not much. They don't go very high. But whereas the demand for postgraduates and PhD is very high. So we must go for that type of thing if at all actually we would do well. But that is actually one thing which I would like to say. Similarly, on
people all say that, okay, AI, IoT, blockchain, this type of thing actually you can use and will go up. See, these are the tools. They do not actually give you the technology, or they don't give you the skill and competence of doing the things. So this actually will not happen. But what is important is how do I use these technologies in the actual industrial situation, actual scenario. That requires a different level of knowledge and different level of skill. You must have the foundation very strong in the basic, and after that actually on these things you can do it. Don't think that actually somebody just knows actually some deep learning tool or other type of data science tools, etc. With these tools, nothing you can do. You can actually move with the key and look for the lock, but that is not the solution. You should have key fitting to the lock. So that should become the mantra of actually our education things. Otherwise, we will have no future at all. In 36, you will find the very things that we are focusing is that build the infrastructure, spend a lot of money, and have actually nice building, this, that, etc. But ultimately, what do you produce out of it? Nothing. So what is required is that you should have that vision, and also it is necessary that we should have the teacher. But that is one thing which is given the last priority in our thinking. Many things we say, but the person actually who will make man, he is absent. And his quality is the worst. If I think actually some of these steps actually if we can take, given all these resources, we should be really on the top. There is no reason that why you should not be on the top. And we have to think afresh, think of some new areas where actually will develop. So, and think of focusing more and more on higher education and the specific knowledge building in the key areas, and that too only at the master's and PhD level, not at the another level. Thank you very much. Thank you, sir. Always all the advice, we are recording this thing most interestingly, and we'll put this in the proceedings also. So most important input what Professor Acharya has given, the demand supply gap. So what is the contemporary and relevant requirement in the industry, and what is available in the, so many colleges are there, most of the technical colleges, but competency they are not building. Also contemporary issues on sustainability, and also those who are backward in the society, how they can use technological knowledge. So these are very important and valid points when we are making the vision for the, we are thinking about the future vision. Thank you, sir. Now I am requesting Professor Amarendra Behera. So use of ICT in education, how that can be harnessed. Yeah. Namaskar. Very good afternoon to all of you. Thank you, Professor Das, esteemed Professor Acharya, former Director IIT Kharagpur and Chairperson AICT, esteemed Professor Pranati Pandaji from NIPA, and also respected Professor N.K. Das from IGNO, distinguished gathering, academia, and this ठीक है
थैंक यू ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି माय पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लीज डोंट माइंड आम ये समस्ते ओडिया जेहेतु आसीचे आम गोटे विजन रखीचे 2036 तो आम यदि ओडिया रे डिस्कस करवा हमको इमोशनली अटैचमेंट सहित हमको प्रश्न So whatever you are telling, अपन जहाँ कौन ठीक कथा, बर्तमान let speaker speaks whatever the language. When we आमे जब discussion करिबा, we can discuss in Odia. What is the problem? Okay. So that independence we should give the speaker. Whatever the language they can tell. Yeah. चेष्टा करूँ आम मैंने ओडिया रे कहया पाई बहुत बहुत धन्यवाद. एक्चुअली मते जो विषय उपरे कहवा कह जाइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा विद्यालय शिक्षा हो कि हायर एजुकेशन हो तार क्वालिटी केमती अणा जाई पारिबो ता विषय रे कहवा पाई आम मैंने समस्ते अंततः जानीचे जे इंडिया विविधतार देश एते डाइवर्स जे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो कल्चरल डाइवर्सिटी हो कि डाइवर्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो बेसिक एमिनिटीज हो बहुत कम भी अच्छी आउ केतरा जगह रे ठीक ठाक भी अच्छी आउ जदि मु शिक्षा व्यवस्था उपरे आरंभ करे डाटा विषय रे लगभग 15 लाख स्कूल पूरा देश रे ओडिशा रे 62,000 रु अधिका स्कूल आउ जदि स्कूल आउ टीचर रेशियो भी देखा जाए जदि गोटे स्कूल ले आज एन एवरेज 4 जन टीचर अच्छा 2,40,000 कि 2.5 लाख टीचर भी ओडिशा रे अच्छा आउ शिक्षा व्यवस्थार फलाफल कौन डॉक्टर दास सर्वे अचीवमेंट सर्वे डाटा भी कहते आउ ओडिशार रैंक जो पीजीआई रैंकिंग रे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रैंकिंग रे देश रे से विषय भी कहते आउ जदि 2036 2086 कथा आमे ओडिशा विषय रे पर्टिकुलरली कहवाई चाहिए जे ओडिशा कोठी पहुँचबो कोठी पहुँचबा दरकार आउ सूचना संचार प्रौद्योगिकी को केमिति व्यवहार करा जिबा दरकार मु निश्चय यह कहवाई चाहिए जे आजिका डेट रे जदि आमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जातीय शिक्षा नीति 2020 कथा कहती ताहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा जो मेन उद्देश्य होची जे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन आउ लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाई आउ सेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रा भी उद्देश्य तेणु से उद्देश्य पूर्ति पाई आमे मल्टीप्रोंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिवार अच्छी जदि ओडिशा केस रे आमे एग्जांपल निये इवन टोटल भारतवर्ष को देखा जाए से 1700 रु अधिक भाषाभाषी लोक इंडिया रे अछंती आ ओडिशा रे भी 2 डजन रु अधिका भाषा लोक अछंती आ स्कूल रे भी केते भाषा रे पहुँची पारिनी एपर्यंत इवन गत काली एनसीईआरटी गोटे कमिटी बनैछि जे कुई आ देशिया भाषा उपरे केमती से पिला मानकु शिक्षा दिया जेबा दरकार प्रोफेसर बीके पंडा जे एजुकेशनिस्ट जड़े तेणु तांको अध्यक्षतार बना जाइए तेणु सेमती जब टेक्नोलोजी नहीं आमे कथा कहवा ताहले एजुकेशनल कंटेंट भी बनवा दरकार जोटा कि क्वालिटी आउ ओडिशार भाषाभाषी लोक पिला माने जो स्कूल रे भाषा रे पढ़िबा दरकार से भाषा रे भी हवा दरकार आ गुणवत्तापूर्ण हवा दरकार माने क्वालिटी कंटेंट हवा दरकार आ खाली क्वालिटी कंटेंट हेले भी हबनी आमको एआई मशीन लर्निंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म भी दरकार आमको पोर्टल भी दरकार ऐप भी दरकार आ जोटी कि आमे प्रति पिलाकर परफॉर्मेंस ट्रैक करि परिबा 2036 सहित सुधा ये हवा अनिवार्य आ गोटे 2 वर्ष भितर भी ये हो जाई पारे आ ओडिशा रे आ गोटे कथा मु कहबा पई चाहूची जे आम देश रे पर्टिकुलरली नंबर माइंड बॉगलिंग इवन प्रोफेसर दास आ प्रोफेसर आचार्य भी कहते चाइना सहित कंपेयर करते आउ नेक्स्ट 15 20 30 50 इयर्स रे इंडियन यूथ ही पूरा वर्ल्ड को रूल करेंगे तेणु तांको स्किल ट्रेनिंग भी दरकार तेणु इवन डिजिटल इंडिया कैंपेन रो मिशन को जदि आमे देखिबा बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से चाहे स्कूल रे हो पोस्ट ऑफिस रे हो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गाँव रे हो हवा बेसिक एम्यूनिटी हवा बहुत दरकार आउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी
दरकार जहाँफल कि डिजिटल कंटेंट जहाँ भी बना जाऊँगी ता पिलामानक पर्यंत पहुँचवा भी दरकार आउ से क्वालिटी कंटेंट से माने देखी भी पारंती आउ ताकू देखी परीक्षा रे भल रिजल्ट भी करि पारंती आउ जदि आमे कोचिंग इंडस्ट्री कथा कहवा चाहे से दिन मजुरिया हो कि माने हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हो जे कि लाक्स रे तांकर रोजगार हो समस्ते चाहिए जे निज पिला भल करू एग्जामिनेशन रे भल रिजल्ट कलु भल कैरियर बाछु आउ भल स्किल एरिया रे जाऊ तेणु तापाई स्कूल छाड़िकी भी पेरेंट्स कोचिंग रे पठाउछंती कोटा भी पठाउछंती ओडिसा रू भी पेरेंट्स पठाउछंती बाकी पूरा देश रू भी पठाउछंती तेणु सेथिपाई जदि ऑनलाइन कोचिंग जोटा कि टेलीविजन रेडियो मोबाइल ऐप आउ पोर्टल आ द्वारा 2036 सहित सुधा आमे इनेबल करि परिबा ताहले ओडिसा पिला माने पूरा विश्व रे राजनीति करिवे ये नुह कि केवल ओडिसा रे कि ओडिसा बाहर ही से माने काम करि परिबे तेणु सेटा गोटे जोटा दरकार पूरा देश रे कि हवा दरकार आ गोटे कथा मु कहबा पई चाहूची जे आजिका डेट रे चैट जीपीटी भी आपनको मोबाइल रे भी आपण देखुथिबे कि आरंभ करथिबे एआई सपोर्टेड सॉफ्टवेयर सेटा ताकू ध्यान रे रखी इवन गत 2 दिन धरी नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेशन होची आउ जो पूरा देश रे विद्या समीक्षा केंद्र कंट्रोल कमांड सेंटर बनिबा पई जे प्रचेष्टा चली विद्या समीक्षा केंद्र बनिबार माने जो भूमि का या जे विद्या समीक्षा केंद्र बनिबा द्वारा कलाहांडी रे जदि गोटे पिला गोटे स्कूल ले भवानीपाटना रे पढ़ुची आ से प्रथम क्लास रे पढ़ुची आ प्रथम रे क्लास रे जो लर्निंग आउटकम डिफाइन होती चाहे 80टा लर्निंग आउटकम गोटे पिला गोटे वर्ष भितर अचीव करिवो से लर्निंग आउटकम को ये विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा ट्रैक करा जाई परिवो आ सेटा से जिला कलेक्टर ट्रैक करि परिबे जिला एजुकेशन जो अधिकारी डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से ट्रैक करि परिबे आ नेशनल लेवल पर्यंत भी ट्रैकिंग हेई परिबो किंतु एई ट्रैकिंग जो करा जीवो से ट्रैकिंग एथि पई जे एथिकल ट्रैकिंग हबो आ क्वालिटी मेंटेन करिया पई हबो आ एनसीईआरटी लेवल रे जे भवानीपाटना रे से पिला ना कोन से पिलांकर पेरेंट्स का ना कोन आ से पिला केते शिखिला एनसीईआरटी रो हुए तो बहुत इंटरेस्ट से विषय रे रहिबनी किंतु भवानीपाटना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रहिबा दरकार आ ओडिशा सरकार को रहिबा दरकार किंतु देश स्तर रे से विद्या समीक्षा केंद्र कंट्रोल कमांड सेंटर द्वारा जे पूरा देशर सिचुएशन कौन आउ केमिति पढ़ा जिबा दरकार केमिति शिक्षक प्रशिक्षण करा जिबा दरकार शिक्षण प्रशिक्षण करा जिबा दरकार जहाँ फल रे कि टीचर को ट्रेनिंग भी कंटिन्यूअसली हो आउ जातीय शिक्षा नीति 2020 रे आउ गोटे संतुष्टि करा जाइछि जा द्वारा कि प्रति वर्ष 50 घंटार मैंडेटरी ट्रेनिंग सबू टीचर को करवा दरकार आउ डिजिटल लिटरेसी गोटे बेसिक लिटरेसी जो सबू टीचर जानिबा दरकार आउ डिजिटल इंडिया कैंपेन रो भी मेन गोल होची जे इवन एवरी चाइल्ड शुड बी डिजिटली लिटरेट तेणु जाफल कि से माने गोटे विषय वस्तु जानिबा शिखिबा आउ बेसी भल भाव में करें लास्ट पॉइंट मुझे जोटा कहवाई चाहूँगी जे आजिका डेट रे पेरेंट्स भी पिला माने भी शिक्षक भी समस्ते टेक्नोलोजी यूज करछंती किंतु आमे केते सेफ टेक्नोलोजी के सुरक्षा आम पाखे केते आउ कौन कौन टूल्स अच्छी जे आमर सुरक्षा मेंटेन हवा दरकार सेटा अच्छी ना नाही आउ जदि अच्छी पर्याप्त मात्रा रे अच्छी ना नाही तेणु आमको चिंतन मंथन करवा दरकार जहाँफल कि चाहे से पिला स्कूल रे ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन नौ कि स्कूल बाहर घरे नौ कि पेरेंट्स कर मोबाइल हैंडसेट रे नौ जे पिला एटलिस्ट सेफ रहू माने सेफ्टी जो मैंडेटरी सेटा हवा दरकार आउ लास्ट पॉइंट जो मु कहिकरी समाप्त करी जे बेले बेले इवन सदा बेले पूरा सिस्टम रो या चिंताधारा जे सरकार ही सबू किछि करिवो आ सरकार सबू किछि करवा संभव भी नुह 15 लाख स्कूल जे कथा जदि आमे कहबे जे बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र लक्ष्य स्कूल रे अछि
तेणु 15 लाख स्कूल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 62,000 स्कूल जो ओडिशा रे अच्छी ताधरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आमको जदि आनिबा दरकार आमको कॉर्पोरेट सीएसआर एनजीओ सिविल सोसाइटी स्टार्टअप्स even parents, even other sectors, general public, they have to support, then only it is possible. Even national policy 2020 रो भी या गोल जे समस्ते मिलीमिशी कले ए काम सुविधारे हो पार आउ सबू कामर विजिबिलिटी हम आउ मते यही फोरम रे कहवाई आउ पर्टिकुलरली ओडिया रे कहवाई जो कहले मु चेष्टा कली जे मु जाननी जे केते दूर सक्सेस की फेल्योर तेणु धन्यवाद बहुत बहुत कि यही मंच रे कहवाई मौका देवाई थैंक यू बहुत भल कहले ओडिया रे कहले बहुत भल कहले भाई भी आमर भल सजेशन देले आउ जो आईसीटी डिजिटल टेक्नोलोजी यूजेस तार अमन बाबू जो कहते बर्तमान एक्सपीरियंस मोटे स्टडी करी से जिते प्राइवेट ऑनलाइन आप अच्छी ओनली 60 to 70% लोक खुशी अच्छा 40% लोक से जो ऑनलाइन आप एजुकेशन दिया तादे खुशी नहांती एवं पाठशाला गोटे गवर्नमेंट आप ओनली 55% लोग खुशी अच्छा से आप यूज करके एंड मैक्सिमम लोग डिसैटिस्फाइड कारण डाउनलोड कर माने टेक्नोलॉजी सार भी जो कथा कहते प्रोफेसर आचार्य टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिगर एंड रिलेवेंस हाउ मच दैट इज रिलेवेंट सेटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस एंड अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट अमरेंद्र बाबू कहले डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट थिंग व्वेन आम जो वल्नरेबल आमर चिल्ड्रेन एजुकेशन एवं अडल्ट एजुकेशन डिजिटल करुचे सेटा को आम लक्ष्य रखा कथा बर्तमान प्रणति मैडम को रिक्वेस्ट करी टीचर एजुकेशन उपरे कहे इट वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट नमस्कार समस्त को मुझे भाई को धन्यवाद देवी जे से ओडिया रे कहवा को आमको आम समस्त को इंस्पायर कले प्रोफेसर आचार्य सत्य अमरेंद्र and Dr. Das, all are my juniors, so I can take their name. We all have teachers in our life, yes or no? Yes. Vividly आमे आमर शिक्षकों को भी मन रखीचु स्कूल बेलार हायर एजुकेशन ये प्रथम क्वेश्चन हैला ये शिक्षक मान को ये टीचर्स माने केमती प्रिपेयर होचंती ता उपरे बहुत डिबेट डिस्कोर्सेस फॉर लास्ट 75 years चलचे एंड इंडिया रो गोटे जो लॉन्ग हिस्टोरिसिटी अच्छी जोटा सत्य मेंशन करथुले एंशिएंट इंडियन एजुकेशन आमर गोटे टीचर्स को गोटे गुरु हिसाब रे देखिया को फ्रॉम गुरु टू द एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ता भितरे टीचर्स रा आइडेंटिटी हैज बीन चेंज्ड when I am talking about the teacher identity what kind of trust we have on the teaching community who are teaching across all the levels possibly this changing identity of teachers raising significant question to us टीचर्स भल नुहंती भल अच्छंती टीचर्स मानक पाई कोचिंग सेंटर खोलुची पिला मानकर लर्निंग क्राइसिस चलची चिल्ड्रेन आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल जेते सब लिस्ट आउट आमे करिबा चैलेंजेस पॉसिबली वी ब्लेम द एजेंसी दैट इज द टीचर्स yes or no to certain extent we accept that teachers play the very central role in the education sector. They can shape the future and if you look at our some of the document, policy document, they say that destiny of India is being shaped in the classroom. A classroom भितरे किए autonomy सहित किए करचे teachers. So friends,
let us reflect on these Indian teachers and how we have defined the identity of the Indian teacher so as to meet the future need, what Professor Acharya was mentioning. आमे ये टीचर्स को केमती तैयारी करुचु जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी अच्छी से माने कैपेबल अच्छंती ये सब करिया को एंड पर्टिकुलरली ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे फ्रेंड्स मु जॉइंट रिव्यू मिशन ऑन टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु लीड करथिली तापरे बहुत रिफॉर्म हैला ओडिशा स्टेट रे इन द टीचर एजुकेशन सेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स comparatively ebe odisha re mostly 80% of the teachers are regular teacher teaching across all levels primary elementary secondary but still we have contractual teacher guest teacher and all of you need to understand friends teacher kara salary hella 90% of the budget. If school education is sector is spending 90%, आउ सब quality intervention दबा को possibly state पाखरे बहुत fund रखेबा. So friends, the way we discuss about the national narratives of identity and professionalism of Indian teachers and search for quality teacher education, it is changing with the political will, globalization, marketization, social and labor market demand, friends. And possibly this sector is considered as the cheapest in the investment and also using teacher as the cheapest labor force in the education sector. After 75 years of India's independence, we are exactly where are we now? And how did we reach here? Because last 75 narratives, including Odisha, आमे समस्ते चाहूँ क्वालिटी टीचर्स किंतु क्वालिटी टीचर्स जो इंस्टीट्यूशन जो कॉन्टेक्स्ट रे तैयारी होचंती लोकंकर तापरे विश्वास नहीं कहीं कि particularly teacher education sector रे 90% of the teacher education institution are in the hand of private sector. If there are 19,000 teacher education institutions, 10% teacher education institutions को खाली government manage करची. So being a welfare state and taking the responsibility to prepare good quality teacher, the state agency need to invest on that. That is my argument. And particularly Odisha re 88, 89 रे जेतबले प्राइवेटाइजेशन पूरा स्प्रेड होथुला सारिठी बसचंती इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूमिंग होथुला सेतबेले टीचर एजुकेशन रे जो लीडर थिले से माने गोटे लेजिस्लेशन आनी की टीचर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करिया को देले नाही. So one hand, government took the responsibility to ensure the quality of teacher education. Other hand, the state legislation did not permit any private agency to operate and offer teacher education. ये गोटे ओडिशा रा unique context as compared to all other state and UTs of the India. जदि प्राइवेट बंद हैला कौन स्टेट एजेंसी इफेक्टिवली काम कले टू क्रिएट एक्सेस टीचर एजुकेशन रा एक्सेस क्रिएट करिया को गवर्नमेंट कौन काम कले because our state is very diversified friends. There are many tribal districts, many aspirational districts जोठी teacher deficit is directly impacting the quality of school education. बहुत स्कूल अच्छी जो थे टीचर डेफिसिट एबे भी अच्छी किंतु there are many district जो डिस्ट्रिक्ट रे टीचर एजुकेशन नहीं तो गवर्नमेंट बहुत टाइम आपको एक्सपांशन और एक्सेस करिया को कले नहीं. इन स्पाइट ऑफ आवर रिकमेंडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया semane teacher education particularly for tribal they opened in one district but it could not spread in other district as well.
So if you look at, there are nearly 11-12 universities in Odisha, joti teacher education department achi. Odisha ebe another model it has evolved to provide self-financing teacher education. Paisa kiye daba? Household expenditure, right? तेणु गोटे टीचर बनवा को हेले एबे ओडिशार पिला माने तांका निजर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट करचंती. सो we are killing the aspiration of thousand and thousand individuals to become teachers from remote tribal areas, friend. This point we need to ensure and acknowledge significantly how do we encourage the students from very remote areas to take up the teaching profession, to build the future, what Professor Acharya was mentioning, to develop the right kind of skill set to meet the future demand. There are certain transformative agenda proposed under NEP 2020. एथरे से टीचर एजुकेशन ऑलरेडी ओडिशा रे गोटे डेफिसिट स्ट्रक्चर रे चलीची सेथिरे दीटा पॉइंट एम्फसाइज होइची. गोटे हला टीचर एजुकेशन हैज टू एम्पावर इटसेल्फ टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी टीचर्स. एबे टीचर एजुकेशन को कहा जाउची जे हायर एजुकेशन टीचर को भी professional development kariba. So the dual responsibility requires huge empowerment of the teacher education institution operating within the university or outside university. I'll just take few minutes. I have been working on a model which I have been pushing at the national level, that is life cycle approach to teaching profession. ये जो life cycle approach अच्छी, जो entry point to exit point, teacher nurturance is very, very significant. And they need to enter with a good content knowledge. तापर initial teacher education एबे जो promote होची जे longer duration हबा, multidisciplinary institute रे हबा, multidisciplinary university context रे हबा. तापरे to invest continuously in a spiraling way on teacher professional development. टीचर गोटे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनवा को हेले ताको कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करिया को पड़िबा until they retire from the teaching profession. So this life cycle approach we are institutionalizing at the national level, so with a defined professional standard, say professional standard को meet करिया को पड़िबा. Thank you everybody, and very succinctly I shared my ideas. Thank you so much. Sorry for the session interruption. आज आम समस्त सांगे श्री श्री स्वामी नीलाचलानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज जी के कुछ शिष्य यहाँ पे बैठे हैं. एंड हमारा गुरु शंकराचार्य जी के एक महोत्सव हो रहा है 25 अप्रैल 5 बजे तालकोटरा स्टेडियम में. तो सबको उनके तरफ से निमंत्रण है. हम सब एज ए उड़िया वी आर प्राउड सो फॉर शंकराचार्य. तो हम सब उनके वहाँ पे जाके तालकोटरा स्टेडियम में कुछ सुनने को तो मिलेगा शंकराचार्य जी से. तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी प्राउड यू ऑल हियर टुडे विथ अस. एंड सो दिस इज द अनाउंसमेंट. 25 तारीख 5टा बेले तालकोटरा स्टेडियम. समस्त को रिक्वेस्ट हो सब ओडिया भाई भौणी मैंने निज गर्वटा को सेठी हमें फील करवा. तो आम समस्त सेठी जीवा किसी समय एटलिस्ट. थैंक यू. ओवर टू द सेशन. थैंक यू विजय एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. धन्यवाद धन्यवाद. सो कमिंग बैक प्रणति मैडम बहुत इम्पोर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले जो थी कि सबुठ बड़ जिनस हूँ 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डोमिनेटेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ओनली 10% गवर्नमेंट. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी
teacher education, we cannot ensure that strictness or quality unless until there is fully governed by government institutes. And life cycle approach of teachers, that how multidisciplinary knowledge, content, all these things. Quality teacher is a very important thing. Unless until there is a quality teacher, the teaching cannot be really delivered the intended way. Now I am with this. Now I am requesting Professor N.K. Das to discuss about school education, reform on school education. Professor Das. धन्यवाद Professor Das. I am really grateful to the organizer, Surya Narayan Mishra, and this organization which has done a very commendable job. मते स्कूल एजुकेशन उपर कहवा को दिया जाइए जेहेतु एठी कहगला जे ओडिया रे कथार्ता करने मु प्रचेष्टा करी चेष्टा करी ओडिया रे कथार्ता करने को किंतु जता कहवा समय केतक टेक्निकल वर्ड आसो तार प्रथा बोध हुए तार ओडिया एक्जाक्टली ओडिया मु कहि परिबिनी एनी हाउ देखंतु जतबेले आमे एक विजन विषय चिंता करुचे आने 2036 2086 तो बहुत बियॉन्ड 50 साल पर किंतु इमिडिएट 2036 जदि आमे चिंता करिबा एंड पर्टिकुलरली विद्यालय शिक्षा जोटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस मो मतरे जो समस्त शिक्षा व्यवस्था विद्यालय शिक्षाटा ही इंपोर्टेंट ये विद्यालय शिक्षा रू आगे आमे बढ़ुचे उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा कृषि शिक्षा सब बहुत चर्चा हो गलानी किंतु विद्यालय शिक्षा बहुत इंपोर्टेंट आजिर दिन कि आजिर वर्षटा बहुत महत्वपूर्ण आपण माने जदि खबर कागज पढ़ुथिबे प्रतिदिन शिक्षा नीति उपरे चर्चा चली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमरेंद्र बाबू आउ प्रोफेसर आचार्य सार प्रणति मैडम ऑलरेडी उल्लेख करचंती आपण मान जानचंती एबे विगत किछि सप्ताह तले केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधार 2020 शिक्षा नीति आधार रे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम that framework national curriculum framework for school education विद्यालय शिक्षा ऊपर एनसीईआरटी जो कि महत्वपूर्ण संस्था है केंद्र सरकार कर वर्तमान सेटा सबु भारतीयों पाखरे पहुँचाई मतामत जानापी मोर आज यही सभागार निवेदन जदि आपण मैंने निश्चित ओडिशा प्रदेश पर किसी करने को चाहूँगी निजर नेट खोलंतु एनसीईआरटी किंबा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइट रे ए विस्तार डॉक्यूमेंट अवेलेबल अच्छी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा संबंध रे आ कंप्लीटली सेटा पढ़ंतु से कौन लिखा जाइछि आ किपरि से 2036 रे आपण जो चिंता करचंती समग्र ओडिशा प्रदेश पाई विकास पाई आनिबो से जो सेथरे जतेक जिनस लिखा है से केपरि आपन को साहाय्य करियो कि आम मान को साहाय्य करिवो जाके आमे प्रदेश सरकार को कहि परिबा यही सब जिनस करा जा जेमती कहा जाए जे लुहाटा कमार शाला रे जतरे ताती थाए से समय कमार ताकू स्ट्राइक करे टू गिव ए सेफ नाउ the national curriculum framework is out and this is the hard time that we have to shape our education system whether it is in the state or in the national level
जब जेतले आम कहवा विद्यालय शिक्षार एक नया रूप देवा से 3टा जिनस को मु प्राधान्य दिए। प्रथम जिनसटा है करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम जो कि पाठ्यक्रम हम कहूचे आमर एठी कहउचंती पाठचर्या। पाठचर्या और करिकुलम ताहार जो संस्कार आनिबा सेटा होची मुख्य बिंदु। तापर पेडागोजी एक करिकुलर रिफॉर्म, सेकंड इज पेडागोजिक रिफॉर्म। आमे चिंता करिबा आज जो प्रणति मैडम कहले कि सार कहले आज जो विद्यालय रे जो प्रकार रे पठन और शिक्षण विधि प्रचलन अच्छी कौन से पर्याप्त जो कि 2036 रे जो प्रकार शिक्षण व्यवस्था उभर की आसब से ये पर्याप्त जदि पर्याप्त नहीं आम आज चिंता करवा जो प्रकार की प्रकार संस्कार आसब पेडागोजी रे जहाँ फल कि आम 2036 रे ताको सम्मुखीन हो पार। जैसे प्रोफेसर अमरेंद्र टेक्नोलोजी प्रोफेसर अच्छा आप देखो जे टेक्नोलोजिकल इन्फ्लुएंस एजुकेशन शिक्षा रे एते व्यापक रूप से आसूची 2036 समय एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज। दिस क्लासरूम पेडागोजी जो क्लास रे आज टीचर जाऊँच पढ़ाऊँच व्याख्यान विधि की लेक्चर मेथड रे पढ़ाऊँच प्राय ये खूब शीघ्र डिफरेंट टेक्नोलोजिकल ओरिएंटेड मेथड जोटा कि क्लासरूम रे आसीबो। तेणु सेकेंड चीज जोटा पेडागोजिक रिफॉर्म हमको इमिडिएटली आनिया पड़ो। आ तृतीय रिफॉर्म है असेसमेंट रिफॉर्म, मूल्यांकन और आकलन संस्कार। आज जो कहले सार इंजीनियरिंग पढ़ुंट एते इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी, टेक्निकल कॉलेज अच्छी, ग्रेजुएशन कॉलेज अच्छी, बहुत पिला माने पाठ पढ़ुंट किंतु यार अनएम्प्लॉयड कहीं होची केबे आम चिंता करछो कहीं गोटे इंजीनियरिंग मु एमएचआरडी मिशन कहूली सार को जिते उत्तर प्रदेश गली बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट डीआईटी रे गली देखला बेलू डिप्लोमा इन एजुकेशन करने लगी बीटेक स्टूडेंट रे सब एडमिशन लेछंती। प्राइमरी टीचर हवापाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट एडमिशन लेछंती आमर जो सिटी करने लगी जोटा आम ओडिशा रे सिटी, उत्तर प्रदेश रे ताकू कहती डीएड और डीएड कहती। हेटू पचारि कौन बीटेक कला परे आपण प्राइमरी शिक्षक होगापाई आसुछंती। दिस इज द सिनारियो, दिस इज द रियलिटी। Perhaps not only UP, in almost all parts of country, including our state perhaps, we have to think of the reform at every phase, right from curriculum to pedagogy to assessment. Now, this curriculum, if this NEP, if you see the NEP vision, perhaps we have to think in terms of that. NEP says an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably to an equitable and vibrant knowledge society. The future will be knowledge society. Who is knowledgeable, he will govern the society. If you are not knowledgeable, you are just lagging behind. आप पीछे पछे पड़ी जिवे। तेणु ये सब इम्पोर्टेंट, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, देयर बाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ये होची हमर राष्ट्रीय नीतिर विजन। ये गोटे पैराग्राफ राष्ट्रीय नीतिर विजन दिया जाउची। यही परिप्रेक्षी क्या कौन आम कर 2036 सुधा ओडिशार कौन विजन हम एजुकेशन में, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में ओडिशार विजन कौन सेटा प्राय आम चिंता करी ओडिशार प्रदेश सरकार को कहले से प्रताप 2036 कि 2050 कि 2086 पर्यंत कौन विजन हम, कौन आम दूरदृष्टि रहा आम चिंता कर। देखु नुआ शिक्षा नीति रे रूटेड इन इंडियननेस, रूटेड इन इंडियन कल्चर की कथा करा जाउची कि से विषय उल्लेख करा जाउची। तार अर्थ कौन, आमर उपनिषद रे जितने जिनस अच्छी
ये पॉलिसी मु काली परदिन देखला बेले सर्ट प्रमाणर कथबार्ता भी करा जाइछि उल्लेख करा जाइछि जे विद्यालय शिक्षा रे सर्ट प्रमाण द्वारा किपरि ज्ञान आहरण करा जाए ताहा पढ़ा जिवो उपनिषद रे अछि सर्ट प्रमाण कर कथा वर्तमान हूँ चैलेंज कौन हो सर्ट प्रमाण को विद्यालय शिक्षा रे किमिति आपण पढ़ेबे किमिति एक विद्यालय शिक्षा सर्ट प्रमाण डिफरेंट प्रमाण को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे उपयोग करिवो ये सब चैलेंज जो कि वर्तमान आसीबो जोटा कि आमर करिकुलम रिफॉर्म और पाठ्यक्रम संस्कार पठन विधि पठन शिक्षण विधि से संस्कार और आकलन मूल्यांकन संस्कार ये सबुथे ये सब गुड़ा आस फिर सेकेंड चीज हूँ यही पॉलिसी कहूँ जे वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी फॉर ए न्यू ग्लोबल सोसाइटी नॉलेज सुपर पावर इंडिया को सुपर पावर बनना है कि इंडिया को सुपर बनिया को हम से ओडिशार रोल कौन ओडिशा केमिति से योगदान करिवो कि प्रकार शिक्षा प्रणाली हम केमिति विद्यालय शिक्षार आमूलचूल परिवर्तन हम ये सब गुड़ा जिनस चिंता करवा बहुत जरूरी से मैंने चारिटा ये पॉलिसी से मैंने कहते चारि प्रकार एक नॉलेज कैपेसिटी वैल्यूज डिस्पोजिशन नॉलेज कहते नोइंग दैट जो नॉलेज डेस्क्रिप्टिव नॉलेज ताकू दिया जीवो जोड़ा आमर बहिरे आमे पढ़ुचे स्कूल रे कि कॉलेज रे आउटा होचे कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज किमिति गोटा धर आमे पढ़ौचे न्यूटन्स थ्योरी पढ़ौचे गोटे साइंस टीचर फिजिक्स टीचर केबे न्यूटन्स थ्योरी किमि काहे कि न्यूटन्स थ्योरी कौन किमिति होची सेटा पढ़ा जाउची कि पॉलिसी कहूची पिला को सिखाओ अगर एप्पल पढ़ुची पिला से ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट डोंट टीच ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट पिला खुद निजे चिंता करो काहे कि एप्पल पढ़ुची वर्तमान एंटायर टीचिंग मेथोडोलॉजी हैज टू बी डिफरेंट तो मोर जो सबमिशन अच्छी why a thing happens why a particular content is there एक content काहे कि स्कूल रे अच्छी सेटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस काहे कि धर आमर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आमे एक अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी संरचना सिद्धांत मु एक गोटे इंटरव्यू रे गोटे कैंडिडेट को पचारली संरचना सिद्धांत आमर जो गाँ गली रे गोड़गला साइकिल शिखती से क्षेत्र में संरचना कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किपरि काम करे एक सिलेक्शन कमिटी में पचारे ए गाँ गहली आपन जो आमर साइकेल गोड़गला शिखाती से कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किमिति काम करे कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ा जाउची बीएड क्लास रे ग्रेजुएशन में पढ़ा जाउची एमएड रे पढ़ा जाउची समस्ते पढ़ुचंती अगर माने तांको जदि पचरा जीव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऊपर से भाषण दे माने समस्ते कहि दउचंती ए तार एट्रिब्यूट्स ये थ्योरीटिशियन ये किंतु एक एग्जांपल गाँ गरे जो साइकिल शिखुची पिलाटी सेठी एटा किमिति अप्लाई होची नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस पॉलिसी और व्हेन वी आर visioning for 2036 perhaps we have to go into the deep both in terms of curriculum both in terms of our discourse in classroom and assessment आकलन एबे कहते आउटकम बेस्ड असेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इग्नू को देले जे एंटायर नुआ शिक्षा नीति ऊपर जो 2020 शिक्षा नीति ऊपर हायर एजुकेशन का टोटल नॉलेज इग्नू 15 लाख हायर एजुकेशन टीचर्स को पढ़ाइब से रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इग्नू दे इग्नू बढ़िया मटेरियल बन जोटा कि ऑनलाइन बहुत जल्दी इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक कैन रीड एंड एडमिट तेणु बर्तमान से कथा होची जे आमर जो विद्यालय शिक्षा रे किपर भाव में एक पिला विल बी एन इंडिपेंडेंट लर्नर दैट इज देयर इज ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस
आमर जो विद्यालय शिक्षा गोटे डिपेंडेंसी मॉडल चलचे वी हैव टू मेक इट इंडिपेंडेंट व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस मॉडल खुद स्कूल समय विद्या गोटे छात्र सी निजे शिखा चाहिए से टीचर कि मास्टर कौन कह से इम्पोर्टाट नुहे से खुद चल शिख खुद पढ़ खुद इंटरनेट देख इंटरनेट रू प्रोजेक्ट बनब सबू से खुद बिकॉज द फ्यूचर इज गोइंग टू बी हाइब्रिड मॉडल ये सब जोड़ा कि चिंता करुँची से क्षेत्र में 2036 रे आमर जो ओडिशा रे जो पाठ्यक्रम सुधार आसीबो कि पठन विधि रे सुधार आसीबो कि आकलन विधि रे सुधार आसीबो सेति लागि पर्याप्त प्रयास करिया पड़िबो जहाँ फल कि आमर जो शिक्षा व्यवस्था समस्त देश रे एक उच्च शिक्षा व्यवस्था एक अग्रिम शिक्षा व्यवस्था हिसाब रे परिगणित हो with this I end my brief presentation and my perception of what could be the this vision of education for the state of Odisha with this नमस्कार धन्यवाद प्रोफेसर दास वर्तमान आम क्वेश्चन गोटे जोड़े नहीं पार टू क्वेश्चंस करिकुलम पेडालोजी ऊपर बहुत डिस्कशन कले प्रोफेसर दास इंडियन कल्चर हाउ दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इन करिकुलम प्रोसीड्यूरल नॉलेज एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई सर्टन थिंग्स हैपेंस सो वर्तमान आम गोटे जोड़े क्वेश्चन नहीं पार संभव ओके सो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द एक्सट्रीम पैनल गोटे कथा मो मन में आसछि जेतले आमे छोट पिला हिथिलु 40 वर्ष पूर्वरु स्कूल जाउथुलु सेतले टीचर हमको पचारुथुला व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपणक मनीषर मौलिक आवश्यकता कौन टीचर टॉट अस रुटी कपड़ा मकान माने खाद्य वस्त्र आ बासगृह एटा हमको पढ़ा जाइथिला किंतु आज 40 वर्ष पर जदि हमको सेम क्वेश्चन रो आंसरटा जोटा आमे सिखिथिलु दिया जाए ताले दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्तमान मौलिक आवश्यकता मनीषर कौन हेल्थ आउ एजुकेशन शिक्षा आउ स्वास्थ्य यहाँ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग तापाई एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वी हैव फाउंड दैट इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट चैलेंज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन टू द पीपल रेदर देन प्रोवाइडिंग रोटी कपड़ा एंड मकान government is providing to house through Pradhan Mantri Awas Yojana to all. Government is providing to arna, rice, roti through Garib Kalyan Yojana to all. But it is very difficult to provide the health and education. Now gote cheez mu kahiya pai chahuchi. In our ancient education, if you to go back, then we had a university like Nalanda, Taxila, Bikramshila, where most of the scholars from the world they used to come to India. भारत को पाठ पढ़ाई से विश्वर समस्ते आसुले एंड वी हैड ए यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा एंड तक्षशिला व्हिच वाज द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टुडे वी हैव मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वी हैव मोर देन 45,000 कॉलेजेस वी हैव मोर देन 16 lakh schools and we have more than 99 lakh teachers and we have 25 crores of students every day going to the schools but none of our universities occupying in the top 100 of the world. Why? This is my question to the panel. Why we are not occupying among the top 100 universities in the world? Please. I would like to answer this question in my own ways. We are really talking of top 100. Top 100 based on actually certain metric. And those metrics actually which we are using, they are not exactly applicable to us. For example, one of the metric which is being used is how many foreign faculty that you have. Whereas in our system, we do not allow actually foreign faculty to be employed here. What is your R&D experience? What is the outcome? How many patents actually you have done? In some of the ranking system, it says that how many Nobel laureates you have produced. We do not have any of these things. Neither actually we are doing it
or investing that much of things and helping the system to come up. Instead, in spite of all these limitations, some of the best graduates actually in the world we are producing. They may be doing much better outside, and some of them are doing also extremely well within the country. But this way, this question has got absolutely not much of value in our context. Now, also if you think of this way, how much actually investment actually we have done in the education. In first 5-year plan, 7% of our education budget was actually in education. And during using that one in those days, actually we have produced some of the very good institutions in the country today. Whether you are saying is IIT, IIM, IIMs and things of those type. But today, our total education budget is less than 3%. And that too, every year we get the things by December that your budget is actually cut by 10 or 15%. Actually, they are the first victim. Second thing, what we say, we don't require teacher. What you require is actually only building. Teacher, only part-time teacher can do. And we also go into this aspect, saying that only online learning actually will help you. In Odia, amar gote katha achi Bhagavatar je guru nakhati uddhava kahu paibu sadabhava. किए ताकू माने ये करिवो आमे जदि भावुछु सब खाली फिल्म देखिकी शिखिजिबु से संभव नुहे एंड मोर सो इन एनी प्रोफेशनल एजुकेशन खाली बही जदि की पढ़ले शुण होता आम आगुटे कथा गाँव में सब शुणीचु मो घरे एत बही अच्छी मु कौन मूर्ख एटा केबे नुहे नॉलेज बहुत अवेलेबल किंतु टुडे हाउ टू लर्न दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग खाली पढ़ले हेनी ता कम करके देखा पड़ो सो ये आमे जब जो भावुथु जे रैंकिंग कौन हो गला सेटा कौन ना दिस इज व्हाट इज दिस रैंकिंग इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय सम ऑफ द प्राइवेट एजेंसीज and those private agencies they have created to make money and we are really dancing on it. बहुत institute भी असंती very well known institute but they don't participate in this तेणु सेटा बड़ कथा नुहे बट जेटा कथा हूँ सत आमर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज प्रेटी पुअर वी आर नॉट एबल टू डिलीवर and we are not able to produce actually graduates in that many numbers who are really qualities and who can serve our country. This is definitely a big issue at every level, whether it is school or college, ITI, diploma, engineering college, medical college. Can you believe today that earlier only a doctor, a MBBS or sometime actually he used to be the ultimate thing. He knew everything. Today, MBBS has no value unless there is actually MS and PhD. Sorry, MD. So, एगुटा definitely एगुड़ा हमको सु चिंता करिया पड़िबो. We have to first invest a lot of money. Even a very poorer country compared to us, they are actually investing something like 10 to 12% of their, GDP on the education, and we are nowhere. And one more thing, we have left the entire education system in the hands of the vultures. They are all private players. School education totally has gone to the private hand.
and technical education, medical education, they have all gone to the private hand. And what actually government is taking off? It is only liberal arts education, and in so many colleges with the very purpose of not actually producing at quality graduates or who can really do anything. They are mass producing the so-called political leaders, the so-called thousands or millions of actually the people that you find who come to actually attend the, the so-called rallies. They are indirectly being supported by the government through these colleges. And every leader, what the name, he will open first a college. So this is general education, and technical education, medical education is still worse. So in this context, I don't think actually few graduates may come up. They may really do well, both within our country, also outside, but not necessarily that that type of education, quality educational institution can produce, or we can come to that level. This is actually the reality, and we have to do it, and there is no escape from it. And all we are saying that technology will bring it outside and will produce here using actually the screwdriver things. The actual IP will be with them, and we will be doing actually the coolie job, as we are doing, let us say, the IT coolie job. Please don't think that actually we are doing any great thing so far as the information technology and computer is concerned. No, nothing actually is there. And we are actually dancing to this thing. Apple will be manufacturing their iPhones here, and then actually we'll do it. At what cost actually that? What is our value addition? Nothing. Please think in that line. I think we have to do it, and we will be forced to do it. Otherwise, actually, nothing will come, because unless we do it, we will be nowhere. Thank you. We can take last question. Thank you. Yeah. Thank you for the opportunity to ask a question. My question is to all the intellectuals, those who are present on the days and off the days. This is Vision Odisha 236 and 2086. Education sector re amar role kon rahiba darkar ba education sector quality education kemti hobo, either role of civil society or citizen forum. In this case amar citizen forum ba civil society kar kichi role achi ki ei Vision Odisha 2036 to 2286 ame rakhuche. ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି 2 ମିନିଟ୍ରେ କହିବି। ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଲକଡାଉନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବିଜି ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଇ ଥିଙ୍କ मंथ ऑफ मेरे मो होम डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर किसी पिलांकर मु कॉल पाइल सर आमे पाठ पढ़ू केमती ए वर्ष 12th एग्जाम दबु केमती। से समय रे जगतसिंहपुर रे 36 कॉलेजेस से कॉलेज रो जतक टिके एडवांस लेक्चरर थिले सेमान सहित मु कंसल्ट कली फोन रे। सेमान कहले आमे जाननु केमती कोन ए विषय रे केमती पिला कोन पढ़ाबो, कॉलेज तो बंद अछि। आई हैव अप्रोच देम, रिक्वेस्टेड देम कि आमे गोटे ऑनलाइन मीटिंग रखिबा। से माने कहले केमती हम मु गूगल मीट्रे प्रोसेस प्रोसीजियर 1-to-1 इंटराक्शन पर से सहित कथबार्ता कली एवं 3टा मीटिंग पर समस्त सहित दे आर एग्री टू स्टार्ट ए ऑनलाइन कोर्स एंड अगस्ट रे आमे सेटा फॉर फर्स्ट टाइम इन ओडिशा मु दिल्ली रही मॉनिटरिंग कली। कैन यू प्लीज आपनकर स्पेसिफिक क्वेश्चन मु करछि, दैट्स व्हाई कि जदी आमे टू कोविड समय रे एंटायर गोटे जिला को आमे एजुकेशन प्रोवाइड करि पारिलु विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तापर गवर्नमेंट ताको नवेम्बर ना डिसेम्बर आरंभ करि पारला, ताहले सिविल आमे जदी चाहूचे 2036 रे कि गोटे समृद्ध ओडिशा करिबा सेतरे
सिटीजन कौन रोल रहा दरकार सिटीजन फोरम कौन रोल रहा दरकार एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट करदेले हेनी कि टीचर को ट्रेनिंग दे पठेदेले हेनी सिटीजन माने केते आयर अच्छा सिटीजन फोरम केते अच्छा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वर्तमान भारतर गोटे मात्र गवर्नमेंट जे कि सिटीजन मान को इन्वॉल्व करने मो स्कूल मो कॉलेज अभियान आरंभ करी एंड आमे जदि कंट्रीब्यूट करि परिबा एक सुंदर एजुकेशन सिस्टम को आम स्कूल रे मो निजे जो स्कूल रे पाठ पढ़ी इंट्रोड्यूस करि परिबा केवल आमे जदि खाली भाबिबा कि आम कतिके आसिले आमे कोन करबा बा जस्ट सेमिनार माध्यम रे सब किछ करि परिबा नै आमे एठी जेते अच्छे समस्ते टिके टिके जदि प्रयास करबा 36 रे ओडिसा टा निश्चिंत भलो होइजो धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच आमे ग्रहण करछु निश्चित भाव में सिटीजन इन्वॉल्वमेंट बहुत या Myself, Dr. Sushant Kumar Bagh. I am from University of Delhi, Department of History. I did my MA, MPhil and PhD from JNU, and right now I am teaching in Aurobindo College. But I feel very pain inside when I see the higher education system in Odisha, because many of my friends are teaching in either in Ravenshaw University or Gorakhpur University or in Utkal University. But when I feel sometimes, we will not have any professors. Our universities are not going to any professors. We are not going to, our university is in deep crisis, particularly with regard to collegiate education as well as university education. So what are the focus that should be given, and what is the solution NEP is going to provide? I want any one of you, any one of the panelists, please answer. Yeah, higher education. Higher education, that is what I mean. Collegiate as well as higher. Thank you. Please. Still, college higher education. Ma'am. Last question. His question is very, very significant and important, and I am linking to sir's question as well. The universities, how are our university changing? And with the deficit of the human resource, particularly higher education teachers. NEP 2020 talks about motivated and energized teachers. Hela na? Kintu first thing is that we need to fill up the vacant position. And also ये जो गोटे ट्रैप रे अच्छंती ना contractualism in higher education, that is also affecting. So the very concept of university need to be debated, deliberated in the current context in higher education. Odisha is really suffering from teacher deficit. Almost all departments lying vacant with the position of professors. And I'm just linking, how do you build the identity of university? He is very proud to say, even I'm proud to say, I'm the product of Delhi University. How many of us are really proud to say, I'm product of Utkal University? We are. We have come from there. But जो गोटे यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी को देखिया को गले ता भितर केते रिसर्च होची केते पब्लिकेशन होची एंड राइट काइंड ऑफ वर्क होची से रिफ्लेक्शन टा धीरे धीरे जेमती उत्कल यूनिवर्सिटी गोटे इमेज थिला पॉसिबली इट इज मूविंग टुवर्ड्स ए वेरी deterioration line of deterioration. How do we save our university? Thank you. Thanks, panel speakers. It's the time for felicitation. I request Professor Satyabhushan Das to felicitate our speaker, Prime Speaker, Professor Damodar Acharya. Now, what is the question? Thank you very much. We are winding the session. Wind up and 2036 रे शिक्षार भविष्य तो उज्जवल कामना करी हमें वर्तमान सेशन को वाइंड अप कर एवं सबू स्पीकर मान को धन्यवाद जनाऊँ बहुमूल्य मतामत देथिबारु
प्रोफेसर दामोदर आचार्य को आम सत्य भाई फेलिसिटेशन करेंगे गोटे छोट आमर मोमेंटो दौरान तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रोफेसर निरोध कुमार दास, प्रोफेसर प्रगति आनंद, अभी के तो जस्ट लॉन्च पर सेशन बेसी एनर्जी हवा दरकार, बेसी ताली हवा दरकार, बेसी एनकरेजमेंट हवा दरकार। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ऑल स्पीकर ऑफ दिस सेशन। थैंक यू। प्रोफेसर बलराम पांडे, प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा, मु रिक्वेस्ट करी शाश्वत भाई आउ संतोष भाई को स्टेज उपरे आसीबे। आमर मॉडरेटर आमर प्रिय प्रोफेसर सत्यभूषण दास भाई को गोटे छोट फलक आउ गोटे थैंक यू नोट दवा गली जीव सत्य भाई तमे जेमति होउछो गली जीव शाश्वत भाई एंड संतोष भाई। Fourth session, challenges in health, hygiene and sanitation. It's a great pleasure to invite our speakers to the dais. Dr. Pavan Gupta, Director of Surgical Oncology, Max Institute of Cancer Care. Dr. Ashok Chaudhary, Additional Professor, Institute of Liver and Biliary Science, Delhi. Dr. Vishnu Panigrai, Group Director, Fortis Hospital. Dr. Achishman Mahapatra, Executive Director, Greed Council, our moderator. All the best, sir. Thank you. Over to our moderator, Dr. Achishman Mahapatra. Thank you. Please request each and every member, delegates and guests, please settle down yourself. It's a humble request to all our delegates, please settle down yourself. Shall we get started? My request is to get seated. Please take the tea, but get seated. Be seated here. आपण बसी पड़ंतु कारण जो गेस्ट अच्छे जे आम शुणा से प्रति असम्मान हो जब न बसवा ये है तेणु आप समस्ते बसी पड़ू कृपया कर समस्ते बसी पड़ू कि बाहर को जातुनि। आई रिक्वेस्ट नाउ अर्चेसमैन स्टार्ट। So, good evening everyone. Namaskar. My name is Archesman Mahapatra, Executive Director, Grid Council. By education, I am a medical doctor. I have 15 years full-time public health and epidemiology research. I am Noida Ruhe. Sunao ni? Aao pakku. Mic nahi kuchi. Sunao ni?
Am I audible? सुना हो जी? Perfect, ठीक ଅଛି। तो मोर इंट्रोडक्शन तो दे सारी ऑलरेडी, बट मो पाखरे जो मैंने बसचंदी दे आर वेरी एस्टीम्ड, वेरी एक्लेम्ड। लेट मी रीइंट्रोड्यूस देम। टू माय लेफ्ट is Dr. Bishnu Prasad Panigrahi. Sir is the Group Director of Fortis Hospitals. To my right, I have Dr. Pavan Gupta. He is the Director Surgical Oncology, Max Institute of Cancer Care and founder ICAN Care. So cancer patients who sir operate karanti, our ICAN Care is very famous in terms of cancer related mobilization, education and tobacco quitting and all. I have Dr. Ashok Chaudhary. He is the additional professor. He is an additional professor at Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. Sir, transplant hepatology रे काफी famous. Plus निजर organization through रे भी ILPF through रे बहुत अधिका social mobilization करंती liver education, liver health related, right? So what we will do is we'll try to keep it non-formal, sir, and engaging. But before we get started here, let me ask you a couple of questions. Like, you just need to raise your hand, okay? आपण मान भीतर केत जण भाबंती जे ओडिसा रे हेल्थ बहुत रैपिडली इंप्रूव करूची। Population health, yes. Only two people? 3, 4, 5? Okay. You also feel so? Yes, madam. Yes, acknowledged. केत जण भाबुचंती जे ओडिसा रो लोक माने बेसी अल्कोहल पियंती कि बेसी टोबैको नियंती एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया? मेजॉरिटी। इंटरेस्टिंगली आमर आज जो प्रोग्राम अच्छी विजन 2036 2086 विजन मीन्स विजन इज रिलेटेड टू लीडरशिप, राइट? So we need to evolve as leaders and somewhere we need to develop vision. And our population is about 4.3 crores. India ra pakhavaki 3%. India ra 140 कोटी संग compare कले 3%. We are just 3% of the population, but we are making fantastic name, right? आज जो 20-25 वर्ष तले जेतले मु मेडिसिन रे पस्थिली ओडिसा रे टोटल 3टा मेडिकल कॉलेज थिला, आज रो डेट रे 15टा मेडिकल कॉलेज अछि, right? So we have improved, fantastic. Congratulations to ourselves. Right? Yes. How's the Josh? But hi. Okay. Right. So with this context, we also need to know that hypertension बढ़ुची, diabetes बढ़ुची, under 5 mortality हमरो कमी ची, किंतु neonatal mortality, maternal mortality high अच्छी. So complex challenges. 15 वर्ष रे बहुत rapidly हमें grow करिचे, improve करिचे, but very complex challenges. With this background, let me get to my first panelist. Sir, Odisha is at crossroads. We know we are improving, but we are at crossroads. And over the past 10 to 15 years, the state has like evolved leaps and bounds, both public health sector रे, private health sector रे भी. बहुत private medical colleges, private corporate hospitals भी आसी जाइए. माने आपण सर गोटे corporate hospital रो director, chain of hospitals. Now suppose ओडिशा तार हेल्थ केयर डिलीवरी बढ़ावा पई चाहूची कि चाहूची सबु लोक हेल्थ केयर को एक्सेस करि पारंतु, एथिरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दी जन को रोल अछि. बट आपण केमिति भाबुचंती माने हाउ टू सिनर्जाइज दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड आल्सो इंप्रूव एक्सेस? व्हाट चैलेंजेस एंड व्हाट विजन वुड यू हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य को धन्यवाद करी कि मते मंच निमंत्रण करचंती. एंड टू डू जस्टिस टू प्रवासी ओडिया एंड द विजन, आई वुड लाइक टू से समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ प्राउड ओडिया. इफ आई एम सक्सेसफुल, ओडिशा माटी रो उठीची, एससीबी रो आसिली, दिल्ली पीजी कली, चित्रा रे ट्रेनिंग नेली, न्यूजीलैंड ट्रेनिंग ले. 10 वर्ष मु लेक्चरर थी एससीबी मेडिकल कॉलेज रे. नॉट दैट आई एम अ कंप्लीट कॉर्पोरेटाइज्ड डॉक्टर हियर. 10 वर्ष लेक्चरर थी. तापर last 30 years I have been working in Apollo, Fortis, Max, सब जगह आरंभ करके I am now heading the medical operations for the ऐसे. अच्छा, मोर कहवा उद्देश्य है कि that हम आगो सेशन रे, it is a very interesting session. Health and education मोतरे it is the society रो सबुतर important pillar. But एबे कौन है कि समस्त आम वॉक द टॉक करूनु, खाली टॉक द टॉक करूचु, भाषण चलचे खाली. आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर. वी आर
not even 4% is in education, not even 4% is in health. Across the country, dekhibe. Kintu, and the other thing, pardon my words, because it is not a political, doesn't have political relevance, so the powers to be are not focusing on this. So the accountability is also at the background. If you have to do justice to this thing of Vision 2036, our 13 years rahila, jebe Odisha 100 years habo. So what are the things to do? So my first pitch is that if you look at going in 10 years after Odisha got its identity, 1946 re good ICS officer thile tanko na hala Mr. Bohr committee report 1946, 1 year before independence present hala. That is a very good template which the Indian healthcare setup took up. Tara basic foundation thila primary healthcare, which will cater to about 40,000 population. Dita doctor rahibe, nurse rahibe, public health by focus thila, sanitary inspector rahibe, chatta midwife rahibe, dita dai rahibe, ta pura rahila secondary health. So these are the two basic things. Not that बहुत कम हो Indian healthcare sector. This means कुछ भी that our mortality, your longevity has increased from the below 50s to nearly coming up to 67 to 70 in some places. So a lot of good work has happened. But if you have to do justice to the Vision 2036, my first pitch is that the Bohr committee is a very good document. We should not trash. Majority कहने कि हमें नया document डालने में we थोड़ा फोड़ दो dustbin रे and we look at. So the Bohr committee report is a very good template. So if the basic healthcare जो हम करीबा at the primary health center, secondary health center, that will help us because the previous session रे होतला we have now become the largest country in the world. We keep talking about demographic dividend. But what does the demographic dividend require? They require education, they require how do we keep them healthy. So the workforce will be from the age group of say mid-20s to the 50s, for example. That is the core age group. How do we give them the proper education? So the skilling has to be very well. Just giving them a degree is not enough. Which came up that how do we make them skilled so that they'll be the proper workforce. How do we make them, keep them healthy? So this is where our healthcare system comes in. So the primary and secondary is something very important that has to be focused on. That is another thing. Rightly said, आमे पास कला लोग 3टा मेडिकल कॉलेज थिला मात्र एबे सरकार भी बहुत मेडिकल कॉलेज कलानी प्राइवेट भी हलानी मोर कहबा उद्देश्य हला एबे आपण जे ओडिसा मैप रे देखिबे एबे मेडिकल कॉलेज गुडा को अन्य विभिन्न ज्योग्राफी रे अछि एबे if the hub and spoke model can be done where the medical college is the main hub and attached the surrounding area let the administrators and in the senior IS officers who are taking care of that, the healthcare administrators there, map out that and let the respective medical colleges, state government medical colleges become the hub where there will be a seamless transfer of knowledge, patients, training. That if that interface can happen, that's a very good way to start it. Now, public health public health is now being pushed at the background. Delhi रे अछंती आपण लुटविन्स दिल्ली देखंतु because that same time रे planning हेइतला एतिके वर्षा हले एतिके rain water storm water drainage हवा कथा सेतिक पळेबो. But if you look at all the new areas as India is becoming more and urbanized, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ sanction କରୁଛୁ, public health planners have to be also involved. These public health planners involved hebe, we will give a good support to the society there, who will Delhi one of the reasons of every alternate years, every third year, huge dengue outbreaks. And one of the reasons is this, improper planning, and this is not confined to Delhi, it's both state halani. So more कहबा कि ओडिशा भी it's still a rural economy, but आस्ते आस्ते urbanize होची. So as urbanization increases, because it is a time now, जो दिल्ली हे गलाने में कुछ change कर पाइबानी, ओडिशा रे जेमिति urbanization बढ़िबो. So my humble request is that before that we must see that the urban planners and the town planners, they go hand in gloves, they plan it out before they give approvals. So this is there. I would just कहले about
diabetes and hypertension. This is a major issue that's coming up. So again, to keep people healthy, अपन देखिए most of the important causes of kidney failure जो होची दीटा कारण diabetes and hypertension. These can be controlled. But at the so if हमारे health के जो primary health care, secondary health care center उड़ा का मुझे ठीक ये करीबा and now that is where technology comes in. Technology is an enabler. Now with this data being captured, you can map out each and every patient coming in, तार blood sugar trends कौन अच्छी, because समस्त का प्रकार glucometer होची, diabetes है so glucometer Bluetooth ये अपन मैंने that connectivity से जे अपन डॉक्टर थी वो से जानी पारी वो कितना sugar अच्छी कितना, so they controlled a well controlled diabetes will help you prevent you having kidney issues, lung issues, eye issues, brain issues, everything. I would tell same thing with blood pressure. A well-controlled blood hypertensive behaves like a normotensive. So, I think so. This is something that we have to do. And another thing which came up is that we must work in unison. And Sarkar samaston ko job dei paribani. Jodi kahiba that, then we are fooling ourselves. So, Sarkar has to be the enabler. They have to see that people are taken care of, good governance. Healthcare is a very good employment generator. One is to keep people healthy, the second is to be employment generator. Any hospital dekhibe, more than 60% of the workforce are ladies. More than 60% of the workforce are ladies. A lady taking home money spends it properly. We men don't spend it properly. हम लोग थोड़ा फुजूल का खर्चा करते हैं. मानिए दिल पे हाथ रख के बोलिए. So what I'm saying is that female employment, we talk about female employment, female empowerment. Healthcare is another modality to work on it. Inside the healthcare setup is one part. Outside the healthcare ecosystem, there's another chain who benefit. Right from the auto drivers to taxi drivers to the small people who provide meals to the people who supply equipment to the hospitals. So there's a huge ecosystem outside. So my request is that health and education, let us urge the government to keep a thing up by 2026 to increase our budgetary allocations from 4 to 8% in health and education respectively, and work backwards. What are the things to do? So this is my submission. Thank you. I just missed out on something. I'm sorry. Public-private partnership. 2 years I was fortunate to, I had gone to Bhubaneswar as the CEO for KIMS. And that time, COVID broke. And it was a wonderful initiative of the government to get the private players to come in. So it was a public-private partnership. We started with KIMS. I was the CEO of KIMS that time, of setting up 500 beds in Bhubaneswar, 200 in Baripada, 200 in Balangir, and 150 in Pulwani, with wards and ICUs. So, and this was replicated with others, with some, with Ashwini and others across the state. So, unlike Delhi, आपण दिल्ली रही आपण मन पकांतो 2020-2021 रे लोक दौड़ुले कोर्ट को जिबे बेड पाई ओडिसा रे थिला बेड डेडिकेटेड कोविड बेड्स थिला. So, public-private partnership has a role. Please, so let us work together. We should not be that private is just taking the big bucks and going away. No, private is also part of society. Thank you, sir. Broadly, you touched upon so many issues, but I'll flag a couple of them. One is innovation, as he said, like we need to innovate PPP models and other frugal resource mobilization, whatever you say, efficient models. And at the same time, a strategy लगाया पड़ेगा हमको, कारण हमारा बहुत rapid progress भी कराया रही plus synergy भी आने रही सब विसारे. So unison, we must work in unison. Public health and then public health capacity engagement, board committee, at least meeting those standards and going beyond IPHS standards. So fantastic point, sir. Well taken. Audience को मैं request करी भी जे आपने टिके attention दियो तो हमें भी चाहूँ जो time टा को catch up करिया पाएं because we are running late ना session तो हमें catch up करिया भी चेष्टा करूँ. My next question to you, sir. आपण इतने social entrepreneurship रे involved अछंती and एक रकम बहुत active अछंती as a प्रवासी ओडिया. आपण कौन लाउच कौन करेगा था हमको माने हम स्टेट पाई और बाहर रही कि भी हम कौन कर पारे. थैंक यू. मु प्रथम कहबी पीओभीएस सूर्य भाई
सूर्य भाई टिके बसवा पड़ो आपन को एंड ऑल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स मुझे समझ रिक्वेस्ट करी कि पॉइंट्स अच्छी मुझे 16 पॉइंट्स आपको देवी से टिके फोकस करूँ आज आम डिस्कसन शुड गो एज ए फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज ए विजन मुझे दुटा पार्ट कर गोटे लगे टारगेट 2036 बिकज 86 हम जानने पहुंचे बट दैट मे बी द विजन बट टारगेट भी 2036 प्रथम है कि रूरल हेल्थ सबुठ फास्ट जिन दरकार इंडिया लिव्स इन कंट्रीज 70% लोक रुहती गाँव में किंतु 70% ट्रीटमेंट इज सेंटर टू द अर्बन सेटा को जीवार अच्छी सो फास्ट इज रूरल हेल्थ स्ट्रेंथनिंग द रिवर्स ट्रेंड आम भावा कि लोक गाँव में रही गाँव में ट्रीटमेंट हूँ कहीं से गाँव में गोटे लोक ट्रीटमेंट है से जो रहा फार्मासीस्ट भुवनेश्वर टाउन आस धक्का खाऊँ 5,000 टका दरम पाँच रोचे रास्त खाई पाऊनी से 5,000 टका से गाँव में दरम पाइब लोक सर्विस देके राजा भाया चली पार ता निज घर रही तो रूरल हेल्थ स्ट्रेंथनिंग शुड बी द पॉइंट 1 देन मुझे कहबी इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन सबुठ आमर हो कि सेक्टर इनवॉल्वमेंट हेल्थ रास्ता जाऊँगी एजुकेशन रास्ता जाऊँगी रोड से जाऊँगी आपड़ जानते रोड एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कज ऑफ ब्रेन डेथ जोठी आम ऑर्गन डोनेशन करिपरिबा किंतु ना कोऑर्डिनेशन हो पारुछि होउछि आउ गोटे जिनस चीनी पुलिस चाइना पुलिस घरे छोट छुआ को शिखेले कि बापा तो घर बाहर जब हेलमेट पिंधिबेनि घर जावाई तो मना करूँ आम एटा को जब एजुकेशन रे करि पारि थांते हेल्थ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन करिकुलम इनवॉल्व करि पारि थांते बाय इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हुए तो आम गुड़िए पब्लिक हेल्थ को एड्रेस कर जोटा आम डिस्कसन करुचे आम जाचे पेट बढ़ले बड़ हम छुआ सब बापार पेट पर कूदी मार कहे बापा पेट बढ़ुची एटा कम कर तो बापा सब भावे हाँ गला बेलू मुझे कौन करुच्ची बोलिकी सो लॉट ऑफ थिंग्स आम घर स्टार्ट कर जोटा कि आम कहे इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हेल्थ एजुकेशन हेल्थ अदर डिपार्टमेंट सबको इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन तापी दरकार थर्ड रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आम समस्ते कहीदे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी बट रेस्पन्स आम कौटी नौचे आप मन थी वर्ल्ड हेल्थ देला 1,000 कोटी टंका ओडिशा रे सबू हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स दिजापी मुझे थी कोरापुट रे वर्षे पे मो हॉस्पिटल रे एवरीथिंग लेटेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थुआई बट सब ताला पाँच जम पड़ी कहीं से किए यूज कर जानी क्या यूज कर जना नहीं यूज करा फैसिलिटी बिल्डिंग रे इंस्ट्रूमेंट आसिकला लाइन दिन को 18 घंटा कटुची कौटी करेंगे 3टी स्टाफ आसती से कम करूना कहीं ट्रांसफर होती रिलीवर कहीं ना ओडिशा कटक कोरापुट कटक आसी पारना लैक ऑफ इंटरेस्ट तो याकू एड्रेस करने को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई ऑल थ्रो देन फोर्थ इज कैपेसिटी बिल्डिंग आम कैपेसिटी इज नॉट द बिल्डिंग मुझे कहि अच्छा एस्टिम्ड पीपुल्स कि आम एम्स प्लस करुचे भुवनेश्वर रे सॉरी एससीबी को करुचे कि इट विल बी 3,000 बेड मोर फैसिलिटी देन एम्स अरे भाई आम समस्ते बुझे बिल्डिंगटा कले हॉस्पिटल हुए आम समस्त को लगे कि बड़ बिल्डिंग मैंने भीतर सब भल थी इट इज नेवर वी नीड ए गुड टीचर गुड स्किल गुड आज से करेंगे आज दिन में डॉक्टर आप देखूँ मुझे हेल्थ सेक्टर में बेस्ट डॉक्टर्स आप 40 ना शुणुवे सारिज ग्रुप डायरेक्टर आउ आम ओडिशा पे 40 चाहिए सर केवे भी जापरेंगे तो आमर आक्रस देखो जो प्रति सब्जेक्ट बेस्ट डॉक्टर्स नॉट इन इंडिया आम गोटे ओडिया डॉक्टर्स ग्रुप भी करूँ आक्रस द ग्लोब अच्छा नो मायो जो आम कहूँ वर्ल्ड सब बेस्ट ता भीतर आम 4टा ओडिया डॉक्टर अच्छा कहीं ना आम से नहीं पार सेटा को आम करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रथम है कि आमर जो आजिकल दुनिया में आशा सिस्टर अच्छा जदि आशा सिस्टर जब जान लगे गोटे ग्लुकोमीटर नहीं गाँ गाँ बोलिक सुगर टेस्ट कर तो डायबिटीज आम से प्रिभालेंस स्टडी कर कम्युनिटी स्टडी हो जो आप दमन मूवी देखिले मलेरिया है कहीं है इट इज सिंपली कैपेसिटी बिल्डिंग गाँ लोग घंटा देकी बसले भी मशारी नहीं जाओ शुओ बर्तमान प्रथम मशारी लोग तो मशारी टाणी न जोड़की से कौन खेले टेनिस खेले कौन जो भी खेल होता तो दिस इज ग्राजुअली वी इनवॉल्व सो दिस इज द कैपेसिटी बिल्डिंग वी नीड सेकेंड जोटा सारे कहते लाइवलीहुड आम हेल्थ को आज पर्यटन भाविना गोटे सोर्स ऑफ इनकम लाइवलीहुड बोलिक कहीं आप भावतु आज दिन में इंडिया रे जो ग्रोथ होची अर्बन पर नेक्स्ट विल बी फ्रॉम द रूरल आउ रूरल 70% विल बिकम अर्बन तो केते ट्रांजिशन हम 140 crores अच्छी जदि हम भावुचे 36 बेलू मे बी 170 crores द पॉपुलेशन विल इक्वाली मोर आउ से आमको दरकार लाइवलीहुड केमी हो पार आप सिंपली भावतु गोटे गाँव में आजिकल मुझे मो गाँव में कहूँ से गाँव में गोटे डॉक्टर पाखे से पिलाटी जाइए 10वीं पास कर 4 वर्ष रहा क्लिनिक रे कंपाउंड किसी ना बट से गाँव में सी सब बड़ डाक्तर ट्रीटमेंट 24 आवर अवेलेबल अच्छी सो दिस इज हाउ कैपेसिटी बिल्डिंग आम जब करें डॉक्टर करने फैसिलिटी पे लेट जो गाँव में फार्मासीस्ट गो गाँव में जो नर्स जी हॉस्पिटल अटेंड अच्छी आजिकल ट्रेन करा आप जानते मुझे कोरापुट से फार्मासी से करे खून सफा
खून सफा माने गोटे इंजेक्शन से दिज्व मल्टीविटामिन इंजेक्शन दब हलदिया होगी सालाइन दिला परिसर सब विटामिन हलदिया बाहरी गले कहले तो खून सफा हो गला रोग ठीक हो न हो किंतु मेंटली बूस्ट तार अधा रोग से गुड़े पड़े जाऊँ दिस इज हाउ वी कैन मेक ए रूरल कैपेसिटी बिल्डिंग केमी कर लाइवलीहुड देकर तापर एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम लोकल टू भोकाल आपण भावतु जो आम एंटरप्रेन्योरशिप करुचे मैन पावर दरकार हो फास्ट आठू सस्ता कोटी गाँव में मिलबनी आपण आज भावतु आजिकल गरम दिन कटन ड्रेस दरकार हो मेडिकल भी कहूँ कटन ड्रेस सब ग्लोव्स तैयारी होमर आम ये भुवनेश्वर करा कौन दरकार आप जातु आम गाँव में करूँ कोरापुट कलाहांडी बसतु आप करेंगे से कम लोक आवेलेबल आपको आराम से मिले 200 टकर लोक मिलजे आम करें बर्तमान गाँव तो सब खाऊे फ्री में मिलूँ बसी पड़े बर्तमान गाँव लोक मिलूना किसी करने व्हाई वी नॉट इन्वॉल्व देम फॉर दिस कि आमर गाँव केमी आम करें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप देन सेकेंड इज अफोर्डेबल एंड अवेलेबल हेल्थ ताको अफोर्डेबल करने एवं देखो जनौषधि आसला गोटे जिन आसला आ थ्रोरे आम केमी अवेलेबल आउर अधिका कर दैट इज अफोर्डेबल हेल्थ आउ अवेलेबल भी हबार अच्छे सस्ता कले सुविधा सब लोग दिल्ली आसपर नहीं आम कहीं आसवा चाहिए कि ओडिशा रु दिल्ली कहीं आसवा कहीं हैदराबाद जावा आप भावतु ओडिशार 50% पेसेंट भाईजाग इवेन भाईजाग सब हस्पिटाल ओडिया ना लिखा पुरी जमी लिखाई होटेल बंगाली सेमती हस्पिटाल लिखाई ओडिया ना लिखाई भाईजाग बिकज मेडिकल टूरिज्म से आम आम निजर करूने आम करें आम पाखे डॉक्टर्स अच्छे आम फैसिलिटी अच्छी आम से फोकस करने चाहूने तो दैट इज व्हाट वी नीड अफोर्डेबल हेल्थ ताकू केमी करवा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोशल सिक्यूरीटी जोटा है बट एबे भी जो ओडिशा आमर 2-3टा पब्लिक हेल्थ स्कीम आसलानी ताद्वारा हो पार्टी मेक इट मोर रोबस्ट आपन थ्रू कहवाक चाहिए कि वी कैन मेक मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लोक पहुँचा बहुत जल्दी जो आपड़ टंकाटे 2 टंका जो 12 टंका देकर 5 लाख लेट सेटा भी होने पर्यटन लेट कवर देम कि मेडिकल इमरजेंसी गोटे एक्सीडेंट हेल्ले खर्च 10,000 हेनी बट से आपड़ जानते इंडिया रे खर्च होची आम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आज दुनिया में गोटे लोक हॉस्पिटल गले ट्रिटमेंट निज पैसा दे कर 60% फेर फॉरेन कंट्री इज लेस देन 2% क्या से इंश्योरेंस आप ट्रिटमेंट करेंगे आपको 5 टंका पड़ो जो निजे कैश देवे 25 टंका 5 गुणा पैसा पड़ो बिकज दे वांट टू प्रमोट कि इट इज ए सेफ सिक्योर फ्यूचर एक्सपेंसेस तो वी नीड आउट ऑफ पॉकेट मिनिमम तो आज डेट रे नेशनल इंडिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 54% आउ ओडिशा होचे 66% ओडिशा ताठू अधिका खर्च करुच्ची माने आमे समस्ते करुचे निजे मेडिकल गले निजे दौचे बट व्हाई आमे ताऊ काहे इंश्योरेंस कर पाने तो अवेलेबल हेल्थ करा पे गेले क्वालिटी हेल्थ 40 से आसिया पे गेले आमे एम्स पे धक्का खाइबा अपेक्षा वी कैन गेट इजिली ट्रीटमेंट वी कैन गो फॉर इंश्योरेंस तो सेटा को आमे केमिति करि परिबा बहुत कम्युनिटी इंश्योरेंस अछि जेमि देवी सेठी करथिले तांकर बेंगलोर रे कि सेही हॉस्पिटल सराउंडिंग समस्त दिन को टंकाटे लाखे देबे दिन को टंकाटे लाखे देकी लेट इंश्योर योर हेल्थ फॉर द लाइफ आपन जणा पर टंकाटा आपन देले भाई खराब लागो केबे लागो नहीं वर्ष को 365 देले आपन हेल्थ हैला तो मु सेटा को चाहूची कि आमे सेटा केमिति करि परिबा देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहउची सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आपन एते समस्त गोटे एनजीओ अछि एनजीओ मैंने बहुत किसी काम कर आउरी टिके फोकस करूँ हेल्थ बेस्ड नीड बेस्ड आम से केमी करवा एंड शुड बी रूरल फोकस्ड कि सही लोकंर प्रोब्लेम से सल्यूशन थ्रो दी करें आप गोटे सिंपल जिन कहबी रक्तबिंदु केमी आसले जानती सबुठ इंडिया सबू यंग झील मानकर हिमोग्लोबिन कम हुए तापर कारण क्रम है एक्सेस ब्लीडिंग आ गोटे आयरन डेफिशिएंसी कुर्मी जो आयरन केमी दिज्व लोक आयरन टैबलेट दिहला से नहीं चाल पोद देकी पड़े डाक्तर सरकार देले मागणार खाया तो सेठी केमिति गोटे एनजीओ आसला नेट बेस से कौन कला रक्तबिंदु माने आमर जो टिकिली पिंधुचे टिकिली भितर रहला आयरन इंजेक्शन सेटा लगेले सेथुर आयरनटा बॉडी भितर को जीवो दे गॉट हिमोग्लोबिन तांकर इंप्रूव होला सो दिस इज वेयर द इनोवेशंस नीड बेस्ड सोशल सेक्टर रे आमे करि पई सेल्फ रो चेंजेस आनी परिबा देन सेकंड हेल्थ टूरिज्म ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एडवांस हेल्थ इंस्टीट्यूट इन स्पोक एंड हब मॉडल आपण भावतु जेमिति मु कहली कि आईएलबीएस को ओडिसा डेली आसुनी ट्रांसप्लांट पे कि एम्स आसुनी 40 जाउछंती आमे व्हाई नॉट डू ए सिंगल ओनली इन ओडिसा आमे जदि 800 कोटी टंका गोटे करि पारिले बहुत बड़ हॉकी प्रोग्राम फॉर 1 ईयर आमे 800 टंका 800 कोटी रे बहुत बड़ गोटे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट करि परिबा जो मु कहूची मो दिल्ली गवर्नमेंट आईएलबीएस जो हेची वन ऑफ द बेस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर टू हैव अ इंस्टीट्यूट लाइक दिस सेटा भी सिंपली स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर जो हैला एंड इज कवरिंग आम से भाई जब गोटे ओडिशा रे कले लेट 30 डिस्ट्रिक्ट आम 30टा हब मॉडल हो बिकॉज नाउ टेलीमेडिसिन इज अवेलेबल एवरीवेयर लेट द डॉक्टर वन गो देयर और नो देन टेलीमेडिसिन कैन कनेक्ट वेयर वी कैन गिव क्वालिटी अफोर्डेबल अवेलेबल हेल्थ इन आवर होम स्टे टू एवरीवन
That is what I can say. And for this, we need extensive digital health and telemedicine help. I think things has picked up during COVID. आमे एटा को आगु बढ़ेबा डिजिटल मेडिसिन टेली हेल्थ केमिति हेई परिबो आउ मोस्ट इंपोर्टेंट हैला नेक्स्ट इंपोर्टेंट इज अवेयरनेस एप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव मीडिया मु आज पर्यंत कहबी डाक्तर मान जति काम करंती आई नो मु डॉक्टर बोली कहू चाहू नहीं बट भाबंतु आपण को जगह जिबे गोटे प्रोजेक्ट बनिबो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनिबो काम आरंभ होबो बट गोटे कॉम्प्लिकेशन आपण नै आसबे से डॉक्टर पाखरे आपण बसबे ही हैज टू गिव डिसिजंस विदिन 15 मिनिट्स सम हिस्ट्री सम एग्जामिनेशन सम ट्रीटमेंट द पई स्टिल वी आर नॉट एबल टू एप्रिशिएट देम समस्ते खराब नथंदी देयर इज ब्लैक शिप्स इन एवरी प्रोफेशंस इन एवरी वर्क बट आमे माने डॉक्टर खराब को कहले गूगल रिव्यू डॉक्टर खराब रे देले किंतु भलर केबे दउने मु सेति में रिक्वेस्ट करे समस्ते लेट एप्रिशिएट बोथ द थिंग्स डू एप्रिशिएट द बैड आल्सो एप्रिशिएट द गुड आल्सो सेटा को बैलेंस करले गोटे डॉक्टर भाई काम कराबे काहे कि आज डेट रे मो कहबी जते पेरेंट्स बसछन्ती केही चाहता छो डॉक्टर पढ़ा पे इवन फैक्टली मो पो पढ़लानी मो पो आमे दिजो डॉक्टर हला बसे मना गला बाबा मो डॉक्टर हेबी नहीं बिकॉज दे सी व्हाट द सफरिंग्स वी गो फॉर आ जो पेरेंट्स माने डॉक्टर अच्छे से जानते छुआंकर कौन हालत तो ये दिन को दिन कौन हो मेडिकल ट्रीटमेंट रे क्वालिटी स्टूडेंट नंबर एवं कमुची आज मत भी डर लगुच मु रोग हेबी से मत जे ट्रीट को तार कैपेबिलिटी कौन थी आज जो सिस्टम एवं बुमेरांग होती मु ग्यारंटी दूसरी 2070 बेलू आम जो बुढ़ा हाँ से बेलू मेडिकल हेल्थ विल बी ओनली कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड नो इमोशन नो टैलेंट बेस्ड जोटा एबे अमेरिका फेस करुच्ची अमेरिका गले डाक्तर कहीं देखु ना से डाक्तर देखते कौन 50टा टेस्ट कर दिया गोटे रिपोर्ट देखते हो जाइटा आसूँ कहीं कहीं ऑपरेशन कले कहीं जावाक चाहिए बट नाउ द बेस्ट ब्रेन्स आर मूविंग कहीं से गले सेकेंड है कथा गोटे डाक्तर है बेलू सी जीव गाँव को आउ सी मागणार पैसा मागणार जो ट्रीटमेंट कला ऑपरेशन मीडिया बाहर कि गोटे इंजीनियर गोटे कोटी पाइला गूगल जॉइन कला से आसो मीडिया तो दिज सांग जो पढ़ले द ऑपरेशन वाज डिफरेंट कि तू डाक्तर जो जीवन जाक फ्री सर्विस दब डाक्तर छुआ अच्छी डाक्तर फैमिली अच्छी तो सी गाँव को जावाक पड़ो मागणार करा पड़ो कि सांग बाहर कर मुझे मीडिया मानू कहि प्लीज ट्राए कि सबू डॉक्टर मान सबू स्टोरी बिहाइंड आ गोटे स्टोरी थाए आ सेटा को अप्रिशिएट करूँ देखिए डॉक्टर मान सोसाइटी में चेंज आसो आ बहुत जिनस हो पार लास्ट वेलनेस जोटा को आम प्रति गाँव में पहुँचार अच्छे जोटा भी सार कहते प्रिवेंटिव हेल्थ आमको दरकार आम सुगर है ब्लड प्रेसर हार्ट अटैक है ट्रीटमेंट कले लाइफ अधा चीज पड़ेगा आइदर पेन रे पड़ेगा या पैसा पड़ेगा लेट प्रिवेंशन टू स्टार्ट योगा डाएट न्यूट्रिशन हेल्थ यहाँ को आम आगू नहीं पार तो यहाँ मोर 15 पॉइंट्स थिला मु होपफुली करी पॉइंट्स के नोट करेंगे कैन आई सर्कुलेट यही बेस रे किसी सॉल्यूशन सजेशंस फ्रॉम पीओबीएस शुड गो टू द पॉलिसी मेकर्स Thank you, Ashok sir. Very comprehensive points. 15 points. 15-point agenda. We can enrich further. We have some more points. We'll add to it. Some reality check. India re पाखापाखी 30% जदि अर्बन 70% रूरल ताले ओडिशा रे 83% रूरल गोटे डेलीवरी पाई जदि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया 3000 टका लागुचे एवरेज ओडिशा रे 5000 टका लागुचे सो डेफिनेटली देयर आर माइल्स टू कवर पॉइंट्स वेल टेकन सर Pawan sir, I have some questions for you. You engage with a wide, like so many stakeholder constituencies, and you also know कि आमर रथ बहुत जोर बढ़ी चलची गड़ुचे राइट बट आम रथ एक्चुअली गुंडीचा मंदिर आड़ को जाऊँगी कि आउ कड़े जाऊँगी राइट एंड जदि आमको गुंडीचा मंदिर आड़े नबार अच्छी by 2036 with a vision for 86 as well, what are the capacities that we need at different levels and what technology we need to adapt? Thank you, Arisman, and we have Dr. Vishnu, Dr. Ashok giving such comprehensive thoughts that what is the requirement. My question to everyone here, I'll just debate it 1 minute. How many of us sitting here are health conscious? No, I'm asking how many are health conscious in the sense everyone wants good health. समस्ते चाहते मोर हेल्थ भल रो बट हाउ मेनी आर हेल्थ कॉन्शियस दैट एवरी वन ऑफ यू हैव डन एटलीस्ट वंस ए ब्लड शुगर एक मिनट सुन लो हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ब्लड शुगर इन योर लाइफ टाइम जस्ट लुक एट द नंबर्स मैडम जी आप जो बोल रही थे आप देखो उठ करके कितने लोग हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर ब्लड प्रेशर इन योर लाइफ टाइम इन लाइफ टाइम आई एम टॉकिंग बट वी हैव टू डू एटलीस्ट वंस ए ईयर ठीक है Can you see, Madam ji, what is the situation? So, what is important is we can be idealistic.
वी कैन बी आइडियलिस्टिक, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वो जी ऐसा करेंगे, हम उनको एडवाइस दे देंगे, बट वी हैव टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Excuse me, can thoda sa voice, can we, yeah, can we maintain little discipline? Okay, thank you. So what is important, okay, so what is important is taking responsibility, not giving responsibility. Let us all, जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, all those who are sitting here, let us take some responsibility that we will first take care of our own health. And own health, as wellness, Ashok said, holistic health is one of the most important. You don't have to go to the allopathic doctor, you don't have to go to Fortis, you don't have to go to Max, or you don't have to go to ILBS. But doing a simple things for yourself. See, Odisha is going to increase. Odisha lifestyle is going to change. We are going to develop. No one can stop us from development. We will have the best of the trains, we'll have the best of the cars, we'll have the best of the, every house will have a fridge, every house will have a TV, every house will have everything available. Every person will have 2 mobiles, right? But are we health conscious? We have to take responsibility. That is what is important. If we are looking at 2036 and then we are looking at 2086, lot of changes are going to take place. We are now at 5G. Maybe at that time we may be having 10G. We will be the fastest people in the world. India is going to grow. India is not going to be stopped by US or anyone. And Odisha is going to grow. Definitely Odisha is going to grow. But with all sitting here, until as we take the responsibility, I am not saying each one of you have to take the responsibility. Yes, I am going to do something for the health, and of course the education is another part, but everyone has to take the responsibility. Just let me put it one simple thing. 10 years back, when the study was that the tobacco consumption was only 37% population. Right now, it is 51.5% population are taking tobacco in India, in Odisha. It is much higher than the Indian level. And we know one single thing, tobacco is going to be the biggest hazard. It is causing health problem, it is causing financial problem, it is causing environmental problem, it is causing family problem, it is causing professional problem. It is the biggest problem in the world. And it is percolated down in every corner of India, of Odisha. Person doesn't have food to eat, but he will definitely take tobacco. Right? Hypertension, diabetes is another area which is increasing. It is increasing. So if we are looking at 2036, first and foremost is we have to take responsibility कि हम अपने आसपास सभी को educate करेंगे. See, literacy and education is 2 different things. We may be literate, but we are still uneducated. We may be having MBBS degree, we may be having MS degree, we may be having MCH degree. We may be literate. We have got lot of degrees. So many degrees are available. You can pay something and get a degree, right? But education is very important. Educating everyone is very important. So when he says percolating down, the education has to start from the school, not from the hospital. Education has to start from the, he's saying how to develop, how to make a health. So like moral stories that we used to hear during our childhood, moral stories in the school, similarly health should be a part of the curriculum in the school for the teachers, that they should be able to teach to the children how to manage a good health, a good lifestyle in the future. Obesity is increasing in Odisha. It was never there. Obesity was not there. We were always thin and having well-built people, but obesity is increasing. Obesity is going to cause. So lifestyle diseases, I'm going to stop now, I know. So lifestyle diseases is very important. My one very important request to everyone sitting here, are we ready to take responsibility? Yes. How many? How many? I still think that young children are not ready to take responsibility, right? Every one of us have to take responsibility. Then only we can change from 2036 to 2086, when we will have, what I foresee is that we can have a virtual hospital. Virtual hospital, as he was saying, digitalization, I visualize a virtual hospital where, like Paytm, I see on my mobile, I want to contact any person. I want to book a bus in somewhere in Tamil Nadu, I can book a bus on Paytm, right? Similarly, if we have some mobile application which is a virtual hospital, I want to reach out Dr. Ashok at Delhi from sitting in say Dhenkanal district, somewhere in Dhenkanal,
I should be able to do it. Right? That type of visualization we should look at 2086. We don't have to go to Fortis Hospital. We don't have to go to any physical hospital. We can reach out. We can do everything. We can get ourselves treated at the most, because the most important part of expenses, health expenses, is travel and food rather than just the management. So I stop here. Thank you so much. And I look forward. Every one of us have to take responsibility and not just give responsibility. Thank you, Pawan sir. That's a very good pitch to all of us. See, in health economics, what we do is we convert everything to dallies and callies. So when the population falls sick, we lose a lot of economic over there, right? We have this responsibility of not falling sick. We as Odias, if we take care of our health, our state will prosper, will grow rapidly. So we take charge of that, sir. Thank you for this point. With your permission, what I'll do is, I have more questions for you, but I'll cut it short now. Let's engage with the audience if they have any questions. So, jodi apan kichi, sir, ha. Time hochi ta pakhare gote two questions. So, before I hand over to audience, I have a quick question. Generally, mo Barampur ase. So, suppose more immediate family member ko kichi hoigala, mo more state government ro medical ko pura bharosa na kari mo immediate Vizag chale जाए अबा नले हैदराबाद जाए सो सेटा कहीं हुए माने आम मान भितर यही भावनाटा कहीं आसनी कि आम डॉक्टर्स आम मेडिकल फैसिलिटी एत भल था कि पारुनी सो ये क्वेश्चन मुझे जानवा चाहूँ सो कैन आई आंसर मो ना गोवर्धन धल नहीं नहीं मुझे आंसर करोशा जो कहते ओडिशा लॉट स्कीम्स हैव बीन रोल्ड आउट ये जो विजु स्वास्थ्य कल्याण जो रोल होती आपड़ जो से ये करेंगे यू कैन गेट सर्विसेज ओडिशा रे मिलिबो आ जो सर्विसेज नथिबो बाहर भी बाहर स्टेट रे भी से किसी हॉस्पिटल को एम्प्लॉय करछंती तो देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज डेफिसिट मु कहया चाहूँगी पब्लिक कर कि दैट माने आम समस्त ओडिया माने डोंट माइंड माय वर्ड्स किंतु आम ओडिया माने बहुत निज को निंदा करूँ दैट आमर किसी चलनी बहुत किसी काम होती विजु स्वास्थ्य कल्याण मत कहूँ परा से यू कैन डू हार्ट सर्जरी नी सर्जरी एब्डोमिनल सर्जरी सिस्टेक्टोमी सब जिन हम से किंतु लोक से नॉलेज नहीं इस्तेमाल करना मु गोवर्धन धल कहूँ मु अशोक चौधरी सर को धन्यवाद अच्छा जस्ट one very important thing that I want to look at this is we ourselves are the important people who can portray who is a good doctor or not a good doctor, right? Probably Odisha doctors जैसे बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, right? They are not able to portray themselves that they are the as good doctor as anyone sitting in Delhi or Bombay or Hyderabad or any place. So that is one very important, that they are not able to portray themselves. Today itself, I had a patient who is from Odisha. She has an endometrial carcinoma. They asked me, should I come over to Delhi for treatment? I very clearly said, we have got good doctors in Bhubaneswar itself, in Cuttack itself. You can get treated there itself. You don't have to spend all the money to come to Delhi, right? Yes, I am sitting in a corporate hospital. I need more patients to come into, as sir will say. But there are good doctors available in Odisha, in Bhubaneswar. We, our own fraternity, like all of us, have to promote them. That is very important. And I gave name of 2 doctors, and now they are getting treated. Of course, the facilities may be different, and we have got good facilities in Bhubaneswar. We don't have to travel all the way from Bhubaneswar to take treatment. गोटे नहीं आप दुईटा जिन अच्छी गोटे कहे डॉक्टर प्रॉस्पेरिटी आउ गोटे पीपल डॉक्टर प्रॉस्पेरिटी देखो मैक्सिमम डॉक्टर दिल्ली एम्स चंडी सब जो पढ़ुन से ओडिशा जाऊँगी नाउ मैक्सिमम डॉक्टर से रही आप बिलीव करें सिस्टम उपर वन दूर जिन लगे आम ओडिया मान थट है अलग मु कहे मुझे मो डेली फोन आसो आग हिंदी में कथा हे सर डॉक्टर अश्वती मुझे जानी लोकटा ओडिशा कहूँ तार नाम महाराणा कि से मो से कहता आग हिंदी में कथा सर डॉक्टर अश्वती बात कर सकता हूँ आम मानकर यहाँ ही सब दुटा प्रोब्लेम तो है तेणु यही दिन देखा आम मैंने सब भाविले बाहर लोक भल करुँ आम कहे बाहर लोक भल कर आम लोक बहुत भल करते आउ दिल्ली में जिते कह मुझे गैस्ट्रो लिवर जो बेस्ट इंडिया डॉक्टर कहे हेतु 10टा लोक इंडिया नॉट ओडिशा कह दे आर ओडिया से भाईजाग अच्छा हैदराबाद अच्छा दिल्ली में अच्छा चेन्नई अच्छा अच्छा भाई आपण गोटे क्वेश्चन अच्छी प्लस सार गोटे क्वेश्चन नवा आम
Only sorry, time is very precious. Only 2 questions. आपन क्वेश्चन आ सार को क्वेश्चन नहीं जा बाकी समस्त टी ब्रेक की कोनोस टाइम रे आपन कथा ही जबे हां मो अशोक बाबू को धन्यवाद दूची कोविड समय रे समस्त जिते दिल्ली रे प्रवासी ओडिया अछंती से अशोक बाबू फोन कले से समय रे ट्रीटमेंट दउथले जे ट्रीटमेंट मध्य बहुत लोक भल होती से धन्यवाद दूची आ मोर गोटे क्वेश्चन आपण मैंने आपण फोर्टिस हॉस्पिटल अच्छा आपण मैक्स अच्छा आठी अच्छा आपण किम्स ILBS फोर्टिस मोर प्रश्न हो जो लोक मैंने रहिले हायर लेवल रे से माने इंश्योरेंस सेक्टर रे आमे जो जीवा से मानकर इंश्योरेंस प्रॉब्लम नहीं से कर चलते जदि आम ग्रास रूट लेवल जी आमर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे ओडिशा गवर्नमेंट करी पाँच पॉलिटिकली आम सेंट्रल गवर्नमेंट करी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छी से ऑलरेडी आयुष्मान भारत से कौ जगह चलुची कौ जगह चलूनी बहुत जगह से जो जगह चलुची से साधारण गरीब लोक पाँच जो राशन कार्ड अच्छी पाँच जो मैंने अपर मिडिल से भी कभर हो जाते जो मैंने लोअर मिडिल से आर्थिक अवस्था भल ना कि जो मैंने अपर मिडिल भी लोअर मिडिल हो गले से आर्थिक अवस्था भल ना से कौन कर इंश्योरेंस सेक्टर रे कि हेल्थ सेक्टर रे कौन कर बेटर आम से दरकार सर शॉर्ट रखिए सेटा जोड़ा कहले सेटा ऑलरेडी आमे कहितिलु प्रथम जिंस दुईटा जिंस तार अछि 2 आस्पेक्ट देखले गोटे सर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रे सर्ट टर्म व्यवस्था है प्रथम जोड़ा आम कहते सोशल बेस्ड स्कीम्स एटा को सिस्टम फल्ट मुझे आज डेट कहि जो बीपीएल कार्ड बेनिफिशियरीज से 40% लोक बीपीएल कार्ड एलिजिबल नुहति आउ जो 40% पाँच से एक्सट्रा बीपीएल कार्ड पाँच धरिक कहीं आम लाइफ स्ट्रगल में गोटे बीपीएल कार्ड सब ट्रीटमेंट पाइबो तो सेटा को सिस्टम स्ट्रेगलाइन करातु फर्स्ट सेकेंड ये जो ट्रीटमेंट आप कहते कस्ट प्रोब्लेम एटा अमेरिका होनी कहीं एटा लॉन्ग टर्म विजन सोशल सिक्यूरीटी आमे जदि हॉस्पिटल ग्रेडिंग कले कि बेस्ट हॉस्पिटल 40 रिव्यू पॉइंट इज 5 सेकेंड इज मैक्स इज 4 ILBS सरकारी 3 अच्छी तो लोक से चाहिए कि जो गले सब ट्रीटमेंट फ्री रे पाइबी बिकज आई हैव ए सिक्यूरीटी नंबर आई हैव ए सोशल सिक्यूरीटी इंश्योरेंस स्कीम तो से जो जीव हॉस्पिटल भल कहीकि से हॉस्पिटल इनकम बढ़ो से अधिक रिव्यू पाइब तो समस्त कंपिटिशन कले सर्विस देवे तेणु से समस्त एक्सेप्ट करेंगे तेणु आमको सर्ट टर्म विजन जोड़ा आप कहते दरकार कि लोक मैंने करूँ आउ जदि सिस्टम प्रोब्लेम से सिस्टम केमती बढ़ेगी देवे से आवेलेबल करातु ना मैंने आपण मैंने अच्छे सोशल सिविल सर्विस हेल्प करूँ आउ डॉक्टर मैंने भी चैरिटी कर भी हेल्प करेंगे तो समस्त मिसिकी सर्ट टर्म करवा बट लॉन्ग टर्म गोल शुड बी द सोशल सिक्यूरीटी और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस केमी आम सिस्टम में आनीपर ताले मैक्सिमम सिस्टम प्रोब्लेम हटाई से किए हॉस्पिटल को प्रचार करा दरकार पड़ोनी बिकज से गले ट्रीटमेंट फ्री एठी गले ट्रीटमेंट फ्री एठी गले ट्रीटमेंट फ्री बट आपड़ जो आसे भावे कि मुझे गली भल ट्रीटमेंट है आप 5 लोक सेठी जाओ तो दुईटा जिन अच्छी सर्ट टर्म विजन एवं लॉन्ग टर्म विजन से यहाँ मोर रिक्वेस्ट थैंक यू अशोक सर गोटे सेन मैडम सार लास्ट क्वेश्चन नवा से या पूर्व सेशन रे भी हाथ उठे माइक मिल ना ओके डन कोई नहीं Dr. Pawan Gupta, the way you just shared your experience to take the responsibility by the people, why not to encourage people to go back our traditional system of medicine like charak? That said that food is medicine and medicine is food. If we take our food as the way we have taken during Corona time, we survived because of that only. And the way you have got a excellent health, whenever patient is visiting, you tell them, I do this, you do this. Need not to prescribe any medicine or test or all the thing. Then there will be no problem for a visiting hospital. Agreed. And holistic health is the in thing. We have to work on the holistic health, and everyone, that is what I said, every one of us have to take the responsibility, our own health, that includes food, the way we look at ourselves, exercise, diet, yoga, everything that comes in, the way we look at our own health. So that is what I have said. Holistic health includes yoga, Ayurveda, food, whatever it is, lifestyle. So that is very important that we have to take care. One very important thing that before I just give over the mic is that every one of us have to take responsibility, because Odisha, the tobacco is increasing, and it is going to increasing from 37, it has become 51.5. In very short, it will become 70% if all of us don't take responsibility. So हम लोग जितने भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी वाले बैठे हुए हैं, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, please become tobacco marshals for your organization.
make sure that your organization, your public, wherever you're working, your region, your village is to become tobacco free. Are we ready to take that responsibility that every one of us will become tobacco marshals? Yes. Thank you. So thank you. That brings us to the end of this session. My esteemed panelists, thank you so much for sparing time. Thank you so sir. much. But Thank just you. a minute, sir. Thank Just you, a sir. minute. Before you, sir. thanking you, thanking our speakers, I need to introduce few special guests here today in this evening. Binay Patle, ex-RS Patrale, ex-RSS whole times national resident of Bharat Bharati, stationed at Pune, Maharashtra. Thank you, sir. Second, Omkar Swer Pandey, founder, Commonwealth Thought Leaders Forum, CEO, Golden Signature Research and Consultant. Third, Sri Shrikant, filmmaker, son of former Vice President of India, Sri Krishna Kanji. Thank you. Now, the time I request our moderator, Dr. Achesman Mahapatra, to felicitate our thanks to our speakers, Dr. Pavan Kumar Gupta. Again, I request our moderator, Sir Achesman Mahapatra, to thanks to Dr. Vishnu Panigrai, sir. This is the time for our Asok sir, Asok Chaudhary, Additional Professor, Institute of Liver and Biliary Science of Delhi. Now I request Jagannath Bhai and Susant Bhai. Jagannath Bhai and Susant Bhai, please thanks to our moderator today's this session moderator Dr. Acheshman Mahapatra.
And without energy and natural resources, it's unthinkable to see the whole development process. So we have, very eminent speakers in this. I think I'm hardly, nothing under them, and they are very highly experienced people in different sectors, from oil, natural gas, from industry. We have, so we have speakers like Mr. Sri Subhamay Bhattacharya, and he is basically a consulting editor, Business Standard. But before, he was into this media, he was also in the government, he was in Indian Information Service, then he left the job. And most interestingly, he written many interesting books on coal and whole politics on the coal, basically Indian coal stories. So that's very interesting. Also, he has written that coal and sketches the option for India's future energy. I think he's the perfect person to speak on this energy. And most importantly, I think Seti Odia bhi bujhanti. Tanu, it will be not so difficult to move the Odia re bhi ame kichi koi pariba. Tanu, thank you. Welcome, sir. We have Mr. Ranjan Mahapatra ji, and he is director, Indian Oil Corporation Limited. I think he is a very experienced person in this field. He is basically an engineer from BITS Filani, then XAM. And, he played a key role in supply chain management process and logistic in the Indian Oil, and he was part of the global, expansion of the Indian Oil. So, I think he is more into this resource and basically natural resource, oil and petroleum. So, he'll speak on more on that aspect. So, welcome, sir. And we have Mr. Kitish Kumar Nayak, and he is a very, I can say that he is an acclaimed figure in this oil exploration, and he is part of the oil industry more than 30 years, and he worked with this Oil India, then shifted to Ken India, and he played a key role in Bhandut oil field, which was defunct for 27 years, and he actually rejuvenated it. I think it is a remarkable job he has done. And he's a great engineer, and he's now working in the CEO of Caddy Group. So I think we have eminent speakers in this group. So before I move to this session, I think we have a very limited time. But I would like to say that, Odisha has now recognized by that CA, Central Electricity Authority, that Odisha re amara energy bahut achi, surplus. We have a surplus of around 148.7 million units surplus. Last year it was detected by CA. And apart from that, however, if you see that this, because we are shifting, we have a huge coal and we have a good natural resource as a water. And so hydro and thermal power are key factors for Odisha's energy sector. And as you will see that, Odisha was samay thila kuha houtla je Shakti capital, like Talcher was known as the, energy capital of Odisha. But however, I would like to say that Odisha is far behind in the producing renewable energy, which is, I can say that it's not a good sign considering this climate change, zero, net zero, we are talking of SDG. So I think Mr. Bhattacharya will speak more on that because he has a better understanding on this issue. Then we have another issues of natural resources. I think many of us know that Odisha is huge natural resources on bauxite. We have huge resources on iron, chromite. But the issue is that we need to see how we can use these natural resources. We should not go for like Banana Republic only depend on these natural resources. Our speakers today told more about the skilling of this labor. We need more skilled labor, service sector industries, apart from this, agriculture. So how we'll use this natural resources judiciously, that is also very critical. Though unfortunately we don't have oil so much, I think maybe there are some things are going on. Maybe Mr. Kekanayak, maybe Mr. Mahapatra will give some more about this, what is happening in this oil sector in Odisha. So keeping in this mind, so I'll start with this discussion. We'll have a 3 minutes, so we'll have from 3 minutes every speaker. So I'll start with Mr. Bhattacharya, maybe Mr. Kekanayak. So please speak on what you think that, we have a thermal energy, we have, limited, water resources for this
power plants, but we have also this oil, like iron, magnites, and also bauxites. So considering all these, issues of thermal as well as natural resources, how you see that? Because these are basically, limited resources. These are not renewable. These have a limited life. So considering these aspects, so how you see that, your vision for this, for coming to 20 years, 30 years, because the whole energy is synonymous with development. So how you see this, these aspects considering the sustainable development? Hello, thank you, Piyush Babu. Thanks for giving me an opportunity and inviting me to this session by this Pravasi Odia. So first coming to this energy mission, there are two things. One is 2036 vision and 2086 vision, especially relevant to Odisha. So we have some statistics which is defining 2030 and 2050, but I have done a lot of research and come back to here. There are many sources of energy. So now the primary sources of energy is coming from coal, then petroleum and other liquids, natural gas, renewables like hydrogen, wind, solar, etc., and nuclear energy. So in 2036, we intend to achieve reduction of the coal uses, and the total from the total energy mix, it will become expected to become 25% or lesser. And petroleum and other liquids, I'm also telling that what we are expecting coal, our Odisha can contribute much more because our people are very efficient. I will come to the Odia use later on. So 2086, we intend to bring down this 25% dependency on the coal to 10%. Then petroleum and other liquids, where my expertise is there. I am from ENP, Mahapatra Sahab are there. So from 30% usage in 2036, not now it is much more, to 30% to 15% in 2086. So oil and gas and coal is going to remain. It is not going to vanish because our energy needs are going to increase. It is going to manifold by 2086. Some natural gas, which is now lesser now, it is by 2036, it will occupy about 15% of the energy demands, and 2086 it is going to by 22.5%. Then renewable energy, wind, green hydrogen, wind, solar, etc. In 2036, it is going to be at 25%, and by 2086, we intend to become 50% of the energy consumption of India and also Odisha. And nuclear energy, it is now much lesser. So by 2036, we intend to go it by 5%, which by 2086, we intend to achieve by 2.5%. Then I am coming to various sources. Energy demand is increasing every day. So in Odisha, we have a lot of scope for the biogas, and because a lot of companies, recently in one of the startup conclave, I met two companies met me, and I am trying to groom them and handhold them. So they are doing biogas business in Odisha. One is Fulbani in other places. Maybe the other companies have come up in Odisha. So I will request Mahapatra Sahab and others to support them. We should handhold these people and come up because they are already established. So in the wind also, in the land and the offshore, there are a lot of opportunities in Odisha coast. So we can install the offshore wind platforms and generate the wind energy. Then regarding green hydrogen, just before the COVID, I had brought a company from Norway called Green Stat. Another company, they had met the Honorable Chief Minister and the Principal Secretary to CM. But just after the 15 days, the COVID broke out. Now, again, we have to revitalize that. So, Honorable CM had instructed to open up the first green hydrogen setup in Puri in front of Jagannath Temple. So, and next to it, there is a LNG and CNG. So, we have a LNG terminal near now Dhamra. It is going to be optionalized. Government has intention to make this in the near future LNG and CNG highways. Also, IOCL is our leader. They are going to opening the stations which has diesel, petrol, CNG, then hydrogen, then electric. So he will elaborate more. And now, what shall I tell that the IOCL R&D center is the leader is now in the country
for this renewable. In fact, our Honorable Minister Nitin Gadkari Sahab is riding the hydrogen vehicle, which is refueling from the center in the Faridabad. So green hydrogen cost is getting closer to grey hydrogen. Electrolyzer manufacturing can take place in India. Our new startups, we should encourage the startups for the electrolyzer manufacturing. And most important is to education of renewable energy projects are the most important. And energy efficiency alone can reduce the about 44% of CO2 emissions in the required level of by 2050. We need a determined leadership for the smoother energy transitions and maintain the sustainable development goals. Air travel is going to increase substantially by 2086 or 2036. So there will be increased demand of this fuel, but still with the renewable fuels are going to replace the aviation fuels by 2086 or 2036. Skill and determination of Odia technical persons are immensely high. I at my personal level have taken about 400 people in my drilling discipline ENP to abroad. They are all working well. Some people are getting salary from $6,000 to $18,000. And during COVID, some people had come back, but all of them have gone back. I am so proud of them. Wherever I have deployed my Odia people, they have made me proud. I am so proud of my Odia youth, and their grasping power is very high. So we should compare Odisha with Sweden, Switzerland, Norway in terms of renewable energy. Thank you. Thank you, Mr. Naik. So now I will request Mr. Bhattacharya to give. Okay, then yeah, fine. So, yeah. Okay, Mr. Mahapatra will speak about his thought on the vision 2036 and 2080. So what he thinks, how Odisha will become a hub for energy sector. I will speak more about the renewable energy. Thank you, thank you. समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार. प्रथम कथा है जो मत भल लगुच ओडिशा रे हमर एनर्जी इंटेंसिटी जति अछि ताटू बेसी लोक भीतर बसचती वर्तमान कारण ओनली 35% सीट्स आर ऑक्युपाइड एटलीस्ट ओडिशा रो एनर्जी इंटेंसिटी ताटू टिके बेसी अछि. Thank you. Anyway, let me tell you about first of all प्रथम कथा होछि जे कोनोसी रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस जोटा अछि आमे जेतिकी आमे प्रथम जो आम जानूले इट वाज अबंडेंटली अवेलेबल राइट आम मैंने यूज कले यूज करी भल भाव यूज कले एंड एज वी प्रोग्रेस वी हैव यूज्ड इट मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव नॉट गिवन ए टाइम फॉर इट टू रिप्लेनिश इटसेल्फ यही जिनसटा जो आज बोधे नेचुरल रिसोर्सेस क्षय हो क्षयटा एते जे आपण मैंने जानना मुझे जानने कि भल कहीपरि आप गोटे अर्थ शूट डे. Anybody who is youngster who knows about Earth Shoot Day? Anywhere? Kiss listen कहिबे. Anyway, not much youngsters. एटा होची जो आमे जतकी resources use करूछे 1 year रे replenish सेटा भी होची. Suppose we use the same thing, then in a year it will be balancing it out. But if you use it more, यदि आमे बेसी use कले ताले इट विल गेट ओवर दैट पोर्शन विल गेट ओवर ऑन वन डे. जमी 2022 रे एटा ए पॉइंट मु दवा कहीं चाहूँ इट्स वेरी इंपोर्टेंट नॉट ओनली फॉर ओडिशा फॉर एवरीवेयर एल्स. 2022 रे 18 जुलाई रे हमर कोटा सरीगला वर्षकर कोटा सरीगला. दैट मीन्स आमे जेतिकी यूज करिवा कथा तार 1.8 टाइम्स बेसी यूज करिचे सो दैट वी गॉट इट ओवर. इफ दिस कंटिन्यूज obviously we can't survive. And we just have one planet. That is where renewable energy is required or renewable sources of energy is required, number one. Number two, कौन सी देश प्रधानमंत्री कहते आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हवा. In fact, in another 10 years we should become 10 ट्रिलियन इकोनॉमी. निश्चय आम दरकार कारण आमर इंडिया ओडिशा भी तादर इंक्लूडेड. वी हैव टू गो लॉन्ग वे. आज आम पॉपुलस कंट्री हो जाइए तथापि आमर एनर्जी कंजम्पशन इज ओनली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज. आ जी एनर्जी कंज्यूम हम से जापर जे केते आमर जीडीपी हम एंड वी आर इट इज रिलेटेड टू दैट. तेणु आम जब बढ़ा को चाहिए आम जान डेफिनेटली आमर कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन बढ़. बट देन वेयर शुड इट कम फ्रॉम.
बढ़िया कथा कहले नायक बाबू आप जे energy requirement from fossil fuel will remain definitely. It has to remain, otherwise आम अवस्था भी यूरोपियन कंट्रीज भाया हम जोटा जिते यूक्रेन वार है, they realized that they had stopped all sorts of production ways and they are now into problems. So it has to be balanced out completely, but it has to be sensible. Dita jinsa hala je eta nishchay rahibo, there will be a requirement of energy, very much required, but how do we source that energy? Ajiro जो हमें पाई देखुचे एनर्जी पाई देखुचे से एनर्जी पाई रे almost 70 to 80% is from fossil fuels. कोल हो ऑयल हो सबुथरु आसुची. That needs to be converted. More and more renewable energy has to come, and it has to come in a way that we meet the incremental requirement of energy. I say sagare ame progress भी करी परिवा और maintain करी परिवा the globe जो global climate change को reduce करी परिवा. We all have taken, I mean, हमें भाव नहीं चे along with Prime Minister 2070 रे करीबा net zero हबा. In fact, some of the companies, I am very proud that way. Indian Oil has taken a challenge on itself कि हमें operationally net zero 2046 रहवा कुछ मुझे. Similarly, मतलब भल लगे लगे sentence जोड़ा पवन गुप्ता कहले, we have to take responsibility. We don't have to give responsibility. We have to take responsibility of maintaining this. How much of, how much carbon footprints we are creating now? Can we reduce it? How do we reduce it? It has to start with me. If we all keep AC temperature at 27 degrees, it is reduced. And समस्ते हमारा अभ्यास है आजकल जो हमें समस्ते कहूचे जो बहुत गरम बाहर वाली, it is because we have made ourselves like that. Otherwise, say 35, 38, 40, 42 होउतला मुझे देखुतली पूरा analysis रे is not much. 1 degree body थीबो. But we have made ourselves like that. इटाला 3 number, 4 number हैला. Requirement जेतिकी अच्छी energy requirement, we have to all work together to make it available. I mean, coming back to Vision Odisha, it's a very nice topic. I must compliment Das Babu and entire team for really thinking about कि 2036 रे गोटे vision और 2046 रे गोटे vision. 2046 रे room रू बदे कहीं नथी बे. I don't know. 2036 रे vision at least हमें देखिबा बहुत जन देखि परिबा. What is that vision? Can we really, at the end of this conference, can we write down what is that vision? बढ़िया कहले चौधरी वो 15 point कहले, that's very, very, very accurate. Same thing, can we have a vision for ourselves ki where we want to be? Just last point कही करी छाड़ुची परे पुटी. Lots of investment. I am proud, at least proud as an Odia, that my company Indian Oil is investing a lot. In fact, आप लोगों ने जानी थी बे just किसी दिन तले, in fact, my chairman visited Honorable CM and we announced 61,000 crores investment in Orissa, in Paradip refinery, petrochemical career. Petrochemical is also another way of reducing carbon footprints in the way, because that's very much required. It's a other way around. We are not producing it for vehicles or for consumption in industries, but rather we are using for the petrochemical. So petrochemical intensity of Paradip will be increased. So I will come back again. Yadi permission debe pare. Thank you. Next cycle. Yeah, thank you, Mr. Mahapatra. So he gave a detailed outline, his vision, and how this basically oil sector is very important, crucial. Yeah, it's known. Even this Russian war was eye-opening and created a new thoughts basically on this oil and basically how it will save this, how it is very crucial for this energy security. We have Mr. Bhattacharya. I think he has gone into the depth of the economics of this whole coal, and he understands the politics better. But the issue is that, we have to go for the alternative. So I would like to hear from you that, what is this coal politics about and how it is impacting, Odisha, and do you think that it is the right time to push for the alternative and go beyond coal? Hello. Yeah.
Vachu, thanks a lot. Thanks to Mr. Das and everybody out here at Pravasi Odia organization. I have stayed in Orissa for quite some years. I used to be fairly good in speaking in Oriya, but after coming back to Delhi and several years, my ability to understand Oriya is very clear. I can't speak, and I'll make a fool of myself if I try to speak. So I'm so sorry, but I just wish, especially when I was hearing Mr. Mohapatra, I wish I could have also spoken as fluently, and I really can't, and my apologies. What I wanted to say, and since we're talking about energy, I think the most powerful source of energy in Orissa is the people's love for the state. This is the biggest source of energy I find in that state. I mean, when I was there, even otherwise, I found people being willing to say that, yes, I want to do something for the state. I like it. And as long as you do that, I think it's also what I would call a renewable energy. So it's renewable and it's energy, so together it makes for a wonderful combination. So you're on the right path. So there's no problem there. Beyond that, let me say, I wish the state of Orissa did not have the coal or other energy material under its soil. Frankly speaking, Oriya people are industrious people. They can work hard. They're meritorious, bright people. Across the world, the regions wherever there has been sources of minerals, fuel, coal, oil, gas, the lives of people above those fuel have been hard, have been bad. It is not something to feel good about that there is oil under my soil. This is something that sometimes I often feel is a curse that many of our Eastern Indian states have. And frankly speaking, for a state like Orissa, it was probably something that we didn't need. Why I'll tell you this? Let me just give you one piece of data. You all know everything. There's enough amount of knowledge going around on internet. So there's no point telling you in data whatever you know. You're all extremely bright, and probably this room has more information to tell us than we can tell you. So let me just tell you my observation. My observation is the state domestic product of Orissa is about 8.64 trillion. The market capitalization of Indian Oil Corporation is 1.1 trillion. That means it is 1/8 the size of Orissa. If this company had been a private sector company, do you think the state and its bureaucracy, and there are very powerful officers who are here, and they would know, would it have been possible for them to negotiate from a position of strength with such a massive company? Mr. Nayak was recently with Vedanta. These are big oil, fuel companies are huge companies. Believe
rural population. We have lot of, paddy fields. We grow, these days, ethanol can be produced. We are wasting so like in Punjab, other places. So our brother IUCL is leader in that ethanol blending, and other companies also doing. So ethanol can be produced if we give it to the farmers incentive. We can bring it, and that can reduce, our actual import of the crude oil product. Secondly, then wind also, there is a lot of opportunity. Land, besides land, offshore wind will be very much viable, and the cost of offshore wind is also reducing day by day. In the Odisha coast, offshore wind stations should take place. Many other countries have been very successful, and the prices are, wind energy prices are also reducing. Third thing is solar is already developed and it is working well in Odisha. And our Odisha people are very much determined. If we set a vision for our youth or the startups, they can really focus on this renewable, replacing, whatever I read out earlier was 2086. There is a tentative indicative target. I am not alive. So our youth who are the current generation, they have to take up. We should be ahead of the game. Odisha should be ahead of the game in the country as well as the world. So we should overachieve the renewable energy percentage. Green hydrogen, we have abundant water, sea water, rivers. What is water? H2O. We have to just take out oxygen using the electrolyzer and modern techniques. But there is called green hydrogen, there is called brown hydrogen and other place. So country should lead towards green hydrogen, means hydrogen is produced with the primary, so not with the electricity, should use solar or something to produce it as a green hydrogen. So country is moving at this. I am sure our youth of Odisha are very much capable and they are determined. Once we have to lead, government is directing, and it's a government of India, state government partnership, and the public. It's not only the government can steer it, and the public and the youth of the country, youth of Odisha, motherland Odisha, they will lead it. I am sure they will overachieve this target. Thank you, Mr. Mr. Naik. So, about okay. ଆପଣ ଗୁଜରାତର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ Ahmedabad to Kutch and then to Somnath, entire full of windmills. Yes. Movie full of windmills. Exactly, that's very. But आपको गोटे जिनसे बुझिବାକୁ पड़िବ why that is so there, because Gujarat state government has taken a very big step of giving. See, this is all economics. It cannot come just like that. Currently, it is not giving, it is not, if you don't have subsidy to start with, it will not be possible. So government of Odisha, I think through this year, we have to speak about it. Otherwise, intensity is available, air intensity, wind intensity is available, by which windmills can be set up, but it requires a lot of support system. Government of Gujarat took it as a drive, and they have put it all across, everywhere, wherever you see. Eta gote jinsa ala. Second jinsa hochi, why do we have to go for that? I think dita titinda jinsa bhatche sab definitely janithi e bisare Odisha ro ame samaste bi janiche Odisha re dita jinsa au hei paribo. Number one hochi, nuclear energy is the energy future. I mean, that is one of the cleanest energy. We are not utilizing it. I think we are rich in nuclear. Somebody has to really push it now, that I think we can go for it. I think rest of the countries probably doesn't have that, which Odisha has. So nuclear gote option ama pakare. Second, we have a huge coastline. Why can't we go for tidal energy? And tidal energy for Japan is already working. It is working. It is initial cost. Somebody has to come forward and has to do it, and we don't have to ape anybody. I think Odisha pe jodi 36 ro mo pai jodi diya jaye 36 ro vision or 86 ro vision re hamaro at least we should try that more Odisha requirement ra 10% should come from tidal and around 20% should come from nuclear. It should come from there. Then only it will be possible. Last but not the least, there is another source of energy joda Barambar Naik Babu kahuchanti. In fact, personally speaking, I have been trying. But I don't know. आम भितर ओडिया को भितर गोटे entrepreneurship रो ये नहीं. हम समझते चाकरी को जीवा. Including me, I have done my job. Entrepreneurship नहीं. CBG जोटा गवर्नमेंट गोटे पॉलिसी आनी चंदी सतत स्कीम उपरे. सतत स्कीम रो पॉलिसी रे हला जे anybody who establishes a CBG plant
entire output will be taken by the government at a cost, at a price, which is much more than his cost. And that we have signed, and we are aiming to have at least 5,000 such CBG plants. In fact, through OCF, through other Odisha different achanti groups achanti, tanka through I have been telling my group to give lot of demonstration why it is important, how even we have tied up with the banks that they can give funding to you. But somebody has to come forward. I think CBG is compressed biogas. ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା जो गोबर गैस तार टिके भलो वर्जन एटा better version compressed biogas, and it can use any sorts of waste materials and it can produce compressed biogas, and it can be utilized. It can be utilized in vehicles replacing the fuel. It can be utilized in industries. It can be utilized everywhere. And गोटे कौन सी गोटे एस्टाब्लिशमेंट कले कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट कले आमर सब चिंता कौन रहता है जे मो प्रोडक्टा कोटी बिक्री हम ए केस रे गवर्नमेंट हैज गिवन ए स्कीम in which oil companies are bound to take that product at that price, which is very good. I think through this forum, through anybody else, we have to really go for it. I know there will be lot of efforts people have to do on that. Probably that is lacking, so we'll have to do that. Thank you. Yeah, we are taking a lot of time, I think. So we'll cook it up. No. Now we are Some very good things. First of all, Odisha is one of the standout states in fiscal discipline. The Odisha government's budget I use as a reference point to tell how a budget should be constructed in terms of fiscal marksmanship. It's amazingly good. So that's something. Given that, what I do think on the bright points that Mr. Mohapatra and Mr. Nayak are saying, there's no point Odisha benchmarking itself to the states in eastern India. Odisha should now be benchmarking itself with the states of southern India in terms of outcome. And I think because Odisha is already there in terms of lots of things. During the COVID crisis, the casualty rate in Odisha was one of the lowest. And it was because of the brilliant supply of oxygen network. The handling of cyclones has become a textbook case of smart administration every year. So I think Odisha is already doing lots of things properly. I'm sure on many other things the government will be coming up. So I have no doubt about that. What I'm saying is the one catch point which I find in Odisha is a problem will be agriculture. Globally, agriculture is now turning out to be the idea that this is where the maximum methane gas comes along. I think a lot of thought, just like as I said about energy efficiency, will have to be given about pulling people out of agriculture into agriculture supportive things, agro-processing and that sort of stuff. That I think is where the energy revolution will come, and organizations like Vedanta and you don't care, but organizations like those and IOC will actually be great at telling people how to go about doing it. That I think is where the energy story of Odisha will be. It will not be about mining coal or mining gas or even setting up wind plants, because another thing that I say about Odisha is, remember Odisha was the first state which unbundled electricity distribution. So this has been a state which has been very willing to take risks administratively. Given all that sort of stuff, I think the click point right now is to see what works for the people to give them income opportunities at a micro level. And frankly, there's no one answer. As you would have seen, we are not really able to say which one will work. But from the way cities like Bhubaneswar and others are becoming model cities, it has to be actually be thinking in terms of new things. I already see Odisha doing a great thing in terms of the sports city.
I'm going away from energy, but what I'm saying is that these are the initiatives that is now getting connected with energy issues and needs to be plowed more and more. There are already brilliant ideas coming along. The state administration has actually been a great entrepreneur. It has actually thought out of the box several times. And I must say, it deserves a round of congratulations. But along with that, I would think that that's where the people would need to look in terms of not the manufacturing model that was the bane of Eastern India, but on the services sector development, and which is actually not energy based. And that brought other, but would take advantage of the energy sets. So Odisha, for instance, cannot be a place where you have massive manufacturing centers coming in with electricity supply. I don't think that's going to work. But in terms of micro administrations, micro enterprises, what sort of enterprises again? I mean, it's too long a list, but I'll stop at that. Thank you. Thank you, Mr. Bhattacharya, you gave some catch points. I think with this, I'll go to the audience now, so we can have a now question session. Yeah, so, very cut questions I We'll want. take Please maximum ask 5 direct questions. Yeah. Hello, I have just a question for Mr. Mahapatra. I've been working in the, I'll just come back to that. I'm working in the area of bioenergy since 2021. Yes, I'm telling. My name is Mayuresh. I'm having a startup. I'm building an ecosystem on clean fuel for industrial use. That is mainly for the coal and biomass pellet and both CVG area. The major challenge is not government is buying or what price they are buying. Major challenge lies in the biomass, the collection, the logistic and the supply chain. Until and unless we incentivize those things, it is not going to happen at the micro level. And we have submitted one proposal to the government of Orissa also, which has been recently they have approved and they have asked us to give the DPR on that. So I look forward that whether the corporates or the PSUs, they should come up with their bucket or their offerings to this kind of startups so that we can take this forward. So, Mr. Mahapatra, please. Thank you. I think a round of applause for him. Definitely, I know. He's trying to do a lot of work on these areas. Yes, CBG, the worst issue is that how do you segregate the biomass? How do you collect the biomass? What are the logistics? But probably we thought there are 2-3 things. One is that, yes, it has been taken up with the government of Orissa. It is also being taken up with the oil sectors also, whether we can come forward and try to help. But both the things probably is not going to work out, because at one end, by assuring you the sales and all, we have already covered one portion of it. So maybe we are not very seriously thinking of supporting this part of it. Whereas it is required from the municipality, from the civil authorities and from the state government how to provide that. See, first of all, we have to bring in the systems. Segregation of waste happens at our own housings. Suppose we are talking of the biomass, it has to happen at our housings itself. We have to segregate from there. So this is where the discipline has to come from there itself. This is one way. But there are other biomasses which are available, which can be procured. Probably this is where we are looking at the entrepreneurs to take care of that as well by tying up with somebody. So at the present state, PSUs are not looking to support that end because it's just not possible. One end has been taken care of. But we are trying to help you out. There are third issues, I think you did not mention that. Third issue was arranging for the finances. That portion was a huge issue, which thankfully Honorable Minister of Finance supported, and now I think banks are taking that as a project. You must be knowing that you are submitting the DPR, that will be taken as a project. So that 2 things have been tied up. Third thing, probably entrepreneurs themselves, along with the state governments and civil, civic authorities, have to tie it up. So let's see. I think some improvements have started coming in. Hopefully something will come up further. Please direct questions only one question. One question, Good evening, sir. My name is Anish Pirabanda, student of Delhi University, currently studying political science honors. From morning we are seeing this Vision Odisha program.
You all are focusing that we should, as a youth, everything would be carried forward by the youth, the entrepreneurial mindset should be developed. I have made out a list. Many people like you, Ranjan Mahapatra sir and Bibi Naik sir, you are working as directors in the companies. Many people are working. We are around 500 students studying out in Delhi University, JNU. Can you all look on to providing internship opportunities to the students in your companies? Can you look on to provide internship opportunities to the students in your companies? Secondly, can you also look on that if entrepreneurship mindset needs to be developed? We need to have a good connections with you all. We have to meet Sure, regularly. Okay. And can you answer on this? Yeah. Let me answer it on behalf of Naik Sahab also. Yes, sir. I think Vedanta and Indian Oil cannot take to all people, but it is available. It is available to your people. In fact, great. 2 of your students are currently doing internship with us. You can find it out. And your dosa, which was there, was supported by us for this time. We tried to support it this time. So we supported your initiatives there. And I am very proud as an Indian Oil person, as an Oriya person also for supporting that. See, please don't look at it ki one company or 2 companies. It is all available. You have to take advantage of it. Number 2, which everybody is telling from here, don't look for anybody helping you. You make it compulsory for him to help you. I think that would be more important than anything else. Yes. Okay, I think one more, sir. I know last 1 year I have given internship to 70 youth like you in various one of my plants and here. I personally gave time half a day for these interns to upgrade their skills. So nothing. So if you want, you can get our email IDs from this Piyush ji. Please write us. Okay, so we are already out of time, so we can ask personal questions. So yeah, thank you all the panelists. I think in a nutshell, I think we have an excellent discussion about this future of energy in Odisha, and I think it's a high time we need to see for this tidal energy, we need to see the bioethanol, we need to hydrogen, solar, and and there is no alternative. I think we need minimum for this oil and coal for the minimum requirement, but we have to go forward. I think Odisha is potentially placed, if I'll see that geographically, and we have the new entrepreneurship are coming up, new skilled people are coming up. So I think this is the right time to move. So from this discussion, I think we can take up all these notes, some catch points, key points, and can deliver it to this government of Odisha. With this, thank you all the panelists. It was wonderful to have you here, sir. Thank you so much. Yeah. Before sir, 1 minute please. I just want to request Piyush Bhai to felicitate and thanks to our speaker, Sri Ranjan Kumar Mahapatra, sir. Again, Piyush Bhai, please, thanks to Sri K.K. Naik, sir. And for Subhamaya Bhattaji, sir. Thank you all. It's a very interesting, very interactive session as well. Very interesting as well. Thank you all. Thank you, sir. I would like to invite Kartik Bhai and Jagannath Bhai, please come to the dais to thanks to our moderator, Joint Secretary Piyush Mahapatra. This is the time for most interesting part of our life, that is tourism. आम समस्त को बुलिया को भल लगे, different places को जीवा को भल लगे, different adventure करिया को भल लगे. So this is the time for tourism, hospitality, tourism, pilgrimage and destination branding. Like to invite Sri Debasish Patnaik, Managing Director, Crown Hotel Bhubaneswar,
Dr. Devendra Prasad Majhi, Course Director and Faculty, ISTM, Government of India. Like to invite our moderator and member, Mr. Saswat Panigrahi, Advisory Editor, India Asia 1 News, and moderator as well. Please, Saswat bhai, over to you. Saswat Panigrahi is a senior multimedia journalist with 18 years of experience whose career revolves around print, television and digital. He has worked in various senior editorial positions which include editor of G Odisha Television, digital editor of Bloomberg Television, deputy political editor of DNA newspaper, senior editor of Swarajya and news head of Niti Digital. Presently, he is working as an advisory editor in India for Asia 1 News. In addition, he is the editorial strategist of RITM Digital and columnist of Fast Post, an early adopter of digital journalism and having a sizable experience in print. He has also proved his mettle in television as the editor of G Odisha, under whose editorship the channel won 5 exchange for Media News Broadcasting Award. His works have been featured in parliamentary documents and quoted by various books and research papers. Over to Saswat Panigrahi. Thank you, Madam Vijaya Navami. The topic for discussion is so very significant. Sorry to interrupt, Saswat bhai. Please request each and every members and delegates settle down yourself because the panel is going on. Excuse me, in the front desk, please settle down yourself. The topic for discussion is so very significant, so very pertinent for the development of Odisha. Odisha has India's best kept secrets. It is said that Odisha has India's best kept secrets, dotted with a huge stretch of coastline, galaxy of rivers, a number of mountains, lakes, and many natural biodiversity. The state has a huge tourism potential with various tourist attractions ranging from wildlife reserves, beaches, temples, monuments, arts and festival, and sports. To discuss on the topic tourism, hospitality, pilgrimage and destination branding, I have with me 2 key speakers who have really worked on such a vast subject which is very much linked to the development of Odisha, its economy and employment generation. To my left is Dr. Devendra Prasad Majhi. Dr. Majhi is presently working as the course director of ISTM, Government of India. He served as the director of Dr. Ambedkar Foundation, and he considers himself as an academic by heart. And to my right is Devashish Patnaik, Managing Director of Crown Hotel, Bhubaneswar. He's also the founder of Dalma chain of Odia cuisine restaurants. Mr. Patnaik, a foremost angel investor of the state, he is vigorously pursuing the development of entrepreneurship and startup ecosystem of the state. So both the speakers are experts on the subject. I'm a moderator and basically I'm a journalist, so my job is to ask a couple of questions and they will basically speak on such a vast subject which is directly related to the economy of the state. So my first question would be to
Mr. Maji. Sir, as we know, Odisha has limitless tourism opportunities, but how far the state has succeeded in unleashing its tourism potential? Jai Jagannath, thank you, Mr. Panigrahi, and my co-panelist, Dr. Patnaik. Friends, good evening to everybody, Jai Jagannath and Namaskar. In fact, this evening, we have been assigned a topic which is the potential of tourism as a sector for economic generations and other parameters. And my friend Bibhu is not there, so I will mix my deliberations in Oriya, English and Hindi, because he had little bit of objections. Many non-Oriyas are there, so I would like to speak in Oriya and Hindi. So today, your question is that Orissa has a lot of potentials in tourism sector, and it has not been explored yet. We need not elaborate that, because the tagline of Orissa itself speaks the best kept secret. We have not branded our secret. We have not explored our secret. We have not exposed our secret. As Kerala says, God's own country. As our previous speakers in the other panels were telling, Thailand tells that the kitchen of the world, but we have never branded such things. We brand it serene, scenic, sublime, beauty. Subjective aspects of our beauty, subjective aspects of our tourism, that factor, that elements we used to highlight. Now question comes, what are the elements, what are the factors we can highlight, we can brand, we can capitalize? See, from the term capital, it connects to me the sports capital. Orissa happened to the sports capital. खो-खो, रुग्बी, जो अमेरिका में खेला जाता है, जो अमेरिका रे खेलती रुग्बी गेम, एटा प्रथम पाई किस रे इंट्रोड्यूस करते। रिसेंटली आई विजिटेड देयर स्टेडियम। सेतर बोधे ओडिशा रा चीफ मिनिस्टर भी जाइथिले। सेतर केते सुंदर मु वर्ल्ड रे 65 कंट्रीज बुलीची, केवल बुलीनी टूरिस्ट हिसाब रे मु रहिची सेठी, गवर्नेंस को देखिची, डब्ल्यूएचओ फेलोशिप रे, यूएन फेलोशिप रे, डीओपीटी फेलोशिप रे मु देखिची, किंतु एभली स्टेडियम कौन सी इंस्टीट्यूट रे मु देखिनी। से पोटेंशियल आम पाखरे अछि, हमरो इंटेंट भी अछि, एटीट्यूड अछि। एटीट्यूड रे जरी से प्लेस वैल्यू करिवा, टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड, A1 T20 अगेन T20 ताकू मिसिबा 100 हबो। एटीट्यूड गोटे एमिति गोटे एंटिटी यदि आमर पॉजिटिव एटीट्यूड थिबो ताहले कौन सी जिंस प्रथम रु ही आमे जदि एटीट्यूड पॉजिटिव हबो 50% हे जिवो। तेणु सही स्पिरिट सही एटीट्यूड आम ओडिशा मान पाखरे अछि, किंतु जदि जो हिसाब रे डेलिवरेंस मिलिया कथा, डेलीवरी मिलिया कथा, सेटा हमको रिजल्ट मिली नहीं। कौन पाई आमे आमर सॉफ्ट जो स्किल अछि तार आमे कैपिटल भी आमे पोजेस करचंती। आमे सब बहुत डोसाइल पर्सनालिटी आमे एक्सपोज करूनी, आमे एग्जिबिट करूनी, आमे शोकेज करूनी। आम पाखर जो टैलेंट अछि आम पाखर कौन नहीं। दिल्ली रो जो माने ब्यूरोक्रेसी रे अछंती, संजीव सार भी अछंती, बे बसचंती। आमर हेल्थ मिनिस्टर मो थिबा समय नॉन ओरिया ब्यूरोक्राट सब बेले पचारंती ओडिया माने पाखरे एनर्जी कोठु आछि। से माने सब लिफ्ट आस्तबे फर्स्ट रु थर्ड फ्लोर सेक्रेटरी, आमे स्टेयर्स रे पळि आसु। से स्पिरिटटा कोठु आछि, आउ से मानकर सब बेले पॉजिटिव वाइब्स कोठु आछि। से माने सुकुआ खांती, से माने बड़ी चूरा खांती, से माने बाइगण भर्ता खांती, किंतु तांकर जो डोसाइल नेचरटा आउ प्लस प्रिंसिपल्ड ता सहित आमे मीक नुह, दुर्बल नुह, आमे प्रिंसिपल्ड, आमे डोसाइल, आमे मानिबा कथा, किंतु बहुत स्ट्रांग। यार एविडेंस कौन? आमे जदि एविडेंस को जिबा 261 अशोक सहित कलिंग वार हैला, से समय आमे छुटिया छुटिया हाइट रो आम पूर्व पैनलिस्ट कहते आमर हाइट कम, किंतु से समय आमे केते ब्रेवेरी सहित साहसिकता सहित आमे लड़िलु। आउ तापरे गरिला वार भी करिलु। तापरे पाइक विद्रोह को पळै जिबा,
जोटा को कहुच्छे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली से समय देखा आम हारिले भी मानले केबे आ सेटा रिफ्लेक्ट होची प्रतिफलित होची ब्यूरोक्रेसी रे से माने बहुत प्रिंसिपल्ड हार्ड वर्किंग किंतु टिमिड नुहंती मीक नुहंती से माने बहुत ब्रेव किंतु प्रिंसिपल्ड तेणु करी आमे जदि कौन जिनिस को कैपिटलाइज करबा सॉफ्ट स्किल आम पाखरे अच्छी आमर अन्य प्रकार एजुकेशन भी अच्छी या पूर्व एजुकेशन उपर होता मु एग्री करूनी क्वालिटी एजुकेशन मु हायर एजुकेशन थी स्कूल एजुकेशन थी से देखी एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जस्टिस वर्मा तांको कमिटी रिपोर्ट देते 32टा रेकमेंडेशन मु डील कर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे आउ स्कूल एजुकेशन विषय कथा होता प्रश्न पचारूँ स्कूल एजुकेशन विषय आईआईटी प्रोफेसर आचार्य प्राचार्य आचार्य साहब कहते प्रौद्योगिकी एजुकेशन विषय स्कूल एजुकेशन पूरा घट्टर में कौन पाई महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पैसा देकी बीएड एजुकेशन होता तापाई सुप्रीम कोर्ट रे केस कला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा कमिशन बनले 32टा रिकमेंडेशन देले ता भितर आज गलानी 10 वर्ष प्रश्न पचार केते इम्प्लीमेंट होती तेणु करी केवल डिस्कशन ये फोरम रे कौन सी रिजल्ट दिएनी प्रकृत में सेटा केते आमे कामयाब करचंती इम्प्लीमेंट करचंती सेटा फलप्रद हुए बर्तमान पहर दिन रिपोर्ट हिसाब रे वीक रो लेटेस्ट स्टडी जोटा अच्छी सी हैप्पीनेस इंडेक्स ता हिसाब रे ओडिशा आसी प्रथम 3टा स्टेट भीतर गोटे हैप्पीनेस इंडेक्स आम जोटा डेवलपमेंट प्रोग्रेस को आम डिफाइन करचंती ता भीतर सबुठारु बेसी यूएन भी डिफाइन करची कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन आउ कौ पैरामीटर करचंती ना ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स आउ ओडिशा गवर्नमेंट से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करची वेलफेयर स्कीम्स फॉर द नीडीज जो माने लाभार्थी अछंती तांको केमिति करा जायछि तेणु करी आपनक प्रश्न रु केमिति ए करा हबो मोर टेक एटा परवर्ती प्रश्न मु आपको जवाब दे थैंक यू Very good, Dr. Majhi. Taking a cue out of what Dr. Majhi has said, I would like to ask my next speaker, what else the state from tapping its tourism potential? Why Odisha couldn't able to manage the kind of revenue it is supposed to generate from the tourism sector? What exactly the issue is? Whether we don't have the required infrastructure or there is a lack of willpower. Mr. Patnaik. धन्यवाद नमस्कार let me go in Odia if you have no Please, issue. please, sir. Language is. We'd love to सबु hear. सबु राज्य आगे जाउछन्ति टूरिज्म क्षेत्र में सबु राज्य आगे जाउछन्ति आमे पछरे पड़ जाइछु सेते नुआ कथा किछि नै बहुत दिन हला आइछि एटा एवं सेतिपय आमर उद्यम नथिला प्रचेष्टा नथिला एटा निश्चित भाव जना अछि आपण माने कि समय आगुरु शुणुतिले बजेट आलोकेशन विषय कथा होतला आम ओडिशा टूरिज्म रो बजेट 2010 मसीहा पर्यंत आज्ञा 4 कोटी टंका थिला वेराज अन्यान्य राज्य मानक जो देखिए से माने पाखापाखि 30-40 कोटी बा अधिका थिला मु जानि कंपैरेटिवली केते थिला मु जानि ओडिसा 4 कोटी थिला जदि आपण पाखे पैसा नाही आपण माने जदि बुझिबे नाही जे टूरिज्म इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री जो थिरे कि नॉट ओनली आपणकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सारा विश्व रे जदि एम्प्लॉयमेंट करा जाउची तार 15 भाग एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करे एवं द्वितीय कथा है जे प्रत्येक जीडीपी रे 10% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म इंडस्ट्री आसे यही रियलाइजेशनटा आमर राज्य रे आसी नथिला तेणु टूरिज्म को प्रायोरिटी दिया जाऊ नथिला टूरिज्म डिपार्टमेंट को गोटे सेकेंड ग्रेड बा थर्ड ग्रेड डिपार्टमेंट हिसाब रे ट्रीट कराउतला जो थे आपण मैंने पोस्टिंग नापे भी भल अफसर राजी नथिले एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग दे वर पोस्टेड इन टूरिज्म डिपार्टमेंट
or maybe their posting as a tourism director or tourism secretary was being treated as a punishment posting, which was an unfortunate thing. आज का डेट रे आज्ञा ओडिशार टूरिज्म बजेट फॉर द ईयर 23-24 is 800 crores. 660 कोटी प्लस 220 कोटी अबड़ा अंडर 220 कोटी 820 कोटी आपण जानिछन आज्ञा सारा इंडिया रो टूरिज्म बजेट केते 2400 कोटी. जदि इंडिया 2400 कोटी आमर ओडिशा आज खर्च करने प्रस्तुत अच्छे 800 कोटी. दैट इज 1/3 ऑफ इंडियाज बजेट. दैट इज वेयर वी हैव रियलाइज्ड that how important is tourism for us and how beneficial it is for the economy and employment. तेणु बर्तमान जो रियलाइज करते कहुच्छे आमर टैग लाइन बदल जाइए. सार कहते आगुरी थिला सीरीन सबलाइन सिनिक सीरीन सबलाइन बर्तमान कहते इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट बिकॉज एबे बुझी पारिचंती जे आम यहाँ को प्रमोट कले आम एति पैसा खर्च कले आमको यही प्रकार बेनिफिट मिल. आप गोटे छोट उदाहरण दूसरी आज्ञा 2012 रे लंडन रे ओलंपिक्स है. लंडन ओलंपिक्स रो वर्षे आगुरी यूके गवर्नमेंट गोटे कैंपेन कला जो कैंपेन ना था ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन जो द ग्रेट दैट एवरीथिंग दैट यू सी इन यूके इज ग्रेट ताकू नहीं गोटे ग्रेट कैंपेन से करते एंड दे स्पेंट रफली अराउंड 150 मिलियन पाउंड. ताकर रिटर्न है आज्ञा तादर 1 बिलियन पाउंड रो टूरिज्म बेनिफिट पाइले से ओवर नेक्स्ट 4 years. आज पर्यंत से कैंपेन को चल रखिंट कारण से रिटर्न रियलाइज कर पैसा इन्वेस्ट कले कौ प्रकार बेनिफिट मिलूँ. तेणु आम सरकार बा आमर जो माने डिसीजन मेकर्स अच्छा से माने वर्तमान रियलाइज कर टूरिज्मटा कौ प्रकार बेनिफिट दौची एवं से आमर आज बजेट 800 कोटी. Mr. Patnaik has rightly said that government needs to revamp the infrastructure and both, in fact, both the governments, both the central government and the state government must come together to for the development of Odisha as a better tourism destination. To that, I would like to move to my our next speaker, our speaker, Mr. Majhi. Basically, Pravasi Odia Vikas Samiti, the vision of this organization is whatever seminar and events, activities we are doing, our senior members like whether my president Surya Bhai or our vice president Professor Satyadas. So basically, their vision would be what should be the what action government must take. So taking a thread out of that vision, I must ask Mr. Majhi, Dr. Majhi, how we can develop Odisha as a big brand for tourism worldwide. Thank you, Mr. Panigrahi. आम पाखरे संसाधनर जमिति पट्टनायक बाबू कहते बजेट एलोकेशन विषय प्रकृत में क्वेश्चन से नु क्वेश्चन है दुईटा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ताकू पुणी फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. वन इज जनरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सेकंड इज टूरिज्म से होटल इंडस्ट्री अच्छा मुझे कहती प्रथम मोर वक्तव्य मोर देन 65 कंट्रीज आई हैव जस्ट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. आमे जदि फॉरेन कंट्री होटल को देखिबा
फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को आसुचंती किंतु फेरी जाउछंती विथ बैड एक्सपीरियंस कोपाई जस्ट या पूर्व जो थिला हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन आमर स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री महोदय जोटा वर्ल्ड बिगेस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम मु पढ़ाए डीओपीटी पढ़ाए स्वच्छ भारत अभियान आमर क्यूरेटिव हेल्थ रे 6.0% जीडीपी पूरा बेकार जाउछ क्यूरेटिव हेल्थ रे आउ टूरिस्ट फ्लो जोटा आछी ओडिशा को स्पेसिफिकली जोटा आछी वर्तमान सेटा हला इंडिया रे 18 आ 20 फ्लक्चुएट करछि हमर पोजीशन महाराष्ट्र नंबर 1 नहीं जाउछि आउ इनफ्लो रो जो टूरिस्ट तार ग्रोथ होछि 8 रु 10% 16 रु 17 मिलियन लोक ओडिशा को आछंती किंतु आम पाखे कौन पोटेंशियल अच्छी स्पिरिचुआलिटी देखंतु एभलिया वर्ल्ड रो कौन सी जगह नहीं माने जो मेंटल पीस मिले कौन सी जगह पृथ्वी रे नहीं मु बुलीची मु सेहि पई कहूची आम पाखे बुद्धिज्म अच्छी सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट देखंतु कौन कला बुद्ध आउ युद्ध युद्ध को बुद्ध रे कन्वर्ट कर देला बुद्ध स्टैंड्स फॉर पीस नॉन वायलेंस आउ पिठा आउ मिठा आम पाखर पिठार भेराइटी देखु इंडिया रे कौन सी स्टेट जानतु ए पिठार देखु चकुली काकरा आरिसा मंडा सरू केते सब पिठा अच्छी प्रकार आ मिठार देखु यही सब जिनस गुड़ाक आम के ब्रांडिंग एगुड़ाक करना आउ प्रश्न आज जो थीमेटिक एरिया अच्छी से अच्छी ब्रांडिंग कौन सबू जिनस ब्रांडिंग करवा दरकार नॉन ब्रांडिंग इज ऑल्सो एन ब्रांडिंग मो ट्रेनिंग पीरियड रे 35 रु 40 जन को सीनियर ब्यूरोक्राट मीन्स डेप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल लोक को भारतर विभिन्न जगह को स्टडी टूर नहीं जाए ट्रेनिंग पर 10 दिन पाई मु ओडिशा को 3 थर 3टा ग्रुप नहीं जाइए प्रथम से माने जीवाई रिलक्टांट सबुठारु जो लेडीज माने अच्छी डेप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर से कहले आम जीवनु कौन पाई से न्यूज पेपर पढ़ुंट कौटी बिछा मिलला कौटी साप मिलला कोरापुट से मु जानी शुणिकी ओडिशा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कली इनको ट्राइबल एरिया रे पकाओ से माने पकड़े रायगड़ा कोरापुट मालका से एरिया सब पकड़े से माने फेरिया पर जोड़ा से प्रेजेंटेशन देते गोपबंधु एकाडेमी रे तापरे एठी आसिक डीओपीटी रे तापरे रिपोर्ट लिखिसंती सेटा देखिबार विषय ताकू मु फॉरवर्ड करछि ओडिशा चीफ मिनिस्टर ऑफिस की माने एते सेवारगर कहले ओडिया मान विषय जो एप्रिशिएट करछंती ट्राइबल मान विषय रे से ता भीतर जाई से सहित लेडीज जो मना करथिला आमे जीवनु ता भीतर जाई ट्राइब्स सहित खाइछंती खाद्य मांडिया खाइछंती जाऊ खाइछंती आउ जोटा महुल सहित जोड़ी हुए सी सब खाई प्रैक्टिकल कहूँ इट इज ऑन रेकॉर्ड बिकज से रेकॉर्ड करछंती तो तापरे एते सुंदर तांकर एक्सपीरियंस होइला किंतु समस्या कौन कि आमर ओडिया मानकर स्वभाव है आम शोकेस करूना एक्जिबिट करूना इंडिया दिल्ली रे देखिथिबे केते बड़ बड़ अफसर थिबे चुप करके चप्पल पिंधिक आसुथबे अन्य कोई सहित बसिक फोटो उठाउथिबे एटा नॉर्थर संभव गोटे एमपी पाक पहुँचापी तार प्रथम गुन्स थ्रो रे जीवाई हम मोर गोटे होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी अच्छी सांग बीडी पल्सन उत्तर प्रदेश से मो सांग सान भाई बड़ी से दिल्ली आसला मुझे नहीं गली आम जन एमपी अच्छा समय से समय थी लंच समय थी मत से एमपी मत इनभाइट करते मो ना नेबिनी मुझे केमी करी ओडिशा भवन खाइले तो अलग हो नहीं गले से सी मत कहला भैया ये एमपी है हमारा तो यूपी में एमपी के पास पहुंचने के लिए 6-7 गुंस मोटे मोटे सारे बॉडीगार्ड होंगे काला ड्रेस पहन के वहाँ पहुंचना है। आप लोग ओडिशा लोग इतना सिंपल है वो यकीन नहीं किया। ऐसे दोबारा अभी जस्ट लास्ट वीक मेरा और एक फ्रेंड IPS 96 बैच का BD N संजय आंध्र प्रदेश का CID का हेड है, उनको भी वहाँ ले गए क्योंकि मुझे भी उस दिन वो बुलाया था क्योंकि वो जब ओडिशा से भद्रक से लाते हैं फिश लाते हैं मैं उनको कहता हूँ पुई सारू जो आस चिंगड़ी माछ मत डाक से डाकी आउ ये भी से समय डाकी कहबार तात्पर्य है आम पाखर जो सफ्टनेस अच्छी डोसाइलनेस अच्छी से माने आम शोकेस करूना से आम एक्जिबिट करूना आम देखे हमें केते लोक आम सब टाई
कोट पैंट पिंधिकी गाड़ी आसू नॉर्थ रे द मोमेंट दे गेट इनटू आईएएस स्टाइल यस तांकर पूरा एटायर चेंज हो आम ओडिया माने सेमिति नुहंती यही जिनस गुड़ाक आम प्रश्न आम ब्रांडिंग करवा ना न करवा कौ समय ब्रांडिंग न करवा भी गोटे ब्रांडिंग टा न करवा ब्रांडिंग तार एविडेंस कौन ना मो ऑफिस रु 34 जन जो जाइए डायरेक्टर से मालकानगिरी से एरिया बुलिया परे फेरिया परे कहले केते सुंदर तांकर स्वभाव तेणु यही जिनस गुड़ाक आम एक्जिबिट कर डॉक्टर माझी आमर ये डिस्कशन निश्चित भाव टिके इंटरेस्टिंग होची बिकज कोठना कोठी डायरेक्टली टूरिज्म ओडिशार आत्मा सहित जड़ित मोर आउ गोटे जिनस मो पाखे टिके समय पाउसिटी अच्छी नेक्स्ट सेशन भी अच्छी मु जानी निश्चित भाव ये सब्जेक्ट गोटे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मु क्षमा चाहूँगी ए सेशन को आम अधिक स्ट्रेच करि परिबा नहीं मु परवर्ती प्रश्न मोर परवर्ती पैनलिस्ट अच्छी मिस्टर पट्टनायक पाखक आसबि आमको आमर राज्य ओडिशा को आगुरी उत्कल कहुला उत्कल नाम परिचित ओडिशा उत्कर्ष कलार राज्य होची ओडिशा कोठना कोठी ओडिशार संस्कृति बलिष्ठ तेणु टूरिज्म माध्यम पर्यटन माध्यम ओडिशा केते दूर तार संस्कृति को पर्यटन और संस्कृति ये दुईटा केते दूर इंटरलिंक्ड होईची सरकार केते दूर इंटरलिंक्ड करिसंती आउ केते दूर इंटरलिंक हो पारी ये विषय वक्तव्य रखापी मु मिस्टर पट्टनायक को अनुरोध कर समयर स्वल्पता एवं संस्कृति दीटाक पूरा विपरीत कथा है ओडिया संस्कृति उपर मत कहे एवं ता आगुरी समयर स्वल्पता विषय कहे ताले मु कहि परिबिनी आज्ञा किंतु एतिक कहबी जे आम ओडिशार संस्कृति ता खाली ओडिसी नुहे आज्ञा आमर 64टा लोककला अच्छी 156टी पाला अच्छी पाला एवं दासकाटिया मिसेकिरी अच्छी ये जो कला गुड़िक अच्छी एगुड़ी को केवल सरकार पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग जोगु से माने बंचिचंती आज्ञा तांकू प्रति मासरे किछि किछि पैसा दिया जाउची भिन्न भिन्न जगार उपस्थापन करा जाउची भिन्न भिन्न जगार परिवेषण करिया को कुआ जाउची तेणु से माने जाई पारुचंती चली करि पारुचंती चली पारुचंती घोड़ा नाच हो कि कंडेई नाच हो बा ओडिसी नाच हो कि गोटी पुओ हो से परि आपण जदि देखिबे संस्कृतिटा खाली नाच गीत तो नुहे संस्कृति अन्यान्य कला भी अच्छी धरतु पट्टचित्र है पट्टचित्र चाहिदा आजिकल बाहर बढ़ी लोक ताको एटा माने आंतर्जातिक स्तर में आदृत होची तेणु लोक ताको आग्रह प्रकाश करुँच किणापी यहाँ बहुत भलर कथा किंतु सेटा लोकों पाखे केवल पर्यटन ही नहीं पहुँची संस्कृति को जदि आपणकर परिवेश बाहर आपणकर चारि कांथ बाहर राज्य बाहर देश बाहर को नहीं ताले केवल पर्यटन नहीं बा ओडिया माने नहीं ये मुझे खाली खुशी करिया आपण मान कहीदे जे प्रवासी ओडिया माने जेतिकी ओडिया को बाहर को नहीं अन्य माने कई नहीं नांती अन्य माने कई नहीं नांती आज्ञा सेटा मानियो कब आपण आज एठी बसिकी खुशी होउछन मु कहूची बोली मु जाइथिले आज्ञा टिके टाइम नेबी मैडम मु जाइथिले आज्ञा अमेरिका रे गोटे सरकारी ये रे मैं डेलीगेशन रे जाइथिले सेठी मु तो इंट्रोडक्शन रे कुआइछि जे मु मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छी क्राउन रो एवं प्रमोटर फाउंडर भी डालमा चेन रो से मो जाइथिली मैनेजिंग डायरेक्टर क्राउन नहीं करी तेणु से लिखाला डी पट्टनायक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर क्राउन होटेल से भद्रमाला जन से बसते से कहले आपण
अमुक मु कहले आज्ञा ना आपण डालमाटा आपण मुझे आज्ञा ना आज्ञा आपण डालमा लिखु आम ओडी एठी समस्ते खुशी होचु जे आमर गोटे ओडिया खाद्य पई गोटे डालमा बोली गोटे जगह अच्छी जोटी आम जहाँ पाउछु पठे दउछु सेतबेले गोटे जगह थिला डालमा बोली आज भुवनेश्वर 30टा 40टा रेस्टोरेंट है ओडिया रेस्टोरेंट यहाँ खुशीर कथा आज्ञा तेणु कहवा कथा मोर मूल प्रश्न है आपण मैंने ओडिया मैंने होती प्रकृत में यही प्रवासी ओडिया मैंने होती ओडिशा संस्कृतिर आपण मैंने जड़े जड़े से जो कहते ब्रांड आंबासेडर आपण मैंने ब्रांड आंबासेडर आपण मैंने जदि भल व्यवहार करेंगे बाहर ताले ओडिशा लोक भल आपण मैंने जदि खराब व्यवहार कले बाहर ताले ओडिशा लोक हेले खराब आपण जदि नेता हेले ताले ओडिशा लोक सब होचन टाउटर आपण जदि शिक्षा भी देले ताले इंटेलेक्चुअल्स ये हूँ आज्ञा डिफरेन्स तेणु प्रवासी ओडिशा मान जेहेतु मुझे कहती बोली टी गपीदेली मैडम कि आउ गोटे जिनस खाली मुझे विजन विषय आप कहीदेवी गोटे मिनिट रे मो पाई विजन आज्ञा ओडिशार हूँ 2036 एशियन गेम्स 2056 वर्ल्ड कप फुटबॉल 2088 ओलंपिक्स सेटा आमको प्लान करने हम खाली ताली मारे हम ना आज्ञा भाषण बाजी देले हबनी कि ताली माइले हबनी प्रत्येक ओडिया को तापई फाइट करने हम आमे जदि एते सक्सेसफुली करि परिचे ए जो वर्ल्ड कप हॉकी को दुई दुई थर किछि पैसा खर्च हुए ना आज्ञा वर्ल्ड कप हॉकी रे खर्च होइछि पाखापाखि 150 मिलियन US डॉलर आउ एशियन गेम्स खर्च इंडोनेशिया खर्च होता 400 रु 450 US डॉलर तेणु बेसी गुड़ा पैसा नुहे ओडिशा सरकार पाखे बेस पैसा बर्तमान अच्छी खनि रॉयल्टी पर तेणु आम कर तो आम प्रचेषा करवा दरकार विजन हिसाब से सेमती विजन देखा आज्ञा आउ दिनिकिया विजन देखी लाभ थैंक यू such a beautiful action to be taken suggestions from Mr. Patnaik. Mr. Maji would like to make his last comment. Sir, we have a paucity of time, so kindly be brief. Within 1 minute, Dr. Patnaik बाबू कहते जमती कला विषय मिस्टर पट्टनायक इट्स ओके तो मोर व्यक्तिगत अनुभव अच्छी सिडनी हार्बर रे जतले पहुँचे आपने देखिए जो एबोरिजिन्स अच्छा ऑस्ट्रेलियन से जो बॉडी रे सब व्हाइट पेंटिंग करछती ओडिशार डिटो झुटी केबे भी आपण माने जाइथिबे कि फ्यूचर जिबेटा नोट करिवे सिडनी हार्बर रे जो अछि ओपेरा हाउस अछि नंबर 2 दुईटा जिनस विषय कहबी आज थीम थिला हॉस्पिटैलिटी नंबर 2 पिलग्रिमेज सूर्य बाबू कहते कि कहवाई से मुझे जस्ट दुईटा शब्द कहबी आपण मैंने ओडिशार देखिथिबे भुवनेश्वर मु एयरपोर्ट ओल्हे प्रथम जाए सब बरा घुगुनी सब खाए आपण बरा जदि अच्छी घुगुनी शेष सी आउट होता झोल कि घुगुनी टिके पकईदेव दिल्ली रे संभव एटा कौन सी जगार से कहे आउ गोटे प्लेट नापी हम नंबर 2 पुरी विषय कहबी पिलग्रिमेज विषय कहबी पृथ्वी कौन सी जगह अच्छी डायस्ट्रेट गीत शुणुवे नॉक 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 इन द हेवेन्स डोर माने स्वर्ग को जीवाई डोर रे नॉक करवा आ स्वर्ग द्वारा से पुरी रे अच्छी बिफोर यू से गुड बाय टू दिस वर्ल्ड उदेति सविता तम्र तम्र एवं वस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामे कुरुपता साइकिल का वे रे जो जिनसटा जाउची पृथ्वीटा घुरुची जन्म मृत्यु सुख दुख सबु जिनस से पुरीर सनराइज कोठी होची कोणार्क रे होची ओडिसा रे आउ तापरे लाइफ कोठी जाउची स्वर्ग द्वार रु जाउची दैट्स व्हाई आई कॉल ओडिसा एज द सोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया थैंक यू Thank you, Dr. Maji. Thank you, Mr. Patnaik. No, sir. It's time for your felicitation, and I request ours. Again, I request.
I request Saswat Bhai to felicitate and thanks to Devendra Prasad, Dr. Devendra Prasad Maji ji. And I request Dheeraj Bhai and Prakash Bhai, please come to the dais. Saswat Bhai, please, thanks to Sri Devasis Patnaik sir. Dheeraj Bhai, tea jaldi. Prakash Bhai, out tea jaldi. Thanks to our moderator, Saswat Bhai, by Dheeraj Bhai and Prakash Bhai. For you, Saswat Bhai, for you. Sorry for late, and this is for time for 7th session. Entrepreneurship, hustling, skill development, and wealth creation. Now I like to invite Sri B.K. Sabrawal sir, Chairman Capital Market Committee, PHDCCI. Dr. Dheeraj Singh, MD, GRC India Limited. Sri Bibhu Prasad Rath, Co-Founder, Managing Director, Concha Lanka OTT. Wow. Sri Sanjeev Kumar Mishra, IAS Secretary cum COE National Recruitment Agency, GOI. Dr. Girija Bharat, Director, Mogama Consultants Private Limited, Member, Bhubaneswar Knowledge Innovation Cluster Foundation. Our moderator and our mentor of POVS, Dr. S.K. Jena, Private Secretary to Honorable MOS Jal Shakti, former Director ICSI. One more chair. एसके जेना भाई का इंट्रोडक्शन दबा मतलब कैपेबिलिटी आउ एबिलिटी मोदर नहीं he will introduce himself on and over to SK Jena bhai. Thank you. जय जगन्नाथ. Vande Utkala Janani. So very good evening to all of you. Subha Sandhya. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତିରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? मतलब ଜବରଦସ୍ତିରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ. କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ 7ଟା ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ. ଆଉ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି ସେମାନେ 7ଟା ସେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି. ବଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ସ ହେଉଥିଲା. କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 2 ଆୱାର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି. ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସକାଳେ 7ଟାରୁ ଆଉ ଶେଷ ହେଉଥିଲା 2ଟା ବେଳେ. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସକାଳେ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିପାରେ. ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ मतलब ଆର୍ ୟୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍? So today we have been given a topic for discussion, that is entrepreneurship, hustling, skill development and wealth creation. And I think most of the part has been covered by our previous panelists while they are discussing about the tourism. But while introducing this topic, one thing I would like to tell you with respect to our Pravasi Odia. जो प्रवासी ओडिया का पहचान is not starting from the Delhi and its constitutional crop. If we remember the history of Odisha, जदि आमे ओडिया इतिहास को मने पकैबा ताले आम कलिंग माटीर साधव पुओ माने बोईत नहीं जाभा सुमत्रा
आउ मालय भलिया विभिन्न जगार जाई वाणिज्य करी से माने निजकू प्रवासी ओडिया भाव में इतिहास रे भी स्थापित करथिले। आज आम प्रवासी ओडिया भाव में दिल्ली रे रही आम निजको गर्व करूना हूँ, किंतु सही जो से माने फाउंडेशन स्ट्रंग करथिले इतिहास रे सेटा को आम आगो को नहीं जिबा एंड वन डे डेफिनेटली जो विजन आज आमर प्रवासी ओडिया देखी ओडिशा 2036 जेतबले ओडिशा 100 वर्ष हेबो सेतबले ओडिशार रूपर केमती हेबो ताहा निश्चित भाव में आम फुलफिल करि पारिबा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, so we have a very learned panelist today. Let me take this opportunity to introduce them one by one, but I think in this context it will not be appropriate to go for their brief profile. मु खाली आपन को टिके टिके संक्षेप रे कहवा पई चाहूची। आम सांगरे पैनल रे अछंती आज बीके सबरवाल, चेयरमैन of PhD Chamber of Commerce. He is a stock broker for last 31 years and also having experience of working for 20 years in different PSUs. Please welcome Mr. BK Sabrawal with a round of applause. Welcome you, sir, to this panel discussion. Then we have with us Mr. Sanjeev Kumar Misra, who is a IS officer, and presently he is posted as the Secretary of National Recruitment Agency, Government of India. So welcome you to this panel discussion organized by this Pravasi Odia Vikas Samiti. Then we have with us a very interesting and personality, Vibhu Prasad Rath, who is the co-founder and managing director of Kancha Lanka, Bhari Swadishta. I think today he will also tell us something about this entrepreneurship, how he has started his journey and what is his vision towards this Odisha 2036. We have with us Dr. Girija Bharat, who is the director of MU Gamma Consultant Private Limited, and also he is the member of Bhubaneswar Knowledge Innovation Cluster Foundation. And please welcome her with a round of applause. Welcome you, madam, to this panel discussion. And the last panelist with us, who is also associated with this POVS, Dr. Dheeraj Singh. He is the managing director of GRC India Limited, a young entrepreneur at Delhi, having his origin from Odisha. So welcome you to this panel discussion. So with this small introduction of our panelists, I would like to introduce this topic which has been given to us, which it may be the 7th period, but we might be given the subject like maths, but you remember maths is always important. So similarly, अगर आप ओडिशा को डेवलप करना चाहते हैं और ओडिशा को विकसित करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द बेस्ट डोमेन थ्रू व्हिच वी कैन मेक दिस ओडिशा वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया. सो my dear friends, without wasting time, just I would like to give you certain information and statistics. Where do we stand today so far as the entrepreneurship and skill development is concerned? As I told you that this concept, the entrepreneurship, it was already lies in the in our blood of the Odia people. But unfortunately, जो इतिहास में आपको बता रहा था, but आज का स्थिति अगर हम डिस्क्राइब करें तो अगर हमारा देश में टुडे वी हैव 11 lakhs of companies, out of which but Odisha is having a very marginal share of 20,000 companies. अगर हम स्टार्टअप का बात करें, स्टार्टअप में हमारा देश में लास्ट 2016 से लेके अभी तक more than 80,000 startup has been created in India, whereas in Odisha only we have 1,550 startups. And so far the incubators are concerned, in our country today we have more than 400 incubators, but in Odisha we have significantly better position. We have 93 incubation centers in Odisha. With this perspective, but where do we stand today? Because today when we talk about the Odia, we have everything in our country, in our state. We have our natural resources, we have minerals, we have mines, we have adequate opportunity for the tourism. We have adequate manpower, we have great institutions in Odisha, and our people are, the most loyal people in India, I can say, because we are having, due to that loyalty, today we have proved to be the best
employee of the country, but we have failed to become the best employer of the nation. आज हमारा देश में, हमारा स्टेट में इफ यू लुक एट, देन महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पंजाब से लोग आके हमको रिक्रूटमेंट करने आते हैं. They come to hire us. They come to give us an opportunity to become an employee. But we failed in that journey to make us as an employer. And the time has come. That's why I was telling you this is the most appropriate domain which is very significant for this next 15 to 20 years to make this state the most prosperous one. So with this introduction, now I would like to invite our first panelist, Sri B.K. Sabarwal ji, the chairman of PIGT Chamber of Commerce, to give his introductory remarks. So we'll confine to only 3 to 4 minutes of individual talk. Then we'll have the open discussion. And after open discussion, we'll have some questions, few questions from the audience subject to your availability, if audience are there by that time. Thank you very much. Welcome. नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुझको प्रसन्नता होची कि बीइंग ए नॉर्थ इंडियन एंड ए पंजाबी मुझको अपने लोग को डाकू चंती एंटरप्रेन्योरशिप पाई बोलिबा पाई। मोर इंट्रोडक्शन होता कि मु 20 वर्ष पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रे काम करथिली। एही 20 वर्ष रे मु 8 वर्ष पारादीप फॉस्फेट रे थिली, जे भितरे मु 3 वर्ष पारादीप रे थिली और 5 वर्ष दिल्ली रे थिली। पारादीप रु मु फर्स्ट पर्सनल ऑफिसर तरीके फर्स्ट पर्सनल ऑफिसर रे 1983 रे जाई थिली एंड अप टू 1986 प्रथम 800 अपॉइंटमेंट लेटर मोर सिग्नेचर रे इशू होई थिला एंड मेनी ऑफ दोस पीपल those who were recruited at that time, they retired as the managing directors or the chief executives of the various companies. विषय को आसिबा पाई एंटरप्रेन्योरशिप the challenges सत्य कथा एछि कि जब मु कैरियर स्टार्ट करथली त्यारे बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी नथिला। एटलीस्ट एमथि अपॉर्चुनिटी नथिला कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इन्वेस्टमेंट, टू फाइंड राइट टैलेंट एंड हाउ टू इवन मेंटेन द टैलेंट. इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. बट टुडे केतटा सरल हो जाइछि. टीवी रे गुटे शो आसला शार्क इंडिया, दैट एनी एंटरप्रेन्योर और एनी न्यू कमर जस्ट come to the television channel and can show his talents, and that first time entrepreneurs, the first time millionaires, they used to offer. Today जो कया होथिला कि there are only 1500 startups in Odisha. it difficult नहीं. मुको एमथिया लागू छी कि आजे गूगल रे सर्च करिबा को भी अपने एंटरप्रेन्योर बनी पारिबे. डिफिकल्ट नहीं. देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. एज ही टोल्ड दैट why other people from other states are coming to recruit us. Yes, we are. Odians are the best brains of the country. Today, a misnomer is there among the bureaucrats and the politicians that this government is being run by the Odia bureaucrats. I'm just really apology to Mr. Mishra and his officer sitting here, but it is satya katha ki brain wise it is not there, but entrepreneurship mu more ko example debi. Because
I was fine-tuned only in Odisha. That's why I am trying to give this example. कि मु मोर सर्विस स्टार्ट करथली मु चाकरी स्टार्ट करथली दुईटा प्रमोशन पोरे मु पीएन बनिथली दुईटा प्रमोशन पोरे मु पीएन बनिथली 1983 रे मु पारादीप रे एज ए किड जाइथली एमथिया कहि पारे आई वाज जस्ट ए type of student or a young person, but during that stay of PPL, among the adverse circumstances, the circumstances which were prevailing there in the year 1983 to 91, I don't have much time to give even examples that kitata difficult thila, but I remember that Paradeep phosphate plant was the first plant in eastern India. The then Chief Minister, Mr. Janaki Vallabh Patnaik, on the inaugural day said that in the independent India's history, this is the first plant which is commissioned before schedule. And that was done by all Odian peoples only, that it is not first ever. Therefore, yes, I learned a lot during that period only. Not only mu language sikhili, even the customs, even Odia loko kemthia karchanti. I learned all those things. During my short stint of 3 years, I visited each district of Odisha, not only for recruitment, but now, coming back to the subject, yes, if brains can run the bureaucracy, it is not difficult that we can run the entrepreneurships also. IO Zero HR department ra director kauthile ki they have sanctioned this much for the port. Yes, availability is there. The need of the hour is that with the bureaucracy, now we should demand कि entrepreneur, more and more entrepreneur should, as we have minerals, as many things are already discussed, I will not repeat all those things. But coming back to one more, that how my career get changed. After working 20 years in public sector undertaking, way back in 92, मुको दुईटा appointment letter मलिथेला from the top private companies of the country. The then company secretary जो पारादीप phosphate रे थिले, ताहकु दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज रे प्रोफेशनल कोटा बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी ते टिकट पाई जाई थिले. मु ताहकु पचारिबा पाई गली कि among these two which of the company should I join. ते मोकु कहले कि मु अपनों को देखी ची कि अपने 12 घंटा 14 घंटा पब्लिक सेक्टर रे कामो करचंती. You come as a partner to me without any investment. So that was why I am saying that was the thing which I learned in Odisha from the Odian peoples. I used to even socially work in that Pravasi Kalyan ashram during those days and that's why I could visit almost all states. And from starting from less than a peon in 91, I became a director of a company having the 25% of the profit without any investment he started giving me, and then there was no looking back. And without taking much time, to all the students who are sitting here, मुझे खाली इतना तक कहिबी कि लोको मेहनत करीबे, इंटरेस्ट लेबे कामा को, तो इठी difficult नहीं. आजे अपने, if we can be good employee, we can be good employer also, and that we have seen. Yes, stockbrokers throughout the country are there. They are the least in the Odisha among the all countries, but
few of the people were asking the JNU students that for the articleship and all. I hereby invite all of you that I am not only in the PhD, I am in the SOCHM also. I am the chairman of Stockbroker and Commodity Broker Association also. Ample of opportunities are available to give you the trainings at various places throughout the country. But please, in place of becoming an employee and going for that training, you should start thinking on those ways which you can become an entrepreneur yourself. Balance I will take up in the question answer. Thank you. Thank you very much, Savarwal Saf. You have rightly said about the characteristics of our Odia people, and during your long stay you have realized it. And definitely it is a fact that we have the three common characteristics among our Odia people for which we are very popular worldwide. Number one, we are simple. All Odia people are simple, and we are sober, we are gentle, and also we have lot of sympathy for others. And these three characteristics of Odia people has established themselves the most loyal employees worldwide across the globe. So thank you very much for appreciating the Odia culture and also your experience in Odisha. So, and if we just go back to history again, you know why this kind of attitude has been developed in the eastern part of our country. And I would like to remind you that in 1835, when 1935, when this Macaulay Minute was introduced in the country, particularly during the British period, and they designed the educational system of our nation in such a manner, and the objective was to create the clerks and the employees to serve the British emperor. That was their objective, and we are grown up within that education system, within that mentality, which has made us to be the best employee rather than the employer. But definitely after a huge gap, today the country has got a national policy of education which is aims at creating the employer to make India Atmanirbhar Bharat and Swabhilambi Bharat in the direction that we are working today, in the direction we are proceeding today, and definitely Odisha will not be far behind and will be at par with our nation years to come by implementing this kind of new policies in our country. So thank you very much, Sarwalji. Now I would like to request Dr. Girija Bharat to speak about the entrepreneurship ecosystem in India as well as Odisha. Over to you. Thank you so much, Jai Jagannath. Thanks for having me here. The entrepreneurship journey for me started as a scientist. So I am basically a science-preneur. After working for many years as a scientist with CSIR, working with World Bank, USAID, TERI, that's when I thought it's time to think out of the box. And as you rightly mentioned, born and brought up in Odisha, studied in Bani Bihar. I was also in the same thing, same stream of being an employee. It was important to step out of that and provide employment. And many, many things happened in between, and they were all very, very learning experiences. One thing as an entrepreneur is your passion. We should not be bound by time. If you have that passion, which most of us from Odisha, we have it, that fire in the belly. आज मु जदि मो झील मान को कहे कि फायर इन द बेली से मैंने पचारे कि कौन एसिडिटी है जाए कि the fire in the belly we have understood because we have come through that system, and we know what passion is.
that passion with perseverance and devotion, determination, if we pursue it, we will reach it. We are here for making profit when we are entrepreneurs. And आम साइक रे गोटे हो जाइछि आम माने मु कहूछि ओडिया मानको कि profit making is not a good thing. Even Indians, as Indians we. But if we don't make profit, how will we sustain? There is a difference between profiting and profiteering. We should not be there for undue profiteering. Yeah, that is against the ethics. So when we are doing something from the ethical standpoints, we should not fear that we are making profit. We have to have our sustenance. We need to sustain our system. Otherwise, how will we provide employment? How will we have something for the rainy day? So profit making is important, but not profiteering. As an entrepreneur, we need to have these values, many values. If I have passion, I don't mind working 16 hours, 18 hours. In Odisha, we are all used to working very hard, we slog. Yeah, and we take pride in that. But we are very humble. And places like Delhi, I'm sorry to say, humility is considered as meekness, is considered as weakness. We are not weak. We are not meek. We are humble because we find humility is important. The day we feel that we have reached everything, we have got everything, then our graph will fall. So we have to always have this humility in mind to do good. I work towards environment. Towards environmental sustainability, and we have this 2030 sustainable development goals. I'm seeing 2036 Vision Odisha. So we have that goal, we have that motto. Environmental sustainability is important. It stands on 3 pillars. One is environment, social, and economic. When we are entrepreneurs, we have to know economics is important. But we have to see and keep in mind that there is a large society of people, especially in Odisha, who are socially underprivileged. They are challenged. So as entrepreneurs, we have the personal social responsibility. This is different from corporate social responsibility. That is CSR. I call this PSR, of helping those people who are in need so that our entrepreneurship journey is much more fulfilling than just for our profit or profit making. I think I'll get some more time to speak about my entrepreneurship journey. Yes, yeah. If you have any specific questions, I'll be very happy to answer that, because a scientist to an entrepreneur is not an easy journey. But then in India, we have lots of platforms. India's environment is very conducive to environmental entrepreneurship. And we are proud and privileged that we are in this time where we have these many platforms like Skill India, Startup India, and many tax-saving mechanisms and tools which helps us grow. In fact, I am privileged to be one of the entrepreneurs selected by IIM Bangalore in 2021 as in the cohort 6, where we were trained as women entrepreneurs who could. There was a minimum limit where we could make, and it was extremely enriching journey for me with lots of entrepreneurs who were mentors, who are still our mentors. Similarly, Niti Ayog's Entrepreneurship Award, that Women Transforming India Award, was a great honor where many of the entrepreneurs were honored for in that platform. So Niti Ayog offers this. So Government of India, Government of Odisha also has lots of conducive environment and lots of conducive schemes and programs where we can all make a huge difference. And I'm proud to be an Odia by birth and still continue to be. Thank you. Thank you very much. You have rightly said, to become an entrepreneur, we need to have passion. And without passion, we cannot be a successful entrepreneur. But in addition to that, I would like to add that to become a successful entrepreneur, also we require certain skills and certain attitudes. That is the innovation and the creativity. And those who are having these innovations and creativity, definitely they can contribute towards the entrepreneurship.
Thank you very much for your wonderful words. Now I would like to go to Mr. Vibhu Rath to say something about the startup ecosystem in Odisha. नमस्कार गुड इवनिंग आपण माने खुशी तो this is how our CM asks wherever he goes. Okay. So मते जते बड़े प्रियदर्शी बाबू कांटेक्ट कले जे एंटरप्रेन्योरशिप सेशन रे आसिया पई सो आई वाज लिटिल शॉक्ड जे मु एक्चुअली मु कैरियर एंटरप्रेन्योर नुहे मु 30 इयर्स 30 वर्ष मु गोटे कंपनी रे चाकरी करथिले 1990 रे मु गोटे कंपनी रे जॉइन करथिली मैनेजमेंट ट्रेनी एंड 2020 रे आई वाज द CEO when suddenly I lost my job. After working for 30 years in one company, I have never changed job. I had never made my resume. मो लाइफ रे मो के बायोडाटा बनै नथली कि चाकरी पकै नथली मते शॉक रे रहिली 2-3 मास टू रियलाइज जे मोर चाकरी नाही रोजगार नाही करबी कोन वर्तमान एंड से टाइम रे भी कोविड फोविड चलसला तापर मु चाकरी खोजिली चाकरी खोजिकी देखिली चाकरी मु जो लेवल दरमा पाउथिले वाज वेरी हाई पेड ओडिसा रे नाही मिलुनी सो मते आई गॉट एन ऑफर इन बॉम्बे आई गॉट एन ऑफर इन चेन्नई देन आई थॉट कि बॉम्बे चेन्नई सो यंग लोक माने जानती से मानक बयस हो गले भुवनेश्वर फेरी आसंती व्हेन दे स्टार्ट डेवलपिंग एसिडिटी नी पेन एंड ऑल दैट व्हेन यू नीड अमृतांजन भोलिन एज योर जेलुसिल एज योर फ्रेंड्स So a somewhere now I am 50, I think I was that time 54 or 53. A somewhere बर्तमान बॉम्बे जाई सेठी काम करबा आउ डिफिकल्ट हबनी सो कोन करी भाबी करी देन स्टार्टेड मीटिंग पीपल टॉकिंग टू पीपल गोटे सांगटे मोर बॉम्बे रो मते इंस्पायर कला जे आउ कोन चाकरी करबो तोडे निजर किछि कर देन आई गॉट इनटू दिस विथ टू ऑफ माय फ्रेंड्स वी को फाउंडेड दिस ओडिया OTT प्लेटफॉर्म कंचालंका इज द नेम it's basically simple entertainment app like you have Netflix nationally and internationally eta ote odia language ra app jo thre web series movies aସୁchi now let me share little bit how the journey has been you know startup gote bahut bada buzzword India re last 5-10 years re heichi bahut bada company bi create heichi many have succeeded some have failed Government of India has done lot of facilitation things jana sir kohutle Government of Odisha has also done incubation centers subsidy all that is there but as an entrepreneur when you decide whether you are at your late 20s or you are in mid 50s like me you don't do any business based on government policy that is the advice subsidy miluchi pasijibi ki finance miluchi pasijibi don't do this first you must do a mapping what is your competence आपनकर कौन competence कहतु बा पैशन कहतु कौन आपन करिया को एंजॉय करंती कौन करिया को चाहुचंती एवं ता सहित कंज्यूमर बिहेवियर टाको मैपिंग करिवे जे मु जोटा करिवा पई कॉम्पिटेंट और करिवा पई मु चाहुची एटा कंज्यूमर को पई दरकार की से माने चाहुचंती कि नाही दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड जदी कंज्यूमर चाहुचंती सेटा आज चाहूँगी 10 वर्ष पर सेटा को कंज्यूमर माने चाहिए ना चाहिए दैट इज इट बहुत इंपोर्टेंट आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ फ्रॉम माय इंडस्ट्री आई एम फ्रॉम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यू नो इन 1970s and 80s and till mid 90s 95 96 पर्यंत मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन इंडिया वाज इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड आल्सो एटा डोमिनेट करूथला प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स बुक्स late 90s till now, the total media and entertainment has been dominated by television. It's not dominated by newspaper. I don't read newspaper anymore. So, आज का दिन रे और गत 2 वर्ष तले टेलीविजन होची डोमिनेंट प्लेटफॉर्म एंड मोर बहुत एक्सपीरियंस थिला टेलीविजन चैनल रे मते बहुत लोग कांटेक्ट करथिले आपण गोटे चैनल करंतु देन आई डिड द मैपिंग 10 वर्ष पर लोक आउ टेलीविजन देखिबे ना देखिबे नहीं एंड माय आंसर वाज देखिबे नहीं
मोर पेरेंट्स जो डेथ है आई लॉस्ट माय मदर इन 2020 फादर इन 2016 आफ्टर दैट आउ आम घर कहीं टेलीविजन देखुना जदि आम घर देखुना इंडिया इज ए वास्ट कंट्री डाइवर्स कंट्री बहुत दिन रही काटे आज चली किंतु डोंट गेट इन टू एन इंडस्ट्री व्हिच इज नॉट ऑन ए राइजिंग कर्व द इंडस्ट्री हैज टू बी ऑन ए राइजिंग कर्व इफ यू आर गेटिंग एंट्री देयर तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर एंड पैशन एंड व्हेन यू लुक एट योर पैशन no just forget your education. I am a cost accountant. I am not a journalist or I am not a creative director or writer. I am a cost accountant, finance loco. Mu entertainment korchi. I will give you another small example from my family. Mo jhiya, she was doing BTech computer science in Vellore, VIT Vellore, and just final exam purburu tar COVID lockdown hegala garu pade asla. So engineering complete hegala computer science re. एंड घरे से कोविड समय आम मान घरे माहौल थिला खाइबा एंड वी आर ए फूड हंग्री फूड लविंग फैमिली सो विभिन्न प्रकार खाया पीवा होता देन तापर कैंपस प्लेसमेंट है चाकरी आसला मुझे जाऊँ जीवु ना ना पापा मुझे जीवन सफ्टवेयर चाकरी करा कहीं ना मत से मॉर्निंग शिफ्ट पकड़े मत अर्ली मॉर्निंग उठिक जा पड़ो आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड गो एंड राइट कोडिंग आई सेड व्हाट नॉनसेंस इफ यू डोंट वांट टू राइट कोडिंग डू कोडिंग why the hell you went to VIT that to computer science ना मुझे जानना थी सेते जे कोडिंग कामटा केते टाइम माउंट लेबर भड़िया खटिबो सकाळू राती मु जीविनी बोले करिबु कोन लेट मी थिंक सो शी डेवलप्ड ए हैबिट फॉर फूड शी गॉट इनटू ए फूड बिजनेस स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करिनी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गवर्नमेंट registration etc. She does a decent business. She has a cloud kitchen in Bhubaneswar, does around 5 lakhs revenue a month with around 10% margin. So that business she has done out of her passion. So passion is very important. And consumer, food business you can never go wrong. Roti, kapda, makan, purna achi, and I am agically fourth to add to entertainment boli. So food and medicine you can never go wrong. So you map your passing with the consumer behavior. Look at consumer behavior for next 5 years, 10 years. Is it growing? Na eta tolu khoschi. Jodi tolu ko khosuchi, I would say you avoid this. The challenge जोटा आमर ओडिशा रे आमे फेस करछु जना सर कहउतले जे ओडिशा रे एते कम स्टार्टअप 1500 स्टार्टअप इंडिया रे 80000. It's not that ओडिशा लोकंकर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नाही. मु गत 2 वर्ष जणिन भितर कहि परिबी जे आमे ओडिशा रे जो माने एंटरप्रेन्योर आसीचंती से माने कैपिटल फाइनेंस रे से माने डिफिकल्टी फेस करचंती. मते जणे मोर गोटे सांग एडवाइस करथिले जे आपण गोटे काम करंतु जोटा करूचंती ओडिशा रे न करकी आपण गुरगांव की नोएडा करंतु सेठी गोटे ऑफिस खोल दियंतु सेठी गोटे छोटकाटिया किछि करंतु एंड देन ओडिशा रे करंतु जोठी भी करचंती किंतु ये ऑपरेट दिल्ली रो ऑपरेट करंतु यू विल गेट कैपिटल. ओडिशा रो जदी आपण ऑफिस करी ऑपरेट करिवे प्रोफेशनल कैपिटल इज ए चैलेंज. सो किछि इंडस्ट्री अछि जो थरे जेमति मु जो इंडस्ट्री काम करछि एटा कैपिटल इंटेंसिव इट्स ए चैलेंज. मु झियो जो इंडस्ट्री काम करछि से किछि कैपिटल दरकार नै बहुत कम कैपिटल 10 लाख टंका से टोटल बिजनेसटा स्टार्ट कर दिछि. तो से भाई आपको चूज करा पड़ो जे आप कैपिटल इंटेंसिव रे जिबे ना आपण गोटे जिबे जो कि लो कैपिटल हाई ऑपेक्स. सो यू अर्न एंड स्पेंड. कैपिटल इंटेंसिव रे यू फर्स्ट इन्वेस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट सेक्टर इन स्टार्टअप हैज ग्रो इंडिया रे बहुत ग्रो करिछि. मु निजे फाइनेंस बैकग्राउंड रो मोर बहुत इन्वेस्टर चिन्हा अछंती. तो इन्वेस्टर मु जाई आस्क फॉर कैपिटल द स्टार्टअप रे गोटे I remember Minister Ravi Shankar Prasad giving the bite, unicorn, $1 billion. So the first question लोग को पचारुचंती जे what's a $1 billion story? ना मु $1 8,000 कोटी and जो टाइप रो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होची मे बी आउ 6 मास पर सेटा 10,000 कोटी हे जाई पारे. गवर्नमेंट पीपल आर हियर, आई शुड नॉट कमेंट. 8,000 10,000 कोटी टंकार भैल्युएसन करने हेले नॉर्मल फिलोसफी रे तुम 2,000 3,000 कोटी टंकार रेवेन्यू दरकार. दैट्स नॉट व्हाट स्टार्टअप इज ऑल अबाउट इन माय ओपिनियन. स्टार्टअप होची टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरल नेटवर्क
सो आप गोटे बड़ कंपनी 10,000 लोक को चाकरी देती गोटे छोट कंपनी 10 जन लोक को चाकरी दब मो झी जो छोट बिजनेस कर 10 जन को से चाकरी देती सैलरी दूची सो छोट बिजनेस कैपिटल अवेलेबिलिटी इज स्ट्रेस सेटा मिलू ना तो ओडिशा रे सेटा ही मेजर प्रॉब्लम लोक फेस कर मे बी व्हाट आज प्रवासी ओडिया व्हाट यू शुड डू यू नो देर आर बहुत सक्सेसफुल बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर ओडिशा रे अछंती आपण मैन्युफैक्चरिंग देखंतु आईटी देखंतु एजुकेशन देखंतु रियल एस्टेट देखंतु ओडिशा रे गोटे जदि प्राइवेट एंजल कैपिटल इफ बिग कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट 100-200 कोटी टंकार गोटे फंड जोटा कि ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर माने जो मानकर 5 लाख 10 लाख 20 लाख टंकार इन्वेस्टमेंट दरकार तांको फंडिंग फैसिलिटी करहब गवर्नमेंट इज गिविंग दोज एमएसएमई लोन्स एंड ऑल बट दैट्स नॉट वेरी इफेक्टिव देन ए लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैन कम ओडिशा रे फिलोसफी गोटे नेगेटिव कथा कौन अच्छी ना सेठी जो माने एंटरप्रेन्योर सपोज मु हेली एंटरप्रेन्योर आपण पाखे टैलेंट अच्छी एंड यू आर कैपेबल बट आपण पाखे पैसा ना देन मोर मतामत है जे यू आर फिट टू बी एन एम्प्लॉई आई वुड लाइक टू मु आपन को चाकरी देबे आपण मो पार चाकरी करंतु मु आपन को हेल्प करिबेनी 5 लाख टका देकरी जे आपण गोटे बिजनेस करंतु द बिजनेस पीपल इन ओडिशा हैव नेवर क्रिएटेड ए न्यू बिजनेस पर्सन बिजनेस पीपल इन एनी सेक्टर अपन देखंतु बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पीपल अच्छे से माने दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे हैव ऑफ कोर्स मेड प्रॉफिट्स मेड लॉसेस दे हैव डन सीएसआर कमल बांटा खाଇବା दबा हेल्थ कैंप करवा दोज आर ऑल्सो इक्वल बट गोटे एंटरप्रेन्योर आउ 10टा एंटरप्रेन्योर छोट एंटरप्रेन्योर क्रिएट करी नाहंती दैट इज द लिटिल बिट ऑफ नेगेटिविटी दैट इकोसिस्टम दैट problem has to be cracked otherwise people are capable people want to do and people will do I have started at a slightly old age but there are much younger people who are doing better and I'm very hopeful Jana sir aji apanଙ୍କର 1500 अछि it will someday become 15,000 don't worry thank you धन्यवाद विभू बाबू आपन डेफिनेटली एज एंटरप्रेन्योर यू हैव एस्टाब्लिश योरसेल्फ कंचालंका बिकम मोर पॉपुलर देन विभू रथ सो दैट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जेतबेले समय बेले बेले आमे ई कहू जे टूथपेस्ट कहले आमे कोलगेट को बुझू डिटर्जेंट कहले सर्फ माने दैट इज द क्रिएशन ऑफ ए ब्रांड एंड ए सक्सेसफुलनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर तो विभू बाबू आज जो कंचा लंका माध्यम निजको एस्टाब्लिश करि पारछन आम समस्ते वी शुड एनकरेज हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप इन ओडिशा सो नाउ गो टू वन ऑफ द यंग एंटरप्रेन्योर ओडिया एंटरप्रेन्योर who has established himself in Delhi he is our Dr. Dr. Dheeraj Singh. Yeah. So please, you give your success story as a successful entrepreneur in Delhi, and at the same time, I'll request you to, if you can highlight some of the case studies, including your case studies, then that will be very much useful for our discussion today. Namaskar, good evening, Jai Jagannath, and a very warm welcome to you all on this auspicious occasion. Honorable esteemed guests, learned fraternity, industrialists, eminent dignitaries, invited guests, and my dear colleagues, today I would like to wish you all for a very happy Earth Day and happy Akshaya Tritiya. I would first of all like to thank the organizers, POBS, the committee members for conceptualizing this event, which we hope that it will provide a learning aid to all the stakeholders. Today,
कहाँ पाई केते खर्च करेंगे आपण इनकम अच्छी एतिक अमाउंट कहाँ पाई केते खर्च करेंगे आपण कहे ना मुझे समस्त इक्वाल खर्च करदेवी ताहले एवरेज हो पार कि सेम क्वेश्चन मुझे रेज करी एबे भी से आंसर मु पाइनी आई ऑलवेज थिंक दैट कि बजेट रे जो आम 45% खाली रखुचु 45 नहीं मे बी वी शुड कीप 75% कारण आपण तांको एवरेज को प्रथम आणतु एंड इट इज हैपनिंग इन ओडिशा इन इनडायरेक्ट वे नॉट इन ए वेरी डायरेक्ट मैनर बट आई एम हैप्पी कारण मुझे देखी एबे भी आप देखिए 5 टू 5 लाख उपर पिला खाली रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ुं ओडिशा रे ट्राइबल स्टूडेंट्स मो पाखक आसी सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मेंबर्स कि आगे आमे पछर रहीजु आप खाली ट्राइबल पिला पढ़ाऊँ आमको दिंतु तो आम गोटे से रिजर्वेशन स्कूल 10% अलाउ कलु प्राक्टिकली आम जो एरिया बुलिलु आम देखिलु जे थिंग्स आर कैन गेट डिस्टॉर्टेड तेणु मिनिमम ये करा आउ यू नो शेड्यूल कास्ट भी यूनिफॉर्म नहीं शेड्यूल कास्ट भितर बहुत जन अच्छा बहुत भल पढ़ापढ़ी माने दे आर एडवांस दे माइट बी कैटेगोराइज हिस्टोरिकल फैक्टर्स आम जानू से ब्रिटिश टाइम रे जो मैंने ये थे से लिस्ट आसते कंटिन्यू हो गला 50s रे सर्वे होता सो वी डोंट नो आ रेस्ट बहुत आमर एससीबीसी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अच्छा तो तांकर खर्च करा बट नाउ कमिंग टू दैट इज अ विजन आई सेड कि एटा आपन करिया पड़िबो ताहले आपन ये कर परिबे फर्स्ट यू हैव टू हैव ए विजन ना 10 वर्ष एटलिस्ट आम पर कैपिटा रे इंडियन एवरेज पहुँचा कि कैन वी से पाई कि ये सब करिया पड़िबो माने मु एठी रिटोरिक रे कहिदेबी हेबनी आज आई गेव द एग्जांपल 3टा पिला आपनकर गोटे जण अपाइज अच्छी आउ जनकर टिके वीक ब्रेन अच्छी आउ जनकर पूरा अच्छी सब किसी ठीक अच्छी समस्त खर्च करेंगे क्या केते खर्च करेंगे भावतु सोसाइटी हैज टू स्पेंड लाइक दैट डिसेबल्ड समबडी इज देयर वी कीप देम रिजर्वेशन कीप देम ये जो पॉलिसी होची गवर्नमेंट कंपलसरी दिस हैज टू बी डन नाउ कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप जोटा हूँ मु भावे जे एंटरप्रेन्योरशिप आम ह्यूमन बीइंग समस्त अच्छी आम छोट बड़ू जन्म हो पिलाटी देखो जो छिड़ा हो जो से गुरुंडीब यू सी लुक्स बैक देखे केते रिस्क अच्छी कौन अच्छी धीरे धीरे चढ़ो टी सपोर्ट पाइब मदर ब्रदर जार सो इट्स एक्चुअली नेचुरल इनग्रेन्ड आमे तापर सोसाइटी रे आसु जो सोसाइटी बढ़ू से अनुसार हो से अनुसार आप मारवाड़ी गुजराती कहीं एंटरप्रेन्योर्स मैक्सिमम और सिंधीज वाई आप सब पाइबे कौन पाई कहीं दे हैव डेवलप्ड ए नेटवर्क अमंग देमसेल्व्स इट्स लाइक ए सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकर सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी जो कहते कैपिटल रेज करने मिलूनी कटक रे रही एंड आई हैव सीन दी मारवाड़ीज जो मैंने कि बिल्कुल किसी नाला जी आसते आम घरे भड़ा रोते से मैंने बर्तमान कोटिपति सब माने 4टा 5टा फ्लाट ओनर आम घरे जी रोते आई एम टेलिंग यू एग्जांपल्स एंड तांकर पचारे कौटी पैसा आसूची ना वो वहाँ से आ रहा है क्या बताऊँ वहाँ से कलकत्ता फिर कलकत्ता से यहाँ आ रहा है तो से पूरा सहित सपोर्ट करते कि ये सामान यही जिनसा बिक कटक रे जिनस माने बाल्टी सब थिला आमर जो देखिए आगु सब पितल और सॉरी से कंसा सब मिलूला से सब प्लास्टिक जिनस गुड़ा सब मारवाड़ी आनले ओडिशा भितर जाते आप देखिए माने 80 मिड 80s और 90s पाखपाखी से सब जिनस आसला ना ओडिशा रे आपन गोटे प्लास्टिक बाल्टी पाइबेनी पीपुल आर नॉट यूजिंग सो से आनिले से सब कलकाता आनिले सेमती ड्रेस पत्र विभिन्न पत्र सब आसले सो आई हैव सीन दैट जर्नी मो समय अभाव जो मुझे कहीपरि कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स नेटवर्क्स जेपर्यंत नेटवर्क न रहिबो आपण एंटरप्रेन्योरशिप करें सो यू कैनॉट से कि ओडिशा रे एंटरप्रेन्योर हवा चाहूना मु गोटे फिल्म देखी छोट बड़े जहाँ आम देखिलु से अनुसार आम बनबू मु फिल्म देखी से गोटे फिल्म कौन देखी प्रशांत जड़े फॉरेस्टर गोटे ग्रीन भल स्मार्ट ड्रेस पिंध अमिताभ बच्चन को देखिली से अंधा कानून से गोटे फॉरेस्ट रेंजर रही कहीं फॉरेस्ट रेंजर न भी भावी से गोटे पुलिस इंस्पेक्टर होती से क्या बाड़ौची जोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जोटे होटेल ओनर को आम फिल्म आम नहीं नसीब से देखुची अमिताभ बच्चन रोल करुँचे भल लोकटा तेणु आगे क्यारेक्टर बिल्ड हो आम छोट बड़े देखु आमको आम गोटे स्कूल पढ़ुलू जो सब पिला निहाई जाए गोटे गांधी फिल्म देखूँ आ गोटे देखूँ नसीब सो आम टीचर कौन आसी कहले आसे आप नसीब जो मैंने देखी थे आप जानते से होटेलर होती भिलियन होटेल जो मैंने बनई सब दे आर डूइंग ऑल दी यू नो नास्टी थिंग्स तो हाउ डू यू थिंक दैट ए चाइल्ड हु हैज सीन दैट विल बिकम ए होटेलियर जो होटेलियर को देखे मुझे भावे से आसिया कर यू नो
चाइल्ड जमी आम बर्तमान बहुत समय आम कहूँ जो मदरसा रिफॉर्म्स है आम डील करूँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मन अच्छी केमती सब ताकरी मेंबर्स मैंने कहते जे मदरसा या कहूँ सो व्हाट डू एक्सपेक्ट मदरसा जो से पिलाटी बड़ हो से कौन कह तुम एक्सपेक्ट कर कि सी कह कि हाँ नाई नाई ये आमर जो हिंदू है ख्रीस्टियान है बुद्ध है ये भी मोर भाई भौणी जब कहुई से तुम भाई भौणी नुह ठीक अच्छे ना दैट्स द पॉइंट मोर कह था जमी 6 वर्ष बेलू पिलार ब्रेन रेडी हो जाए सेमती गोटे 10-11 वर्ष 12 वर्ष बेलू पिलाटी जानी था मुझे कौन करी आगे गोटे जना हो जाए आम से देखुलु जो आप देखिए करप्शन इन सोसाइटी वाई नेक्स्ट जनरेशन बढ़ी जाए आम से फिल्म देखीचु आम दीवार थी स्पेशल जे भाई भाई को भी मारदेला से डिस्कसन है जे भाई स्मगलर भी मारदे एवं उल्टा भाई को स्मगलर करने को चेष्टा कर कि भाई मुझे चाकरी आसीगली पुलिस तू धंदा कर एंड दैट इज द नॉर्म नाउ इन मेनी स्टेट्स मुझे कहूनी ओडिशा रे देयर आर प्लेसेस जोटा इंसिडेंट मुझे कहीपरि बट देयर आर प्लेसेस वेयर आई हैव सीन दैट ऑफिसर्स हैव कम एंड दे हैव डेवलप्ड नेटवर्क विथ दोज पीपल प्रूव कर पाइबे कि दिन दिन धरा पड़ो एठी ना ईश्वर पाखे धरा पड़ो बट दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योर से कहे हम लोग बहुत पैसा बना दिया है बट यस वन मस्ट यू सी आम पुराना आग काल कही जाइए रीड यू नो दिस थिंग जोटा मुझे बहुत समय मन रख पारे बट आई कैन रीड इट आउट यू कैन सी ऑल्सो इट्स देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स वाणिज्य बसती लक्ष्मी आम से गोटे शुणुचु खाली गोटे लाइन समस्ते जाचु वाणिज्य बसती लक्ष्मी तापर आम जानू तापर हूँ तदार्ध कृषि कर्मणि तदार्ध राज्य सेवायन भिक्षायन नैव नैव चा तमाने हूँ फॉर्च्यून लक्ष्मी ड्वेल्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स सी इज हाफ इन एग्रीकल्चर एंड हाफ इन सर्विंग फर्दर हाफ इन सर्विंग गवर्नमेंटल जॉब्स ये लिखा ना तदार्ध राज्य सेवा मैंने 1/4 सो 1 इफ यू 100 rupees is earned in business then 50 rupees will be earned in agriculture if you are doing agriculture then 25 rupees if you go to Raj Seva मतलब government service and if you do begging भिक्षायन नैव नैच but you will not get anything so ये हूँ आमर 1500 BC आ से समय पुराण विष्णु पुराण एंड ऑल से सब लिखिं लक्ष्मी पुराण तमें से एग्रीकल्चर ही था एवं जमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेस सब अच्छे किंतु ट्रेड यू सी ट्रेड रे यू विल ऑलवेज प्रॉस्पर बिकॉज ट्रेड रे यू फाइंड द गैप्स यू फाइंड दिस एंड ट्रेड मीन्स नॉट जस्ट ट्रेड बट बिजनेस सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज बेनिफिशियल ये थ्रू आप ड्र करें नाउ कमिंग टू दी यू नो ट्रबल्स दैट वी हैव जो शुणुली बहुत समय बिकॉज आई एम दी यू नो नेशनल रिक्रुटमेंट एजेंसी आम गोटे नुआ संस्था होमर प्रेजेंट गवर्नमेंट रे इज वेरी विजनरी एटार डिटेल कहीपरि बट आई जस्ट गिव यू सम डाटा पॉइंट्स नाउ नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एवरेजिंग इन इंडिया होते 70 लाख 70 to 80 लाख पर ईयर ओके एंड इफ यू गो टू दी 12th पास 1.25 crores and 10th pass 1.6 crores per year and if you go to postgraduate 15 lakh hoijibe this is as a report assessment of higher education status of higher education ministry of HRD ministry of education now तो एते पिला आमर आ मु जो कथा होती आमर जड़े चेयरमैन AICT आम मेंबर अच्छे कहले कि संजीव इट इज 1 crore नाउ 1 crore graduates इज एवरेज दिस थिंग बट 1 crore so 1 crore जदि ग्रेजुएशन हेलेनी पास कलेनी दैट्स द टाइम दे आर लुकिंग फॉर जॉब कैन यू प्रोवाइड 1 crore जॉब इन ए ईयर सो दिस इज द चैलेंज बट करने को पड़ो जदि न करेंगे यू विल गो डाउन एंड यू विल से करने कौन हम यू नीड दिस एंटरप्रेन्योरशिप माने इंस्टेड ऑफ सीकिंग ए जॉब यू हैव टू क्रिएट ए जॉब तो मत बहुत आनंद लगला जो कहले से कहले मिस्टर रथ यू वाज सेइंग ना माय डॉटर इज गिविंग जॉब्स टू 10 मु कहली बहुत भल कथा हाँ सो this is the we should keep that vision and we should not forget the past कहना आमर past देखले आम जस्ट खाली कहूँ गोटे आप जानते निश्चित भाव में बट समटाइम्स आई फील लाइक सेइंग ओल्डेस्ट पुराण स्कंद पुराण रे आप सब जिनस अच्छे आमर जहाँ देखिए आपण से जो सती जो एपिसोड अच्छी तापर से समुद्र मंथन हो सबू हो दैट्स द ओल्डेस्ट पुराण से अच्छी उत्कल खंड रे ही
श्री जगन्नाथ महात्म्य अच्छी 4000 श्लोक उपर अच्छी द ओल्डेस्ट पुराण रे आमर उत्कल प्रदेश ना लिखाई आ उत्कल कहीं उत्कृष्ट कलार देश सबकि माने व्यासदेव टाइप रे से लिखी जाइछन जो माने व्यास उपाधि थे से माने लिखी थे सो तेणु वी शुड रिमेन ऑलवेज प्राउड दैट वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड इंसिडेंटली जो जानना से जानवे हिंदू धर्म शेष दर्शन होची जो मैंने पूरी जाइछन्ति मेनी ऑफ यू जान से जी जापरनि अन्य कौटी से गोटे चारि आमर जो अच्छी चार्टा आमर द्वारका ये से अच्छी चारि स्थल गोटे अच्छी से जो कांडपटा हनुमान का साइड रे देखिए जब आप जापरना से दर्शन कर पूजा करदे सो दैट इज क्लोज्ड आवर डिटेल के पर्सनाली हेल्ले मुझे कहि केमती श्री जगन्नाथ विषय शंकराचार्य केमी जानले आप सर्च कर विकिपीडिया देखूँ जो से भाविले सब मो कम होगा केमी दर्शन है कौन कौन है सब प्लीज सी बट मुझे कहली उत्कल खंड इज रिटेन इन दोज डेज एंड इफ यू स्टडी द हिस्ट्री एंड ऑल्सो आप देखिए मैप रे द ओनली एरिया ऑफ कलिंगा व्हिच इज अ स्ट्रिप फ्रॉम सुंदरबन स्टिल श्रीकाकुलम एंड डाउन माने योर भाईजैक एंड दैट सो दैट इज द प्लेस व्हिच कॉन्स्टेंटली स्टैंड्स सब चेंज हो ग्रीस यूरोप देखिए मेनी वीडियोज आर देयर यू कैन जस्ट गो एंड सी and you'll see that strip constantly remains. I say मझे भांगी जाऊँची about that 360 days when the that Kalinga war takes place. After that again it's re-established during the age of Kharveda, and we are Buddhist, Jain, Hinduism, sabu synthetic, sabu. So Odisha is a really जोटा Dr. Devendra Maji कहले really the soul of incredible India. It is really a soul of incredible India. I agree, and many others say कहते जे कौन कौन कर आम सब चेष्टा करमर ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ओडिशा रे आपण देखिए सबुठी एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करा एंड एज आई सेड वी कैनॉट कंपेयर विथ अदर स्टेट्स कारण अदर स्टेट्स रो डायनामिक्स आर डिफरेंट आमर जो प्रदेश जोटा कहली 25% ट्राइबल पॉपुलेशन फर्स्ट आप एवरेज को आणवे अनदर 20% इज द बैकवर्ड पॉपुलेशन तापर आमर ओबीसी पॉपुलेशन ह्यूज. So it's just not to compare apples with oranges. So there's a backwardness. I mean the term ta को negatively non है कि relatively backwardness रही. So first is you have to match that, then we can. But all this is possible if we have a vision. And I think that it's right time. आपण माने ये जो program करचंदी आपण मोरो my really great wishes to you, and I would also request about 2047 भी करंतु आउ टिके भलो भलो so both you had good panelists. I thank all the team and Mr. Mishra and Vijaya, thank you very much for inviting me. जहाँ प्रश्न पचार परिवे, thank you so much. Thank you very much, Sanjeev Babu. And a good thing, good news for all of you that we thought of having some discussion, but due to paucity of time, we will not discuss further. And no question answer session also, because before we conclude, I'll request Savarwal ji. He has some announcement for you with respect to some startup. So I'll take only 30 seconds to 1 minute to give that information to all of you. So about to Savarwal. There is the NBFC company Ugro. The chairman of the company is Mr. Satyanand Mishra, ex-IAS officer. They are into the SME lending, and about 2 hours back only, mu taku MD ru message paichi ki the desire of Satyanand Mishra ji is that to the SMEs they will give loan on much 2% lesser rate of interest than what they are giving throughout the country. This was one. And one more small thing. As I am a share broker, and as I told you that I have also built up only from Odisha, there is a company called Share India Securities. Tahaku pet 325 crore afchi. 2% they have to spend on CSR. So what they have decided last year in the tribal areas of Bihar, they have trained students for the arbitrage.
they gave a small stipend, and now they are, all of them are of their own and training other people. They have become employer itself. So today I have taken a promise from them that if in the tribal areas of Odisha, they will put many people for the training to start with, and then about 33 to 50% of them can become an employer themselves. Thank you very much. Before we conclude this this panel discussion, I would like to say something, just 1 minute, for the students, those who have come from JNU and Delhi University, and they have been with us since morning. So just a small motivation, inspiration for all of you. I don't hesitate to share it in this platform, which is related to me and my family. And this motivation is not for you, the students, those who are present here, but it is for the entire young generation of Odisha, those who are watching us. The things is like that. When I started my career, that time, 25 years back, I was getting a salary of 12,000 rupees. And that time, my younger brother, and it was very difficult for him to make the graduation. And with difficulties, he was not interested in studies, but he started his career with a small shop. And from my salary, at that time, I am talking about, it is 1998, I gave him 2 lakhs, that was service loan. That from the service, every month we repay 2,000 every month, and 2 lakhs rupees I paid him in 1998. And he started his business and entrepreneurship in 1998 with 2 lakhs rupees. And today he has reached to a place where he is in a position to appoint 10 officers like me in his company. So that is a source of motivation and inspiration for the youngsters, the young Odia youth, those who are watching us today. And this is the vision for all of you. And one more thing I would like to say, that my friends, those who are studying with me in the FM college, Balasar, that time I got a job, I left Balasar, I left Odisha, I came abroad. I came out of Odisha. But the friends, those who are struggling, they didn't get any job. Today they are in a position, they are having a number of institutes. कोई दोस्त मेरा किसी का पास 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया उन्होंने, कोई 2 MBA कॉलेज चला रहा है, कोई 2 स्कूल खोल रहा है, कोई नर्सिंग कॉलेज खोल दिया, and they are in a better position today. So what I intend to say is that this entrepreneurship does not prepare or does not help you to learn within these 4 walls. It is the situation which compel you to go for that entrepreneurship. And I see all of you sitting here is an entrepreneur today. So thank you very much. With this message, I conclude this session and over to the management now. Before conclude this session, I just need to share few feelings, few words with you. I am an entrepreneur. What entrepreneur is, they don't follow the leaders. They want to be a leader. So entrepreneur, this is my interest topic. I am an entrepreneur. I have 25 employees under my company, and it's within 10 years, it's now 1.6 year company. So, ମୁଁ गोटे एंटरप्रेन्योर मु जानची मोर मु गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब छाड़ी एमर्सन रु आसिकी बिजनेस करथिली बिजनेस कला पर फर्स्ट 2 ईयर मते समस्ते कहिथिले काहे तमे बिजनेस करछो कोन पे करछो बट जेतबे मु कली मोर सक्सेस स्टोरीटा मो फैमिली को प्रूफ कला एंड दे really appreciate me and encourage others to do business. मो फैमिली रे गोटे बिजनेस ओनर मु आ समस्ते सर्विस रे तो एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट अदर्स and doing your own interest job, it's a great thing. So now I just want to conclude this and actually really this she is a role model for entrepreneurship for all of us today. Please give her a big round of applause. Thank you. And the way she is managing this event and contributing her own time toward this organization also, it is highly appreciated. Thank you very much. Thank you so much. Now I request SK Jana Bhai, please felicitate us our speakers. Sri BK Sabrawal sir.
I request our President, Mr. Suryanarayan Mishra, please felicitate our speaker, Sri Sanjeev Kumar Mishra, IAS. I am an entrepreneur. I always love to see a lady entrepreneur with me and sharing a stage. And I like to, I request SK Jena Bhai, please felicitate our speaker, Dr. Girija Bharat. Request Suryanarayan Bhai, please felicitate our member, Vice President, Dr. Dheeraj Singh. I request SK Jena Bhai to thanks to our speaker, Sri Bibhu Prasad Rath. Then I request Suryanarayan Bhai and SK Mishra sir, please thanks to our moderator, Dr. SK Jena. Now I request and hand over my responsibility, my dash to Susant Mahapatra. Thanks to you all for vote of thanks. Before that, thanks to you all, and this is a special invitation for tomorrow event IIMC. It's a Maha Bisubha Sankranti Milana. Tomorrow is a cultural and award ceremony. So please be there at 11 o'clock, 11 to 5. Thank you. There is already we arrange a high tea. After this Thanksgiving ceremony, please samase sei potuku jiba high tea pai and I request all JNU DOSA kids students come to the dash for a group photograph with our speakers. And thanks to you all for the kind support and help. धन्यवाद हाँ जय जगन्नाथ धन्यवाद समस्त को मु भावुनी आउ कि शुणवार अवस्था समस्ते अच्छा पछरे हाइटी व्यवस्था अच्छी निश्चित रूपे ग्रहण करूँ से कि खाଇବା व्यवस्था अच्छी नास्ता तो करिकिना एपटे जातु समस्ते धन्यवाद एते समय दवापाई धन्यवाद समस्त को मो काली विथ फैमिली इनवाइट करुच्ची समस्ते आसबे अगर आपनकर आसपास के ओडिया फैमिली भी अच्छी तांकु भी नहीं कि आसबे IIMC JNU पाखरे ऑडिटोरियम गांधी ऑडिटोरियम थैंक यू समय 11 रु 5टा 10टा रु 5टा 10टा चल
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚେନ୍ନାଇ ଥିଲି।